So thank you very much, ladies and gentlemen, for joining us here today for this workshop on optimizing revenue and public spending for inclusive growth. I will also like to thank Dr. Soleri and other STPI colleagues for partnering with us today to host this event. And thank you to everyone who has agreed to chair or give keynote speeches at the event today. We are grateful to our panelists and everyone else who has given up their valuable time to be here and to contribute your input into this pre-budget consultation. Thank you very much. Today's event, as all of us know, is supported by British High Commission as part of UK's commitment to international development. The UK is a close partner of Pakistan on its development journey, working to support Pakistan to become more inclusive, more stable, and more prosperous. A key ambition of our support is to help Pakistan achieve its economic potential. We believe this potential is immense and driven by numerous factors. Pakistan has a young population, a beneficial location at the center of the fastest growing global markets, huge reserves of minerals and agricultural land, an enviable spine of transport infrastructure, massive untapped potential for women to contribute more to the economy, and a global reach enhanced by a diaspora of over 6 million Pakistanis living abroad. No wonder then that the World Bank has estimated that with sound and corrective economic policies, Pakistan's economy could grow fivefold to $2 trillion by 2047. But this caveat is quite big that we need to have strong and corrective economic policies. And this is exactly why we have gathered today to review what are the challenges being faced by Pakistan economies and how best we can tackle those challenges. In the first session, we will be discussing how to remove binding constraints in revenue generation and trade competitiveness. In the global race for trade and investment, unfortunately, Pakistan has fallen behind over the last 30 years, with private investment only 10% of GDP in FY21 and FDI of less than 1% of GDP. Revenue mobilization is yet another major challenge that Pakistan's economy faces, and it has three basic issues within revenue mobilization. First, the total tax revenue is too small. हम अपने जो potential है उसका we are collecting only half of that, which means that government's debt is not sustainable owing to low revenues, and we cannot facilitate the spending that we need for tackling Pakistan's development and climate challenges. The other problem with tax system is that it's regressive. Poor pay more relative to their income than rich. And according to a World Bank study, poorest 10% pay more in cash terms than richest 10% in Pakistan, which is alarming. And finally, the tax system does not provide an even playing field. There are concessions, exemptions, and weak tax enforcement, which create distortions within the economy. So we are here to discuss all of these issues and find solutions to these through dialogue. And in the final session, we will be discussing the role of efficient public financial management in ensuring that Pakistan achieves inclusive growth. So we are looking forward to a very beneficial and fruitful discussion today. And let me finish by thanking you again for joining us to give us your insights. And we hope you have a productive day of discussions. Thank you very much. Thank you, Tehniyat, and thank you for talking about the different sessions and the way we have planned the entire day so that all information and all insights are recorded and documented for stakeholders across the board. Now, since Remit is leading this initiative along with SDPI, we would like to introduce the program to those who have not been, who are not aware of what we do. It's primarily an economic reform program. And for that, I would like to invite Hamid Yaqub Sheikh, who is the team lead Remit program, to say a few words. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Let me begin by thanking all the participants for taking time out to participate in today's workshop.
And I also thank SDPI for co-hosting this workshop. Remit, as my colleagues have briefly explained, is a FCDO-funded program for reforms in the economy of Pakistan with the objective of bringing macroeconomic stability. There are four major verticals of the program. One, obviously, as the name suggests, revenue mobilization, investment and trade. The first vertical is revenue mobilization. And there are several initiatives within each of the verticals. I'll not go into detail in all of them because I'm sure many of you are already aware of them. The second vertical is investment and improving this investment climate. And the third vertical is improving and enhancing trade. So trade facilitation, etc., is all part of it. So generally, in addition, we also work on expenditure management side of the macroeconomy, economic work. The issues that plague our economy are not unknown. They are very well known, and especially to this august audience, they are very well known. The purpose of requesting you all to participate today is to come up with suggestions and proposals that would help the government improve the macroeconomic situation, not just in this budget, but also in the future years. There are several entities and several institutes who are doing these budget consultations, and this is a regular activity at this time of the year. So we're not unique in that sense. But where we are distinct from others is that because of the structure of the team, because of various factors, the recommendations that were firmed up in the last year or year before that, they have been presented to the highest forums in the country. And we're happy to report that many of them have been included and incorporated as well. So we think that, or we claim that we have that edge where we can आपकी कई बात जो है वो हम highest forums तक हम भी पहुंचा सकते हैं. I'm sure people like बंगाली साहब जो है उनकी बात हर कोई सुनता है, but बाकी लोगों की जो industry की वो बात भी हम उसको facilitate कर सकते हैं. And we have a continuous and ongoing relationship, not just with industry, with academia, with the government, but also with the multilateral agencies. IMF के साथ भी हमारा थोड़ा सा engagement है, तो वो एक dialogue में हम मदद भी देते हैं. So in that sense, we think we are in a good position to take your suggestions and present to the audience at the highest forum as well. And in this spirit, I would encourage and request all of you to freely, openly give your proposals, express your recommendations so that we take note of them and we present them not just to FCDO, but also to the government. I'll not take much of your time because it's more important to hear more. The priority is to hear from you, and I look forward to very useful interaction today. Thank you very much. Thank you, Hamid sir. And while we are having the conversation, just a note that as a program, we also look at inclusion and gender as one of our cross-cutting themes, climate and inclusion and gender. And we have been able to do some work on regards to gender and taxation, and especially with training and building the capacity of women entrepreneurs for accounting and taxation. So when all these, we understand that trade and tax policies also impact women a little differently than they would impact men.
So during the conversations, do keep a note on what to say about how should we also be looking at gender and taxation in the conversations. Now we are very pleased that Mr. Wasif Ali Maiman, Chairman Sindh the Revenue Board, is here with us. So sir, if you can please come for your opening remarks. You'll have to be a little careful with the stairs. यहाँ पे है नहीं उधर. वहाँ पे steps. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I compliment Remit, SDPI, and the UK Embassy for convening this workshop, one-day workshop, just before the presentation of the budgets, which is likely to come in the last week of May or the first week of June. There are a lot of proposals which just crop up in my mind. But the first thing from which I start is the political will. Because as you know, that we are having a government which has just come into commencement. If there is no political will to implement the reforms or the taxation structures or the facilitation, there is not going to be the beginning. As we all know, that the dictums and the instructions come from the IMF. We have just are lucky enough to get the 1.9 billion tranche, and now we are working and talking to the international donors about the $6 or $8 billion coming for us for the next 1 year or two. There should be a sync between the local political economy and the aspects which are being dictated from abroad. Because so far we are undergoing the 25th IMF program. This is going to be 26th. So we have to see where we failed and where we succeed with these IMF programs, because they are touching the macroeconomic stabilities, not going into in-depth. They start the things from the rationalization of the utility charges. And rationalization here means increase. The increase in the utility charges, the gas and electricity and the petroleum charges will keep the country in a vicious circle. The industry cry, and industry keep on crying about these enhanced utility charges and cost of doing business and the losing the competitive edge of Pakistan. We have got strange relationship both at the western and eastern border. We are unable to be a vendor sort of a industry for China. And we keep on changing our revenue laws and revenue tariff. If we think that there is a deficit in the fiscal sort of projections, we will just put the regulatory duties and we will increase the sales tax rate. And we keep on changing. The income tax rate, would you trust me that whenever we get an increment of the salary of the government servant, the income tax rate goes up and we lose half of the entertainment of having an increased salary. The 37.5% is on the salaries class, which is on the upper bracket. And again, same thing is with the corporate tax. More you pay the tax, more you are entrapped in the taxations. There is not going to be any broadening of the tax. The same taxpayer are hit again and again and again. So if you keep on increasing the tax rates, they are going to be the tax avoidance and tax evasions. Chances are more. So this is the dilemma of our country. The tax to GDP ratio is now below double figure. We are unable to enhance it despite of all our efficiencies. Last week, we have gone for a very strange witch hunt in FBR. The top level officers were made OSD. Some of them were given the Nishan-e-Imtiaz 1 month ago. And on the basis of anonymous reports, reports. So where will the confidence of the bureaucracy will come? Because they are being haunted by the NAB, nor they are haunted by the agencies. And I don't know what will happen. And the Pakistan's policies are just working on a knee-jerk reaction. We see that if something is going on, okay, make this change in the taxation law. No consistency,
And no single budget even. If we say that budget of the June is going to be the only budget for next financial year, it won't be possible, because again, we have got a mini budget in November and December and January, or maybe in May. So we have heard a lot of buzzwords: tax facilitation, data sharing, all are jargons. The data sharing is very strange. We in SRB could not get the data of the income tax from FBR, despite of signing of MOU with FBR. We cannot get the data from the banks, because banks say it is a secrecy clause, and we cannot give you your data. And the NADRA is overarching the data compilation and sort of a consolidation. And NADRA has got no tax experience. If they are going to do it, how will they save the privacy of the citizen or the secrecy of the citizen? So we keep on experimenting. We should stop experimenting with the revenue laws, with the revenue policies, and just be consistent for next 2 or 3 years for one policy. And just see where we failed. A lot of commissions are being made. Every 2 years, we have got a commission for reform of civil services and the FBR. And not even the commission report comes, like a Hamood Rahman commission doesn't come in front and see the light of the day. So these are my suggestions. We will go for more discussions with illustrious sort of participants from the private sector, consultant and Kesar Bengali Saab. And these are my few words. We should be consistent and ask IMF to indigenize the policies with the reality of Pakistan's macroeconomics. Thank you very much. Thank you, Asif Saab, for being, as always, very candid and frank in your insights and also your opinion. And most of these issues of broadening the tax base, and we have been talking a lot about it, but today let's find some concrete solutions and steps on what can be done, including probably, as you said, building the trust between not just state and citizens, but also within different organizations within the state. So now we're very honored that we have Mr. Anwar Kashif Mumtaz, who is the President, Pakistan Tax Bar Association, and he has come with the proposals by the Pakistan Tax Bar Association. So please welcome on stage. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you very much for inviting me. The organizers, Remit UK, International Development, Adam Smith, International, SDPI, distinguished guests. I think tax is now a buzzword and a discussion at every corner of our country. Everybody is talking about tax. But the point is that how we will address this and how we will fix it, that's the main issue. If you see, there is a vested interest, there's a conflict of interest, and there is a personal interest. And if you have an interest rate of 22%, nobody is going to invest. So everybody is putting money into the bank and they are getting 23% of return, 22% of return. And this is how the things are going from last 2-3 years. At Pakistan Tax Bar, we have a footprint in 32 cities of Pakistan, having 12,500 members across the. We always encourage, we always talk, and we always suggest the government about the documentation. And now, by the passage of time, where if somebody offend with that, but the point is now there is no formula of carrot and stick in Pakistan. There is the only formula of stick in Pakistan. If you see Dubai, 3 years back, there was a VAT introduced in Dubai. Every shop has been registered. You cannot think that you are not registered with their revenue authority. And now in Pakistan, there is a Tajer Dost scheme. What dosti you are talking about? Because in the last 75 years, there is a third phenomena
when we see, look back, there's 2007, there's a 2016, there's a 2022, there's now 2024. The 4 schemes were introduced back and forth, and nothing happened. And still, the reports which we are receiving from the markets, that only 200 or charges have been registered from all over Pakistan. This is something which we look into that. And the important thing which we have to understand, that we have to pay tax. You know, in COVID, UK government has paid £8,000 to every individual. But what they said you have to pay tax on it. So there is no excuse. There is no other thing of a tax money, because if you are getting anything in terms of revenue, you have to pay tax. So what we are proposing is that taxes should be imposed on all income. There should be no exemption. If you can see tax developed economies, there is no concept of exemption. There is no concept of threshold. But we are living with that exemptions. We are living with that thresholds, and we are pulling with that hame exemption nahi mila, isko exemption mila. That's all agendas which we are pushing day and night. Uniformity in salary taxation. When I'm saying that there's a free allowances, there was a free benefits to the certain class, but at the same time, corporate sector has been taxed as the highest slab. I'm sorry, आपके साथ आपकी सैलरी के साथ ये होता है, लेकिन दूसरों के साथ भी यही होता है कि उनका आधा पैसा जो है चला जाता है. But there should not be any exemption on the allowances, on the perquisite, because it is a taxpayer money. It is not the anybody's money. Pension should be taxed at the fixed rate of 10%. दुनिया में कहीं pension exempt नहीं है. There is no other way to that. We need to tax pension because people are taking the taxpayers' money, so they have to pay tax. As I mentioned you, in the COVID, they have given, the UK government has given £8,000 to the public, but what they asked that you have to pay tax on it. So we have to shift our mindset. That's the major thing. We need to understand that there is no excuse to taxation. Implementation of point of sale of service provider level. In Pakistan, if you travel to Singapore, if you travel to Malaysia, if you travel to any country, there's on the dhaba you can find a point of sale. And if you ask traders here, they said, "How can it possible?" It is not going to happen. Why? Because your sale will be, because only reason that the sale will be disclosed. So we need to foot down and we need to ask them that ये हो नहीं सकता आपके point of sale के बगैर, because अब human जो मैं जिस age में उस वक्त यहाँ पे हूँ, by and large हम जो हैं वो compromise पे जिंदगी गुजार रहे हैं, unfortunately. So I think slide पहली आगे वापस कुर्सी की वजह से एक और नीचे आएगी और ऊपर सही है. So holding period of immovable property should be withdrawn in every sale and purchase transaction subject to capital gain tax. What I'm proposing that we need to tax the income, not the asset. Last year क्या हुआ कि उन्होंने 7E का law introduce कर दिया, उन्होंने asset पे tax लगा दिया. So you have to withdraw the holding period, every capital gain, every transaction which if somebody is getting the money, वो tax हो जाए. So what we are proposing that abolish section 7E of the income tax ordinance, which says that अगर आपके पास certain amount से ज़्यादा एक asset है, तो you have to pay 1% of the value of the asset. So आप income tax करें, but you cannot ask for the taxability of the assets. Next slide, please. So there is another law, CBT, on the foreign assets. उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अपने आप को they have put them outside Pakistan as a non-resident. So I think we don't bring these type of amendments, because आपने 2018 में you ask them to come and register themselves and pay the tax in Pakistan, and then you suddenly come up with the innovative idea
that capital value tax on the foreign asset, or in Pakistan it is on a immovable assets, but outside it's the movable or immovable asset, their bank account, their investments, their property. So isko we need to reconsider it, that we have to tax income, because wo jo income hai us pe tax de raha hai, so there is no other point that you have to tax the assets. For a compliance purposes, we asked them to introduce a mirror policy. If my return, if somebody has filed the return and its data has not been matched, then only the notice has to be issued. In income tax nowadays, FBR, no offense to them, but issuing the notices on a drop of a pin. If you see, there's 100 of notices every other day to the taxpayers. So this is not, I think, the right practice, because if somebody is with you, it is he or she is registered with you, the taxpayer is registered with you. That's the. इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको नोटिस दे दे के उनको स्क्वीज करें. You have to go and you have to extend your pie. The same is that there's a notice under section 125. It's a I think a specific proposal 125A, when on every other tax return they issue the notices under section 125A. But what we are proposing, that after the assessment they can issue this notice, because the spirit is that notice can only be issued when it is erroneous and the prejudicial to the interest of revenue. So you cannot issue on the filing of the tax return. So we propose, it is a specific proposal. Tax on the agriculture income may be collected by the federal government. Why we are proposing it? That provincial government, there is a vested interest. I ask you, vested interest. They are not getting it documented. There is a law everywhere in Sindh, Punjab, but they are not getting the true tax, the right collection from the agriculture income. So if the federal government, if somebody else will collect, they might will get the better results from them. Return of income should be available on IRS. हर साल एक इशू होता है कि जी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुआ, हमारे पास how can we file our tax return, how can we submit our returns. So एक पूरा एक ह्यूमन क्राई चलता है, पूरी डिबेट चलती है. दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता. एवरी ईयर उनका पोर्टल जो है वो अमेंडमेंट करके अवेलेबल होता है. पाकिस्तान में ये एक पूरा एक स्कैम है जिसमें FBR भी शामिल है, उन पराल भी शामिल है, everybody is involved. But if what if they will give us the return by 15th of June, then there is a law and income tax ordinance, within 90 days the taxpayer has to file their tax return. So that's perfectly all right. But by September वो देते हैं और कहते हैं आप 30 सितंबर में जो है रिटर्न फाइल कर दें, तो फिर वो डेट्स का एक्सटेंशन का पूरा एक सिनेरियो चलता है, और उसकी वजह से जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, जो टैक्स रिटर्न के साथ टैक्स आना होता है वो डिले हो जाता है. ऑल्दो वो बहुत ही मिनिमल रह गया है, लेकिन बट इट इज देयर. सो गवर्नमेंट हैज टू चेक दैट के रिटर्न्स जो हैं अवेलेबल हों बाय 15th of June. जी प्लीज नेक्स्ट लाइन. I think again point of sale indirect tax की वो है at every level of trading activity. Point of sale से हमारे यहाँ बिजनेस कम्युनिटी का बहुत बड़ा झगड़ा है. वो नहीं चाहते कि पॉइंट ऑफ सेल हो. वजह आपको मुजरिमेंट नहीं करा सके, पाकिस्तान डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता. आप कितने भी डेलिब्रेशंस कर लें, आप कितने भी डायलॉग्स कर लें, पाकिस्तान की डॉक्यूमेंटेशन का मेजर इशू है. और डॉक्यूमेंटेशन जिस दिन होगा, ये जो रेवेन्यू आ रहा है ये डबल हो जाएगा. रेट ऑफ टैक्स एट एवरी लेवल शुड बी इन अ सिंगल डिजिट. आजकल हर रोज अखबार में आता है कि जी ये इनपुट टैक्स पे जो है FBR ने एक रेड किया और लोगों को पकड़ा. सो पूरा जो मैकेनिज्म है वो ये है कि जी 18 से % आपका टैक्स है, सेल टैक्स, और वो टेम्पटेशन है लोगों के लिए टैक्स एवेड करना, बिकॉज यू नो इट्स अ सेटल प्रिंसिपल दैट हायर रेट ऑफ टैक्स इज अ टेम्पटेशन टू एवेड इट. तो आप हर लेवल पर टैक्स लें, इनपुट का मैकेनिज्म ही खत्म कर दें, तो पाकिस्तान में वो जो इनपुट के ऊपर जो करप्शंस होती हैं, जो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जो पूरा एक्सचेकर को डेंट करता है, वो चीज़ खत्म होती है. हम ये प्रपोज कर रहे हैं.
ये काफी अरसे से प्रपोज हो रहा है, लेकिन ये है कि ये ऑल्दो जो मैंने कहा वेस्टेड इंटरेस्ट, उसकी वजह से ये 3 चीजें ही हैं हमारे यहाँ जिसकी वजह से ये चीजें यहाँ पे स्टैग्नेंट पड़ी हुई हैं. Reduce rate of sale tax for online banking payments and guide them, because आप if you see at these bakeries कि यहाँ पे ईद के दिनों में लोग क्रेडिट कार्ड दूसरों के लिए जाके चार्ज करवा रहे होते हैं. सो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट SRB को कि जी आप भी रेस्टोरेंट्स वगैरह में अगर ये इम्प्लीमेंट करें तो बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन होगी, और मेरे ख्याल में पॉइंट ऑफ सेल की भी इम्प्लीमेंटेशन इससे आसानी से हो सकती है. नेक्स्ट प्लीज. बेसिकली होगा कैसे? हम लास्ट 75 ईयर्स से हम डिस्कशन कर रहे हैं, डेलिब्रेशंस हो रही हैं. आई थिंक डिजिटलाइजेशन इज द वे फॉरवर्ड, इज द ओनली वे फॉरवर्ड. अब इस वक्त आई एम सॉरी फॉर ये चेयर्स हैं, इसकी वजह से चैलेंजेस हमें क्या फेस करने पड़े हैं. लार्ज एक्सिस्टिंग कंप्लाइंस टैक्स because of lack of failure to bring in tax net of what is feasible to achieve, such as wholesalers and service providers. अब ये जो टैक्स गैप है ये ब्रिज ही नहीं हो पा रहा. Thank you. Lack of adequate documentation has complicated increasing the number of new filers and raised tax evasion avoidance of significantly. Highly prevalent. ये पाकिस्तान का इस वक्त जो dilemma है वो ये है. Or you can address this by introducing artificial intelligence. Next, please. Leveraging AI and implementing digital solutions at FBR and operational level within a business and enhance transparency and efficiencies in tax collection. Improve FBR governance, tax administration. Digital invoicing to capture sales and purchase transaction across entire supply chain. Utilizing technological advancement at NADRA, working with any international service provider of repute to digitalize tax collection. Comprehensive documentation of economy, build an equitable tax system. What I'm saying ke FBR last decade से ये काम कर रहा है और ये काम हो नहीं पा रहा. I don't want to dilute on that कि क्या चीज़ है, वजह क्या है. तो मेरे हिसाब से डिजिटलाइजेशन जो है उसका एक ऐसा वे फॉरवर्ड है जिसको अगर हुकूमत वक्त, हमारे पॉलिसी मेकर्स अगर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें, तो दुनिया ने एक्सपीरियंस करके एक प्लेटफॉर्म बना दिया है. आपके पास है कि आप उस एक्सपीरियंस से, जैसे कहते हैं ना, जो आप लोगों के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हैं. So now it's a time for Pakistan to utilize ये जो डिजिटलाइजेशन का पूरा मैकेनिज्म है. अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, हम अगर डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं अपने आप को, तो ये एक बहुत अच्छा वे फॉरवर्ड है. जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड. आई थिंक पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में टैक्स फायदा जो है उसको फैसिलिटेशन मिलनी चाहिए, बिकॉज जो लोग टैक्स में वॉलंटरी आए हैं, फोर्सफुली आए हैं, बाय डिफॉल्ट आए हैं, बट वो आपके पास हैं, वो आपके एम्बेसडर हो सकते हैं अगर आप उनको फैसिलिटेट करें. इफ यू डोंट फैसिलिटेट देम, अदरवाइज वो आपके लिए एक मुश्किल हो जाएगी. इसलिए कि मैसेज जो जाता है वो जाता ये है कि यार देखो, तुम तो रजिस्टर हो, तुम्हारे पास तो नोटिस आते हैं, मैं तो स्कॉट फ्री घूम रहा हूँ. सो वी नीड टू चेंज दैट मैसेज, और जो इम्प्रेशन है वो. Tax cycle should be completed, that is collection of tax and spend it on common citizen, which includes but not limited to health, education, infrastructure and transportation. पाकिस्तान में लोगों को यही नहीं पता कि जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो खर्च कैसे हो रहा है. हमें प्रोपोगेट करना चाहिए कि हमने ये स्पेंडिंग हेल्थ पे की, ये स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे की, ये स्पेंडिंग ट्रांसपोर्टेशन पे की, बिकॉज ये पब्लिक अफेयर, ये पब्लिक का डोमेन है जहां पे लोगों को ये चीज मिलनी चाहिए. दुनिया में जब ट्रस्ट की बात की थी वासे साहब ने, तो ट्रस्ट बिल्ड कैसे होता है? व्हेन आई सी, देन ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बिल्ड अप होता है. जब मैं देखूंगा ही नहीं तो ट्रस्ट कैसे बिल्ड अप होगा? मुझे क्या पता कि SRB ने इतना ट्रिलियन अगर रेवेन्यू कलेक्ट किया है, वेयर दे हैव स्पेंट दैट. PRA ने अगर रेवेन्यू कलेक्ट किया है, वेयर दैट मनी गोज. FBR ने रेवेन्यू कलेक्ट किया है, वो पैसा कहाँ गया? So it has to be identified. आपको बताना पड़ेगा कि ये पैसा यहाँ लगा है.
जब जाके वो ट्रस्ट जो है ना, जो ट्रस्ट डेफिशिएंट है, वो ट्रस्ट इंक्रीज होगा। अगर आप बताएंगे नहीं, सो मेरे ख्याल में वो ट्रस्ट कभी भी नहीं होगा। इसी तरह एक सूरत हाल रहेगी। Government hospitals and schools are to be run on public-private partnership, and the tax filer will pay reduced or free for education and health services. We need to change the paradigm, because दुनिया में कहीं भी अच्छी एजुकेशन जब तक नहीं हो सकती जब तक गवर्नमेंट एजुकेशन और हेल्थ को अपने हाथ में ना रखे। ये दो तीन चीजें गवर्नमेंट के हाथ में जब तक नहीं होंगी, यू कैन सी दैट ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, एजुकेशन, ये जब तक गवर्नमेंट के हाथ नहीं होंगी, इसको मिसयूज किया जाएगा। हमारे यहाँ मशरूम की तरह किसी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन मैं मशरूम की तरह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन गई हैं। वो एजुकेशन पे भी काम कर रही हैं, वो हेल्थ पे भी काम कर रही हैं। तो और जो ट्रांसपोर्टेशन इतनी मिजरेबल हो गई है कि आप सिर्फ फ्लाइट या जो है जहाज की सवारी करने को तैयार, वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं रह गई। सो होता क्या है, दुनिया में जहां भी डेवलप इकोनॉमीज हैं, वहां ये चीजें गवर्नमेंट के हाथ में हैं। जब भी ये लोग प्राइवेट सेक्टर के पास आएगी, यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट होगा। गवर्नमेंट शुड मेंशन द अमाउंट ऑफ टैक्स मनी स्पेंड ऑन ईच एंड ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी। ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जब आप उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे हैं, तो वहां पे एक तख्ती लगनी चाहिए कि इस पे टैक्स का पैसा कितना लगा है, फंडिंग कितनी है। बिकॉज ना आप दुनिया में आप चीजें छुपा नहीं सकते, सो व्हाई नॉट ट्रांसपेरेंसी आप खुद ले आए। यू कैन नॉट हाइड इट, बिकॉज आपको पता है कि आज अखबार की जरूरत खत्म हो गई है। बिफोर द न्यूज़पेपर कम्स टू योर डोर, आपके पास वो इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद होती है। The right to information, tax returns of government functionaries, judges, armed forces, ministers, senators and politicians should be available for public. ये भी एक ट्रस्ट डेफिसिट का रीजन है। You don't know एक्स ने कितना दिया, वाई ने कितना दिया। वो कहते हैं, वो यही समझते हैं कि उन्होंने टैक्स ही नहीं दिया। मे बी उन्होंने टैक्स दिया हो, अच्छा टैक्स दिया हो, व्हाई नॉट। यहाँ पे अगर कोई चीज पब्लिक हो जाती है तो उस पर उसके खिलाफ सजा हो जाती है उसको। जी प्लीज नेक्स्ट टाइम। सैलरी पैकेज ऑफ एफबीआर ऑफिसर शुड बी रिवाइज्ड इन लाइन ऑफ प्रोविंशियल रेवेन्यू। एफबीआर की जो सैलरी पैकेज हैं वो रेवेन्यू अथॉरिटी से कम है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम कॉम्पिटिटिव मार्केट अगर क्रिएट करनी है हमने, तो हमें कॉम्पिटिटिव पैकेज भी देने पड़ेंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक लेजिटिमेट आपके पास एग्जिस्टेंस आ गई है नॉन फाइलर्स की, दुनिया में कहीं नहीं है। आपको अगर लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो आपको बताना पड़ेगा जी, जैसे आप क्वार्टरली एडवांस टैक्स हमसे कलेक्ट करते हैं, यू हैव टू पे, आपकी सर्टेन इनकम है, यू हैव टू पे दिस टैक्स, देन यू हैव टू शो कि जी इन 3 महीनों में ये लोग जो हैं नॉन फाइलर से फाइलर हुए हैं। दैट शोज योर परफॉर्मेंस। एफबीआर का काम नहीं है कि टैक्स फाइलर जो है उन पर नोटिस दे, उनकी डिमांड क्रिएट करे, उनको लिटिगेशन में लेके जाए, एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन नाउडेज। सो हमें ये शिफ्टिंग जो है वो ट्रेड मतलब टैक्स पेयर के लेवल पे भी चाहिए, माइंडसेट की पैराडाइम शिफ्ट, जो हमें कलेक्टर है उनके लेवल पे चाहिए, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लेवल पे भी चाहिए। बिकॉज ये जो नॉन फाइलर्स की कैटेगरी है वो तो एंजॉय करते हैं, वो तो कहते हैं कि जी ठीक है हमने मिनिमम टैक्स दे दिया, नाउ वी आर फ्री, वी आर स्कॉट फ्री बिकॉज वी आर पेइंग टैक्स। बट द पर्सन हु इज कंप्लायंट, वो जो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, वो जो टैक्स रिटर्न है वो उसके लिए जो है अजाब बन गया। बिकॉज एवरी अदर डे समटाइम्स मॉनिटरिंग ऑफ विथहोल्डिंग टैक्स, किसी वक्त एसआरबी का नोटिस है, किसी वक्त पीआरए का नोटिस है, किसी वक्त एफबीआर का नोटिस है। सो एवरी अदर डे दे आर एंड रिसीविंग द नोटिसेस। सो एफबीआर के जो वेबसाइट है, अगर आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, आप चाहते हैं ट्रस्ट बिल्ड हो, दैट शोज द आपका स्कोर बोर्ड दैट 30 अप्रैल को ये फाइलर्स हैं, 31 मई को 2 और बढ़ गए। अदरवाइज ये जो पूरे 75 इयर्स के जो पूरा एक हमने अल्यूजन क्रिएट किया हुआ है, ये इसका रिजल्ट कुछ नहीं होगा। वी ऑलवेज सिट टुगेदर, टॉक एंड नथिंग हैपन। So I think this is what we are proposing, that if government is serious to get the tax revenue up, tax to GDP from
single digit to double digit, then government has to take a serious step. And I would say that strict steps because and sometimes it's a tough decisions going to be taken. So आपको लेने पड़ेंगे, इसलिए कि मैंने मिसाल दी दुबई की, ताजिर दोस्त कोई नहीं है, आपको रजिस्टर होना चाहिए, टैक्स से कोई कॉम्प्रोमाइज टैक्स पे नहीं है। दूसरी यहाँ इंक्लूसिविटी की बात हुई, तो आई थिंक यहाँ पे खवातीन बैठी हैं, तो दैट्स appropriate forum to just mention, if you encourage your husband, your father, your brother to disclose their entire asset in the wealth statement, that will help you at the time of succession. So because because sometimes people don't declare it, and when you go to the for the succession, something suddenly pop up. So it's better that you do some homework on your father and brother, so you can get a better result of that. Thank you very much. Thank you very much, Kashif Saab. This is Wasif Naqvi from STPI. I welcome you all once again, and welcome to those who have joined, like Ms. Naheed Mehman. We are about to begin our panel discussion, and the first panel is broadening the revenue stream, trade competitiveness. The moderator of this panel is Dr. Hamid Atiq Sarwar, who is the tax lead of REMIT program. We have with us Dr. Wasif Ali Mehman as the chair of this session. Sir, kindly join us on the stage, please. We have with us Mr. Saif Junejo, who's chairman Exports Processing Zone. May I request Ms. Naheed Mehman, who is the member board of Privatization Commission of Pakistan. Mr. Iqbal Tabish, he is the member of National Tariff Commission. Mr. Asif Haroon, who is a partner with A.F. Ferguson and Company. And last but not the least, Mr. Kaisar Bengali, who is the director, Angro Power Generation Kaipur Limited. So without taking much of time, I would now request Dr. Hamid Atiq Sarwar to please take over the discussion. Thank you, Machi, and thank you for the esteemed panelists and the guests who have joined us. Our today's discussion is focused on a very short-term objective, which is that what should the government be doing in next 2 months. And focus of today's discussion is obviously on 3 things. What can government do to increase growth in Pakistan, especially the export growth, and investment, obviously. And second will be the taxes, what should be done over there. The third session will be obviously the expenditure side. What can government actually curtail, what sort of expenses can be curtailed. So our first session will be focused on this thing only, that government will be announcing a PSDP expenditure for infrastructure development and other things. Government will also be announcing some privatization measures, and government will be announcing measures to enhance trade and investment. So this panel discussion will focus on these things, that how this privatization plan, this investment infrastructure plan, the trade and the tariff plan, as well as the other things which are making us less competitive in trade should be addressed. And we have a full range of expertise available in this panel. So I'll start with Kaisar Bengali Saab.
on a specific issue, and I know his views about that, how is there a scope of some money or some development coming out of privatization, and how should it be done, and what should government do? There has been a recent move on PIA privatization. We already have a steel mill. In fact, I was there when these two companies were split, but nothing has happened. And every year we put about 200 to 300 billion rupees as proceed of privatization, but end of the year, none of it is there. So how should Pakistan be tackling this idea of privatization to somehow get out of the expenditure related to it and get some money and growth out of it? ठीक है सब. Thank you very much, Ramit and SDPI, for inviting me here. Since the question is specific to privatization, Yes, sir. I will come back to other issues also, but so I'll respond to that. Every step the government takes, and something as large as restructuring the economy, which privatization involves. Nationalization was one side of restructuring the economy, privatization is the other side. There has to be a well thought out policy. Pakistan has never had a privatization policy. There has never ever been a discussion on privatization at any level. Not in the cabinet, not in parliament, not on public forums. The privatization mantra started in the early 90s. And the logic that was being presented at that time was that there is a budget deficit because of loss-making entities. And once we sell these loss-making entities, the budget deficit will be taken care of. And there will be enough money left for education and health, etc., etc. And we will also repay. And proceeds of privatization will be used to repay our debt. None of it happened. Debt continued to increase. Budget deficit continued to increase. There was no money for health or education. Whatever came from donor funding or from loans. And the irony is that when in 1992, 1 year, we privatized almost 100 entities. Juma Bazaar laga diya humne. The first entities to be sold were private profit-making entities. Nobody was willing to buy loss-making entities. 80% plus of entities that were privatized in 1992 shut down within a year. Were converted into housing. Plot bana ke bech diya gaya. There were hardly 4 or 5 units that survived and continued to function as industrial entities. There are prominent examples. In Hyderabad, the Seal Park Cement was a profitable entity in the public sector, sold and shut down within 6 months. Now there is a housing colony over there. And it's happened all over the country. Then comes the year 2000 onwards. The government comes with a new mantra. It is not the business of the government to be in business. So they said, we'll sell everything, even if it is profitable. So we sold PTCL. And PTCL was sold to a foreign entity, which is a public sector entity. So the mantra, it is not the business of the state to be in business, changed de facto, not de jure. It is not the business of the Pakistani state to be in business in Pakistan, but it can be the business of the foreign state to be in business in Pakistan. Basically, de facto, the policy, underlying policy for privatization is we need money, and wherever it comes from, get it. Whatever we have to sell, we should sell. Something that I was
warning when PTCL was being sold and some other strategic sectors, banking is a strategic sector, is that we are selling it to foreign interests. What if those companies are bought tomorrow by Indians or Israelis or others? Is there any national strategic interest factor in our privatization policy? But there is no policy, so there cannot be any factor. जो जिस वक्त बिक रहा है बेच दो, जितने पैसे आ रहे दे दो. And we go down on our knees to sell. Etisalat bid something for PTCL and then they reneged. They said, we will not give you so much, you have to revise it downwards. And we revised it down. And I don't know whether they've paid up now or not, but for years they did not pay $800 million. And we did nothing about it. We could do nothing about it. So this is really what we are experiencing is a joke. We need money. Now, privatization, nobody is willing to buy our private assets. You know, the difficulty in privatization is not that there are bureaucratic hurdles or anything. There have been cases where pre-bid conferences have been held and nobody turned up. So what, if we can't sell our industries and service sector organizations, now we are reduced to selling our agricultural land, which has constrained employment. There are no jobs for people. I teach in university, and for 2-3 years now, my students tell me what is the future. And initially I used to try and tell them, you know, there is hope, you should stay here, this is your country. Now I say, there is no hope, go away. Get a job outside, go away. There's nothing for you here. What we need to do, stop privatization. PIAs don't privatize assets, privatize management. Give the PIA, for example, to another company that can manage this airline. And it need not be one contract. If we can you know, unbundle, just as some, I think, civil hospital in Karachi, they have privatized catering. A private company has taken over catering. And so we can unbundle parts and give it out as a management contract for those parts or full. We have a steel mill. There is so much land. All the parties interested in buying the steel mill is just interested in the land. They will shut it down. In fact, interestingly, this is what has happened to PTCL also. I think about 6 months ago, they put an ad in the newspaper selling the land that they have. As I said, the only interest anyone who wants to buy privatized entities is the land. They will sell the land and go away. The land should be, excessive land should be turned into small plots for industries that are using steel as their product. This was the basic purpose of the steel mill. It was, in 1970, I was a student and I wrote a term paper for my class on the steel mill. I had a chance to go through the feasibility report. Nowhere in that feasibility report the word profit is used. The steel mill was not set up to earn profits. The idea was to build an engineering industry in Pakistan, which still doesn't exist, in Gharo Dhabeji area. That was the word used in the feasibility report is, we will turn the Gharo Dhabeji area into the Ruhr Valley of Pakistan. Ruhr Valley is the engineering center of Germany. And the steel mill was set up to provide subsidized steel for the engineering industry. Comes martial law in 77, everything is thrown out of the window. But let us revive it. Let us set up small-scale engineering industries on the land, surplus land that is available in the steel mill property. And that whole area, then Gharo Dhabeji can develop by itself. So there are options that we can follow, but first we must have a policy. Thank you. Thank you, sir. So 3 things are coming out of Kaisar Bengali Saab's talk. One is the need of
money by the government. And we know our current account problems, and hence some of the privatization is only offered for foreign investments. And on the other hand, we know from economic modeling that our current rate of saving or investment of 11 to 13% can take us only to a growth level of 3 to 3.5% according to Solo's model. So if we have to grow at 6 or 7%, which is needed for employment of our youth in Pakistan, the youth bulge, we need foreign direct investments also. So we have another view, probably the governmental view. Naeed Memon Saab is with us. She has not only worked in Sindh Investment Board, but now is member of Privatization Commission. So we'd like to hear the other view prevalent in this hall, that how we should go about privatization. Let me clarify that when I was managing steel mill at some point of time, out of this 18,000 acres, only 1,000 acre on which this machine is located was separated, and this is only for sale. The rest 1,800,000 or 17,500 acres have been separated and put in Pakistan Steel Mill, and it is not for sale. But nevertheless, your point is right. And when we come about infrastructure, the third thing you've said, we have Chairman EPSA over here, and we'll talk about it in detail. So Naeed, what are your views on this, please? Assalamu alaikum, everyone. Aapka sawal is with respect to investment facilitation, primarily, or my view on privatization? How privatization can bring FDI in Pakistan, and what should be the right mode of privatization? ठीक है. So, मैं माजरत के साथ, but I'm not going to say anything. Just कैसे आपने जो भी कहा, I agree wholeheartedly, but I will just. A good debate is where we can disagree. If everybody agrees, what's the debate? नहीं, बिल्कुल. मैं आपकी बात थोड़ी सी पे जाऊंगी, लेकिन पहले मैं जो मुझसे सवाल पूछा गया है, जब मैं सिंध बोर्ड में थी, I was the chairperson there for a few years, तो FDI की बड़ी बात होती थी उस वक्त, और आज भी होती है. तो I am just I don't understand why is it foreign direct investment. We should just be talking about investment. That's the first thing. I come from a family business. We have, a fairly established setup. I do some other investments that I'm involved in, etc. So for me, the most important aspect of growth, and बात की गई कि किस तरीके से हमारा investment to saving ratio saving to investment ratio बहुत कम है वगैरह वगैरह, तो कैसे growth. तो ये जो हम domestic investment को अगर mobilize करते हैं, in my opinion, that to me is key. FDI is always welcome. But in Pakistan, Kaisar Bengali साहब ने कहा कि जी हमारे तो assets are not really valued the way they should be, और कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है. Yes, because the scenario has become very cumbersome. बहुत सारे regulators मेरे आसपास सारे जगह बैठे हुए हैं, auditors हैं, सारे लोग हैं. ये एक बहुत cumbersome environment में आप काम करते हैं. मैं काफी different hats पहनती हूँ. Foreign investor, domestic investor, वगैरह वगैरह. And the biggest hurdle to mobilize any type of investment in Pakistan is the very, very, very cumbersome regulatory environment. अगर SEC से यहाँ पे SECP से कोई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो माजरत के साथ आप लोगों ने जितनी मुश्किल कर दी है हमारी जिंदगी, और कोई नहीं कर सकता. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बहुत ही इंडिपेंडेंट इदारा बना दिया गया, बहुत इंडिपेंडेंट है. हम ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में घूमते रहते हैं. And, we are very, very proud of how well regulated we are, but it is a nightmare to deal with. ये वो मुल्क है जहां पे जब पैसे आपके बाहर से आते हैं, FDI की बात कर रहे हैं, तो आपको PRC लेने के लिए ये जिंदगी में नहीं मिलेगा आपको. यकीन से मैं आपको बता सकती हूँ. You will pass away, then they will give it to you. So this is the cumbersome environment that we are currently working in. तो अगर हम किसी तरीके से अपनी domestic investment को mobilize कर सकते हैं, regulation को
बिजनेस फ्रेंडली बना दें। वाकई मैं वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट को मैं लीड करती रही, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। आई वाज द फोकल पर्सन फॉर दैट इन सिंध। रैंकिंग बड़ी ऊपर चली गई, बहुत हम खुश हो गए, पता नहीं क्या क्या विंडोज बना दी, और सुनती रहती हूँ मैं नाम। लेकिन आज मेरे अपने बिजनेस में उतनी ही मुझे तकलीफ है जितनी पहले थी। मुझे तो कोई तकलीफ कम नहीं नजर आई। इट्स इक्वली डिफिकल्ट। आज भी हम इसलिए काम करते हैं कि हम इस मुल्क में बिलीव करते हैं, और हम कहते हैं नहीं दिस इज वेयर वी बिलोंग। मैं आज रात में दुबई से वापस आई हूँ। आई कुड हैव स्टेड बट आई एक्चुअली केम बिकॉज आई बिलोंग हियर। This is where I am from and this is where I would like to give back, पर इतनी मुश्किल है हमारे लिए। Anyways, तो एक तो ये बात है कि हमें FDI पे फोकस नहीं करना चाहिए। We should really think about also mobilizing domestic investment, which is key. Privatization की बात हुई, I'm not going to be able to really speak on that subject because there is a huge conflict of interest if I really discuss that in a lot of detail. However, एक बात मैं जरूर कहूंगी because I do actually believe in what Dr. Kesar Bengali has said. जब अब हम जहां खड़े हुए हैं और अब क्या करना चाहिए, perhaps that needs to be revisited कि आज पाकिस्तान, I mean PI का क्या हाल है, या X या Y, Z and whatever the way is forward, that needs to be now dealt with pragmatically, and we perhaps need to have a slightly less idealistic view. Nevertheless, development 101 economics, हम बात शुरू में किया करते थे। आज मैं अगर ये बात करती हूँ तो मुझे लोग बहुत, and I will not mention people, but a lot of economists who've held lots of ministerial positions in Pakistan have always told me, फालतू बात है, ये नहीं आप बात किया करें। एक सीक्वेंसिंग की बात होती थी कि किस सीक्वेंस में प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, किस सीक्वेंस में रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। आप पावर सेक्टर को देख लें, डेवलपमेंट और पावर IPPs लगा दिए, अब इनको प्रॉब्लम आ रही है डिस्कोज में और ट्रांसमिशन में और सारा। लुक एट द सीक्वेंस। आपने बैंक्स को पहले प्राइवेटाइज कर दिया। मैं नहीं कह रही कि बैंक्स को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए, but is that the right sequence to do things? आज भी इंडिया में more than 70-80% banks are still state held, and so are they in China. In the developing world scenario, there is a sequence of events, and no matter what anybody says, I firmly believe that things need to be done in the right sequence, and that speaks to perhaps the absence of a overarching policy and strategy. And if that exists, then one can discuss पहले ये काम, उसके बाद ये काम. So let's not privatize the banks first. What did we do after privatizing the banks? We took away anything that could be state directed. So now why will anybody invest in anything? आप कोई private bankers यहाँ अगर हैं, commercial banks, मैं भी पढ़ाती हूँ. That's another thing I do. मैं अपनी क्लास के बच्चों से पूछती हूँ, बैंक्स में तुम लोग काम करते हो? तो 6 बच्चे 10 में से हाथ उठा लेते हैं. बहुत अच्छी नौकरी है, especially up to, they've really increased the salary. It's a great job to do. Their contribution to Pakistani economy, zero. So I meet all the heads of all the banks privately and officially. And they always say, how are you doing? And I always say to them, my friend, only you doing well. No one else is doing well here. You're doing well. And you will continue to do well because we set you up for that. We set you up for that. We gave you this open playing field. You can do what you want. So, अगर हम वाकई ये कुछ करना चाहते हैं, तो we really need to summarize, make business possible in Pakistan. That's it. Allow, and I don't want to speak to let's leave the government aside, but अगर हम private sector को और investment को facilitate करना चाहते हैं, बाहर से आए चाहे local आए, business को होने दें, let it go forward. Do not over-regulate business. There will come a time when you can extract your pound of flesh, but at this point, let business flourish. That is the only way forward. And domestic business. And finally, economies are local. They're not made in Islamabad. Nobody. They're not even made in Karachi. आप जाएं गांव में, वहां पे economies को mobilize करें. Local economy होती है. कोई हमारा लीडर आके कोई लोकल इकोनॉमी की बात ही नहीं करता. तो टीवी सारे बंद हो जाने चाहिए यहाँ पे. Anyways, all closed down. So thank you. Thank you, Naeem.
So we have covered this thing कि जी पहली बात हमारे पास सामने आई कि we should have a cogent sort of privatization policy aiming at medium to long term goals, and second, this excessive regulation which is choking the businesses should go out, which can be part of our proposals. So I'll go to now Asif Haroon साहब, और ये बड़ा perennial question है इस वक्त कि अभी तो नहीं लेकिन at one point of time the rate in real estate returns was 200%. The rate on dollars was about 50%. The rate of return on cars on money was 35%. And the local business return was 30%. And the bank account, again, 27%. And the export business yielded a return of 15%. How can you expect a local investor to invest in exports अगर ये डिफरेंशियल रहता है? और उसके दो ही तरीके हैं कि या तो आप एक्सपोर्ट का प्रॉफिट बढ़ाएं, उसको उसके अंदर लिमिटेशन है, गवर्नमेंट डजंट हैव मनी टू सब्सिडाइज एक्सपोर्ट्स, एंड प्लस इट्स प्राइस इज गिवन इंटरनेशनली बाय कंपेटिटिव मार्केट. सो क्या इसका क्या हल है कि क्या हमें बाकी जगहों से प्रॉफिट रिड्यूस करेंगे एक्सपोर्ट्स में? बिकॉज हम एक वाहिद एग्जांपल रह गए हैं जो 2012 में भी 25-30 बिलियन पे थे और आज भी 2025-30 बिलियन की ऑफिशियल एक्सपोर्ट्स में हैं. आई डोंट नो वेदर देयर आर सम इनफॉर्मल एक्सपोर्ट्स व्हिच आर नॉट रिकॉर्डेड, वेयर एज बांग्लादेश, वियतनाम, इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गए एक्सपोर्ट्स में. इज इट द फॉल्ट ऑफ टैक्सेशन और समथिंग एल्स इनटू प्ले के लोग जो हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर है, वो इज अ रैशनल इन्वेस्टर प्राइवेट सेक्टर का, वो एक्सपोर्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों नहीं? Thank you, everyone. Basically, your question relates to the fact that why the investment is not coming into the businesses, which would result into the exports. Mainly, I would say that in terms of what you are saying is that in terms of dollars, we are stagnant in terms of exports, that we are hovering around 25 billion to 30 billion. In rupee terms, obviously, the exports might have grown, but because of the dollar and rupee parity, we are increasing in terms of rupees. But again, because of the devaluation, we in dollar terms remains the same where we were 10 to 12 years back. Mainly the reason, in my personal view, is that the investments are not coming, apart from the other reasons which the other experts would have spoken. While we are dealing with our clients, the major concern from them, from the out investors, is that there is no consistency. Whatever the taxation policy is, the taxation environment, the taxation model, they envisage at the time of the investment. But when they start the business and they are in the middle of the business, suddenly the changes starts. And very unpleasant thing is that every time the government changes, the taxation policies in terms of the long-term investment also changes. So that's actually one of the major concerns we are feeling from our clients, which are coming into Pakistan, is that the lack of consistency. And secondly, what I also mentioned, that we have too much cumbersome regulatory environment, because there are a lot of approvals and the certificates and the authorities we have to deal with it. So the second point, in my view, is that what is actually restricting the more investment into the businesses as compared to the other businesses where the rate of return is very good is this. The third reason is very obvious, is that the other businesses which you have mentioned, like real estate or cars and transport business and like that, is that obviously there is a huge gap between the taxes you are collecting from the businesses and the manufacturers as compared to the taxes which you are not collecting from these sectors. And there are various reasons for that. One might be that you can blame the society as well, because we have the mindset of the society which believes in that we don't need to pay the tax, because there are some religious reasons, that because tax is haram and zakat is halal. There is another reason, is that there is a lot of trust deficit between the society and the government, whichever the government is. But the society believes that whatever the taxes will be paid to the government, those will not be spent on our welfare, but on the other. So
these can be one of the reasons, but apart from that, we can debate on the issue, but we need to discuss the solutions also. So I have some things, some issues on which we have some solutions and we can deliberate upon that. For example, we talk a lot on the agriculture income tax that because the provinces have the jurisdiction, so federal government can't do anything. In my personal view, it's not the fact. They can do some things through which the agriculture income tax can be collected in a meaningful manner, in a more transparent manner, and in a very sizable number. For example, agriculture income tax, yes, constitutionally, only provinces can charge and collect and frame the laws. But the federal government has the right to collect income tax on those agriculture income on which the agriculture income tax has not been paid to the provinces. How the federal government can identify those unpaid amounts, it's not very difficult. The federal government can ask the details of the agriculture property, which is already existing in the provincial records, and also can identify who has paid which amount of income tax in the provinces. So the rest of the income tax, with the income has been generated in the provinces in the name of the agriculture income, but which has not been taxed in the provinces, federal government can collect the tax, number one. Secondly, agriculture property, because there is a restriction in the income tax law that you cannot impose income tax on agriculture income. But the agriculture property can be asked to be declared in the wealth statement. There is no bar on it. So there is very important fact that if you want to start the documentation of the agriculture income on agriculture property, you should first start collecting the information. So there is no bar in the income tax law that you cannot enforce filing of the wealth statement of the agriculture property, although there will be no income tax on the agriculture income. So that will be the second stage. Third will be that there is an income tax collection on the sale and purchase of the property. Besides that, and I think that there will be since this matter is already pending in the courts, but in my view that if they have started this withholding, this tax as a withholding system, that for example, if on a certain types of the properties, whether it's agriculture or non-agriculture, if they collect a very small amount of income tax along with the property taxes, so as a result, what happened is that there will be collection of income tax on entire sort of property across Pakistan. And the government can say that if you have the agriculture income, you can adjust that withholding against the agriculture income tax liability. If you have non-agriculture income, then you can adjust that withholding against the non-agriculture income tax liability. But the major advantage would have been that you would have been able to identify, number one, who owns which agriculture income property and who is actually earning and paying agriculture income tax can be taxed under the federal domain. So the position is legally very clear. The third area which we generally talk about is that the wholesale and retail sector does not pay tax. We can talk about that, why not they are not paying it. And we also know that you cannot go to them and enforce the taxation because you cannot enter into the market. This is a fact. And likewise, you cannot convince them voluntarily because we have seen Taji Dost scheme and in the prior schemes also, we have seen that you cannot either enforce the tax or recover the tax by force from. So what you can do? There are two sides of the wholesale and retail sector. One is the purchases side and second is the sales side. You can try to identify the purchases so that you can reach to those retailers. And it is very easy to trace the purchases side of the retailer because the retailers are 35 lakhs. But to those who are selling the goods to the retailers, they might not be more than 5 to 10,000. And they are by and large in the tax net. So you can obviously try to ask them to file with such kind of information that you can able to identify and quantify the purchases of the retailer side. Second action point can be that the retailers who are selling the goods to the end consumers, you can introduce such kind of schemes. For example, one scheme which I was thinking about is that a small consumer whose monthly grocery budget is 30,000, for example. If that end consumer, government or the banks who basically introduce the digital payments,
if they provide them the incentive that if they will spend 30,000 rupees through digital payments, their budget, the government will reimburse 2,000 or 3,000. So as a result, the end consumer will go and purchase grocery from those retailers who will accept the digital payments. So as a result, over a period of time, you will be able to shift the businesses of the retailer from those who are accepting the cash towards those who are accepting the digital payments. So in my personal view, we need to develop a strategy as a result of which you can try to push them, the traders and the retailers, into a situation that where they cannot hide behind the what they are doing right now. So there are a number of things which we can address. Thank you. So session of taxation, but the thing coming out of it is that if we tax the income properly and rationally in rest of the domestic sector, it can actually somehow incentivize more exports by removing the anti-export bias in our tax system. One other thing which is stopping industrialization and export is related to infrastructure. And I can quote an example. I think this Lucky Motor plant, I saw the balance sheet, I may be wrong, but 60% of their huge investment was going into the land and 40% was for machinery. So land has become such a big problem for industrialization, and it becomes a real estate thing, and no roads are provided, and no other infrastructure, electricity, gas is not there, and hence all our SEZs are almost non-functional. We have another example of APSA Karachi, which was developed in 1980s on the model of land lease, that the plug and play park was created, and it was said that you pay rents of this property and do your business, and once you stop business, we'll evict you. I know there are some problems with it, but then the other person will come in. And this model has very successfully worked in other countries like China and etc. So we have our APSA chairman, Saif Junaid Saab over here, who is currently running this and Karachi APSA as well as the rest of the APSAs in Pakistan. I'd like to ask him how this model works, and plus what are the real problems, because he is dealing with exporters and he has a distinguished service in custom department. How our export can increase by developing infrastructure or by providing other facilities. Thank you very much, sir. Starting with the Karachi Export Processing Zone, although we have 9 export processing zones at the moment, 2 are under development. That is, one is Rikodik and other is North Waziristan district. FW sponsored EPZ. One is dormant, that is Tawarki Steel Mill, and there are efforts for reviving it. So there are 6 actually functional export processing zones in Pakistan now. The biggest one is the Karachi Export Processing Zone, as Sir has told us. Rest are in the upcountry. In Punjab, there are 2, Sialkot Export Processing Zone, Gujranwala Export Processing Zone. In KP, there is Risalpur Export Processing Zone. All 3 are also working, not to the expectations of the government or the APSA authority, but they are working. And there are 2 other Chinese export processing zone. We have JVs with them, the government agencies. I mean, Sendak Metals Limited, so Sendak project, and Dudar, which is close to Karachi also. The question pertains to the lane and the infrastructure. Yes, sir.
The Karachi export processing zone was an ideal and is still ideal, I would say, probably one of the success story of all the EPZs in Pakistan. That because the land cost was not to be obtained from the investors or the exporters. It was on the rental basis. And still, it is on the same model. Land is leased for 30 years, which is renewable and extendable. And there are certain annual ground rent charges for that, besides some security deposits. And then the utilities are provided by the export processing zone there. The problem is the government, the initial plan was that this zone, the Karachi zone, would comprise on 3,000 acres of land. But what is the reality? The reality is only 300 acres of land is for the Karachi export processing zone. And that was also developed in phases, phase 1 and phase 2. In first 20 years, phase 1 was developed in phase 2. So total is 305 acres of land, whereas the government had planned in 1980 that this zone would be developed on 3,000 acres of land. When we look at Jabal Ali Free Zone, which is similar, like export processing zone, similar incentives there. It is on 15,000 acres of the land. Now, suppose we at Karachi, 300 acres of land for export processing zone, and very close to us is Jabal Ali Free Zone, which has 15,000 acres of land. You see, last year's export of that single zone, Jabal Ali Free Zone, was $104 billion. Whereas Karachi export processing zone, which of all the exports of all the export processing zone is 75%, it was hardly $600 million, $700 million. All 6 functional export processing zone total export is around $1 billion. So we didn't care of bringing more land to this export processing zone or developing more export processing zones in the country, which has, I would claim that the most attractive incentives at the moment are for the export processing zones, keeping in view the balance of payment situation, the foreign exchange issues. The incentives are really, really, really good. But the government has not been able to develop more export processing zones. I gave an idea, like we were discussing about steel mill land. For 10 plus months, I was having additional charge of CEO of Pakistan Steel Mill also, because the CEO died there, and I'm working in the same ministry, so I was given additional charge. And when I saw the data, there are almost 5,000 acres of vacant land. I came with the idea that why this land should not be used for export processing zone. Luckily, that idea has worked, and the government has considered it, and SIFC has also considered. It's pending with the SIFC and the Prime Minister. So it has been almost decided that this 5,000 acres of land should be utilized for the export processing zone. Now, I visited in January when these Pakistan and Iran had not even started these hitting missiles at each other. So I was invited by Chabahar Free Zone for visit and some collaboration. You know how big was Chabahar
free zone, kind of export processing zone. 82,000 hectares of the land. So big. I'm not talking about Bangladesh. You see, Bangladesh have similar 8 or 9 export processing zones. And they have planned 100 more export processing zones, 15 are under development. Their contribution to the national export is around 20%. Whereas export processing zone in Pakistan, similar number, our contribution is 3 to 4%. So why we have not come up with this idea that we should have more export processing zones to contribute more to the national export? When Sir was my additional secretary in ministry, there was a project for reconditioned or renovated vehicles, auto zone. And there were a lot of discussion, and I came with an idea that in the whole world, there are private export processing zones because the government cannot provide the land and government cannot provide the funds for development of the export processing zones. So we came up with this idea, and at that time, the finance minister agreed, and there were 4 other ministers, including my minister. They said, okay, this your idea of private EPGs and public participant EPGs, go ahead and can you frame the rules? I said, I need 3 months to formulate all these rules. I did it with my team. And you see, in 3 months target given, it was done, but approval process took 1 year and 3 or 4 months. So this is the situation. And now, luckily, the private export processing zone law, the ordinance enabling provisions, and the rules are now from March this year. They have been notified, they are in place. And now the first project of 4,300 acres of private export processing zone is under discussion with my board, and probably on Thursday we will be approving and sending it to the federal government for notification. So there is need, like I said, the more export processing zones with 50 acres of minimum land and the funds, if company has to develop, then they can, with all these good incentives, they can start export processing zone and contribute to the national exports. So I said basically, focused approach is not there. As I said, the approval process, it took more than almost 1.5 years, including drafting of the rules. If we give these kind of incentives to the exporters, I think the exporters would come and invest in the export processing zone and contribute more to the exports of the country. Thank you, Janeer Saab. So one thing that's coming out of his comments is that the model needs to change, probably not only for APZA or export processing zone, but all the SEZs need to follow this model of plug and play parks, where the investor only has to, this great barrier of land should be crossed and the money should be invested in machinery and not merely on land and its speculation. So now we come to the final point. There is a debate and many papers suggest that there is an anti-export bias in our tariffs. Luckily, we have both sides. One from Tariff Commission, we have a responsible person and then an ex-custom officer in the shape of Wasif Memon Saab is sitting here. There is always this issue that how much revenue we can sacrifice in order to reduce our tariffs, especially on raw materials and capital machinery, which is not coming because we have custom duties, RDs, and additional custom duties on it. And similarly, the case where the intermediate goods
heavy value addition is made in Pakistan, they are again subjected to huge tax duty, custom duty. And the third thing is obviously that when finished goods are not allowed, the competitiveness is not there, and the standard of our products does not improve. So generally the trend is that the tariffs go down in developing countries in order to grow a competitive sort of industry. So I'll first go to Iqbal Tabish Saab, and I have also this issue of with the fifth schedule, which is that for certain industries will reduce the tariff, and for the rest of the industries like car industries will get a part on 15%, and another person who is importing spare parts of car will have to pay 95% of duty. So there are so many anomalies in there. So we'll first hear on this from Iqbal Tabish Saab, who is in National Tariff Commission. And then I'll request Wasif Saab to comment on it from the side of revenue, although now he wears another hat, but he had a long service career in customs. So Tabish Saab, please. Thank you very much. I come from an institute which is responsible for rationalization of tariffs, and our work starts when any thing lands in Pakistan, and we'll have to see that to what extent the duty is imposed and what could be its various dimensions. We in fact at NTC are involved in our regular budget exercise pertaining to those recommendations which come from industry. So our first principle is that we are evaluating all these proposals based on a rationale, which has the two core elements we look into. One is not the limited and the short-term financial gains, but our focus is on the economic and social gains which are coming out from the implementation of duties on the imported goods. Secondly, we in fact, as far as RDs are concerned, we have a very considered opinion that RDs in fact are the tools which in fact are used to stop the surging of some imports, and they should be undertaken as a short-term phenomena. But we have seen in many cases, the RDs have been perpetually and consistently, they have been imposed, and they have been sustaining, putting a lot of pressure on the high price import values, when adding to this the component of imposition of duties, which ultimately, when it trickle-down effects, comes on the manufacturing concern as well. So the impact is huge. So what in fact we are proposing to the government, that the RDs having more than 3 years span should be abolished. It should be discontinued. So that is the first principal argument over there. We have seen that RDs in many of the cases, it is easy to impose, but the people and industry does not take care of shifting these RDs to take no trade or remedy actions on buyers. So we have anti-dumping duties, we have safeguard buyers, which can be adopted, but it's a time-taking phenomena. So that's the Can we expect that this year there will be a huge movement in tariff, or it will still remain a? Yeah. As far as National Tariffs Commission's policy making, drive and persevere. So we had our tariff policy board last week, where it is very encouraging that a representative from the FBR. So they said, okay, you do your job, you evaluate the proposal based on the economic benefits, let our revenue part should be handled. It was very encouraging statement, but the facts remains that at the same times, there is some direction. Said this is the kitty on which you have to make tarifizations. So that kitty is quite small, that it will not bring in that level of significant impact on the tariff rationalization process. So
We also have to take consideration into the financial constraint by the government, but at the same time, we keep saying on them that these short-term phenomena will not work. We'll have to adopt the midterm and the long-term acceptable on that. This one, first part. You have also talked about the exemptions that have been covered under fifth schedule. So we in fact are also working on this segment as well. We have to say. The problem is that in this country is that we should not promote the cartelizations. Some of the few industries, they have taken a lot of advantages. If we see their balance sheets, so they have grown a vertical, growth we have seen, but horizontally we don't see at the moment which is required as well. So it's trickle-down effect to the whole economic process. So that's why we undertake value chain strategies to understand the whole process, that how should be the absorption of these issues as well. So we are also taking care of this schedule exemptions as well. They should be done in a rationalized manner. Thank you, Iqbal Sahab. We're happy to hear about it. WhatsApp, before we heard from you, but only we want your input on that. Since you have worked on the import side also and now on domestic taxes, reliant on our custom duties or move toward this domestic taxation more? And plus, what are the real problems apart from revenue which will stop this, which is causing this anti-export bias in tariffs? Thank you very much, Hamid Sahab. The issue regarding the export, it is almost static since many years to $25 billion. The schemes are there. We have reformed the scheme of IOCO, input output coefficient organizations for local as well as the export oriented industries. There is an EUU export oriented unit. We have merged all the exemptions notifications and the concession notifications to have a single window approach regarding the import raw material about which is used in the exports. But the thing is that, as you know, the last year we have got a lot of problem regarding the LC openings. So again, the dollarizations and non-availability of the dollars was hitting the banking sectors. So people were even unable to open the LCs for the basic raw material. So there was a sort of a different sort of hit which was hitting the export industries about their production, manufacturing, and the delays. The consignments which used to come at the port are remaining there, and there was a sort of a multiplication of the damages. So it was no initiative was taken by the government for many months to solve this problem of LC openings, and they are trying to reduce the trade surplus. This is one issue. Another issue which I would like to point out is the total closure of the trade with India. Though the balance of trade was in favor of India, but the raw material, especially the raw material used in the textile industries, the yarn, as well as then the pharmaceutical industry used to come from India, and from the Wagah border, the freight was almost minimal. As you know, the industrial base is mostly in Punjab and in Sindh. So it used to come. Now they have allowed the pharmaceutical raw material clandestinely from Dubai. The government has, on the demand of the pharmaceutical industries, is allowing the raw material import from India via Dubai. But the same thing we are hitting at the Wagah. Wagah is almost at closures. So on one side, there was decrease in the imports of raw material, competitive raw material at a very low rate, cheap rate from India. Another side, we could not export our products to India, in which we have got the competitive advantage. Strangely, in Pakistan, if one case of misuse of the export raw material occurs, we try to regulate, over-regulate everything. If some raw material is being brought under concession or exemption for export-oriented production, and it was sold in the market, all the agencies of customs and the domestic, even FIA, keep on pushing that misuse. And we will try to over-regulate again how to avoid this thing. And as you know, there is a number of things are going on in the transit trade also. So this knee jerk should be stopped. We should consider that if any damage in revenue occurs because of any single individual misuse, we should punish that person or that cartel,
and consider it as a collateral damage. As you know, in Pakistan custom, most of the 90% of almost 80% of the export is going through the green channel. And there may be some sort of misuse in the green channels in order to have a more duty drawbacks or sales tax refunds. But there should be robust system of the risk management to get hold of those elements which are misusing the green channel facility for exports or maybe for import. So these things should be brought in holistically. The other thing is there should be a sort of a financing scheme by the state bank or the banks. If you are exporting in some non-traditional item to a non-traditional market, we are over-relying on textile only, textile, leather, sport, and surgical. We have been listening this since the class nursery, that Pakistan has got very much export potential in these items, but we are not neither diversifying our markets nor the items. So there should be more role of the SMEs. There are a lot of SMEs in Pakistan. They should bring the export products, and there should be a single window, like Junaidu Saab has told, that there should be EPZs, and there should be a sort of a clusters of SMEs which should do the exports in non-traditional products. So these are the suggestions, and we hope that we will increase our export. If these things should be considered holistically, the financing, the export exemption schemes, the diversification. Thank you, Viman Saab. Since we have two other panels, so I'll go through a quick fire round before any questions from, so I'll like to have short answers from all participants except Wasif Saab. He will conclude the session. What should the government do, starting from Asif Harun Saab? One thing or two things that you need to appear in this budget or PSDP or privatization, which you will like to see this government doing in order to increase investment and export, industrialization and export? Exports की साइड पे I would suggest that कि जो provincial authorities जिस तरह वासिफ साहब यहाँ बैठे हैं, तो I would suggest one thing is that कि export of services को अगर zero rate करें, तो I think that कि इसमें जो चूँकि बड़ा focus है non-traditional exports के ऊपर, तो one thing which I would can suggest is that कि थोड़ा सा provincial authorities मिलके कोई ऐसा framework बनाए in alliance with the federal government, so that there is transparency but zero rating with proper reporting. That who is, देखिए IT services की export में सबसे बड़ा challenge है money laundering, and that is needs to be introduced with some checks and balances, because the person who was sending the money, whether this money is coming from the export of services or for something else. So zero rating services के ऊपर introduce की जा सकती है, but with some checks and balances. जी, कैसे बंगाली साहब, anything जो industrialization और exports बढ़ा सकती है? जी, I'm opposed to this whole drive for tax mobilization. Our problem is not taxation. Our problem is expenditure. I also, till about 15 years back, I also thought we should have direct taxes, tax the rich landlords. You see them splurging money all over the place and we are not taxing them. Then jo mera research mind came to work, and I said, let me put the data together. And putting the data together, I have realized that the number of rich in Pakistan are very small. Numbers are not big. The number of large landlords are also, agricultural landlords are also very small. If we can manage to tax everybody and tax them to 100% of what they should pay, yet the revenues will not be large because the numbers are small, we still will not be able to cover our budget deficit. So the solution lies in expenditure. The oil subsidies and circular debt has become very large because of bad policies that were introduced about 30 years back, which we all had opposed very strongly at that time, but it went through. But two big items are government's own expenditure, civil service, and defense. I think defense we have to talk about. There is no alternative to talking about defense expenditure. That has become the albatross around our neck. It is dragging the economy down. The other point I want to make
there's talk of export processing zone. I think this whole export processing zones should be abolished. The whole country should become the export processing zone. Wherever you are, if you are exporting, fine. And to do that, there are a number of steps. I think very, very good information has come up. I'm so impressed by everybody sitting here, by the technical knowledge they have and the solutions that they have in mind. Reduce GST goods, I would say, to 5%. And let everybody produce whatever they want and let them export if they want to. The land की आपने बड़ी अच्छी बात की. As I said, industries are being converted into land. Site industrial state, Korangi industrial state. Industries are shutting down. उसकी जगह offices आ रहे हैं, schools आ रहे हैं. You know, there is an administrative measure that can be taken. In some ways, this exists in other countries. First of all, you introduce capital gains tax on land sales. But since the value that is registered is very small, there's not much you'll get. How to get around that? If A is buying land from B, that transaction, this is the land, this is the price, should go on a public website for, say, 30 days or 30 working days. Within that time, C can bid for that by 20%, offering 20% more, and A will have to sell it to C compulsorily. This is called the right of first purchase. I will not sell a plot for 5 crores and on paper book it for 5 lakhs. Otherwise, I'll have to sell it for 6 lakhs. Once you bring land speculation under control, land cost goes down, and that will help industrialization along with reduction of GST goods. That's my. Thank you. Ji, Tabish Saab. The two segments, one export enhancement, other is investment. When we talk about the investment, the 4 basic determinants of investment attraction are the rule of law, consistency in policies, and sovereign guarantee by the states against the investments, and exchange rate stability. Unfortunately, none of the 4 exists there. So. We agree that Iqbal Abid Sahab, लेकिन and आप now चूंकि attracting government की तरफ investment. से है ना, Yeah. तो हमें ये बताएं कि आप टैरिफ कमीशन में इस दफा क्या 2 बड़ी चीजें करने का सोच रहे The हैं? new tariff policy, which will be covering 2025 to 2030. So we are proposing the government that one of this segment which was loose, that it was not investment driven effect. When we talk investment driven, we have to bring the tariff rationalization on a stem that fundamental 2 changes should be made. There shall be the zero taxation in the real terms on all the raw materials and the machinery, which will be transforming the raw material into finished products. That is one pertinent suggestion which we in fact are importing at the end of NTC. Thank you. Ji. So I'll just sort of repeat what I said earlier. I think that anything that can be done to promote and make business easier. And with respect to taxation, I believe that we are heading towards a sort of an unnecessary regressive regime. इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. And I think कैसर बंगाली साहब सही कहते हैं, कोई इतना टैक्स आप नहीं कलेक्ट कर सकते जिस तरीके से आप चल रहे हैं. आपको अपनी टैक्स नेट को अगर बढ़ा करना है तो रिटेल को देखें, डोमेस्टिक इकोनॉमी को देखें, maybe some trade licenses को introduce करें ताकि every single trade is registered and taxed. So अगर registration बढ़ जाती है, so you bring more and more people in the tax net instead of just taxing the industrialists. And the other thing is, I think we should really move away from the trade related tax. I think आज भी कोई 40-50% tax जो है वो शायद trade related ही होता है आपका. And that is very, very regressive. आप domestic economy को ज़्यादा retail को, commerce को tax करें, but not through, just through their registration process and a small tax, just bring them into the net instead of killing people and making them all non-resident and pushing them out. Ji, Junaid sir. Sir, in principle, I would agree with Kesar Bengali साहब, हमारे उस्ताद भी हैं, कि instead of export processing zone, सारे मुल्क को export
पे लगाया जाए तो वो बेहतर है। बट अगर वो नहीं होता तो मेरी सजेशन ये होगी कि मोर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, लाइक बांग्लादेश कोई 100 एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पे जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मेरी सजेशन ये है, और बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा था 1 साल 1.5 साल पहले कि स्टडी भी करवाएं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के मॉडल पे और न्यू साइट्स। तो वो प्राइम इंस्टीट्यूट से हमने स्टडी करवाई है और उन्होंने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग के मॉडल पे तो अपनी सजेशन दी हैं, लेकिन 10-12 डिफरेंट साइट्स भी उन्होंने सजेस्ट की हैं जहां पे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनाए जा सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइवेट ईपीसीज अलग, गवर्नमेंट की अगर सपोर्ट हो तो 10-12 और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाए जाए। Thank you, Junaid Saab, and all the panelists. Before I ask Arfaz Saab for concluding comments, उससे पहले हम questions लेंगे, लेकिन ये बात बहुत clearly नजर आ रही है कि in tariff and taxes investor जो है उसकी feasibility out हो जाती है जब आप taxes और tariff को short term में change करते हैं। So at least उसके payback period में उनको change नहीं होना चाहिए। So we need to think long term के 5 साल के लिए tax की policy। US में president आता है, वो टैक्स पॉलिसी देता है, वो 4 साल वही चलती है, उसके बाद चेंज नहीं होती है। हम साल में 3-4 दफ़ा इसको चेंज कर रहे होते हैं। सो वी डोंट अंडरस्टैंड दैट द बिजनेस फिजिबिलिटी विल गो आउट, और वो फिर कुछ और करने पे मजबूर हो जाता है। एंड सेकंड थिंग इज ऑब्वियसली स्ट्रेन चाइना US relationships आर नाउ गिविंग आर एक्सपोर्टर्स एन अपॉर्चुनिटी कि अगर वो सोर्सिंग थोड़ी सी चाइना से हटाएं तो मे बी देयर इज अ चांस कि हमें एक्सपोर्ट में ज़्यादा शेयर US में और यूरोपियन मार्केट में मिल सके, एंड प्राइवेट सेक्टर नीड्स टू थिंक अबाउट इट। But before Vastav concludes this discussion, if in audience somebody wants to ask question from the panel, Ji, Qadir Saab. Thank you very much. मेरा नाम अब्दुल कादिर मेमन। I am the former president of Pakistan Tax Bar and the former patron of Pakistan Tax Bar Association. I think इतनी distinguished gathering intellectuals के बाद कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। But if you could allow me, I would just like to. First of all, I think पाकिस्तान को अपने टैक्स रेट्स को रिकंसीडर करना चाहिए कि हमारे टैक्स रेट्स जो हैं वो बहुत हाई हैं कंपेयर टू इंटायर वर्ल्ड, यू नो। और आज की दुनिया में ये मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स किसी जगह उसके स्प्रेड ज़्यादा होने के बावजूद भी वो अपनी टैक्स की प्लानिंग इस तरह ना कर रहा हो कि जहाँ दुनिया में उसको टैक्स की कम पड़ रहे हो वो वहीं पे पार्क करने की कोशिश करता है, वहीं पे वो चीज़ों करने की कोशिश करता है। और ये हमारी एक मिथ है। जब कभी भी मुझे पिछले 20 साल में FBR के साथ मिलने का मौका मिला तो ये हमारी एक मिथ है कि हम टैक्स के रेट को कम करेंगे तो हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा। यू नो, ये दिस इज अ मिथ। इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मनी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब डिवास्टेटेड जर्मनी ने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सोचा तो सबसे पहले उन्होंने अपने टैक्स के रेट्स को कम किए। दिस इज द हिस्ट्री एंड दिस इज अक्रॉस द वर्ल्ड, आप देखें ग्लोबल है। तो मेरा ख्याल है कि एक इस बजट में ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर टैक्स के रेट्स कम होंगे तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग इनकरेज होंगे उसको टैक्स के नेट में आने। दूसरा, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं बताऊं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से बाहर होना चाहिए और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ थिंकिंग का होना चाहिए जो कि एक नेशनल थिंक। फॉर एग्जांपल डॉक्टर साहब, आपसे ज्यादा कौन बेहतर जानता है कि जब बजट का प्रोसेस होता है तो आप सिवाय लॉबीज से मिलने के तमाम जो भी जिनके भी अपने इंटरेस्ट होते हैं उनसे पूरा आप मेरे ख्याल में 2 महीने 1.5 महीना जो बजट का प्रोसेस होता है वो इसी में गुजार दे रहे होते हैं। 1 मिनट के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जा रहे होते हैं, फिर बिल्डिंग आ रहे होते हैं, फिर जा रहे होते हैं। तो आई थिंक दैट पॉलिसी थिंकिंग प्रोसेस जो है इसको कहीं ऐसी जगह होना चाहिए और जिसमें people like, you know, economists like Kesar Bengali Saab, the advocate, the accountants, and that combination of people should, you know, be thinking, putting what tax laws should be done. तीसरा सर ये है कि आज मैं देखता हूँ जब कभी भी हमारी डिस्कशन होती है प्रोविंसेस और फेडरेशन के साथ तो इस तरह होता है जैसे इंडिया पाकिस्तान के कोई आपस में सोच रहे होते हैं, यू नो, मतलब दे थिंक कि मेरा सूबे को क्या हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, फेडरेशन को क्या हो जाएगा। वी मस्ट थिंक एज अ नेशन। Across the world, the tax to GDP ratio is not the tax to GDP ratio is the federation. It is the province and federation together
जो भी वो टैक्स कमाएंगे दैट विल बी द टैक्स टू जीडीपी रेशो। इसीलिए हमारा जो डिस्टॉर्शन भी है इस वक्त वो इसीलिए है कि हमारे जीडीपी की जो कंपोजिशन है वो इस तरह से है कि हम जितना भी रेवेन्यू कमाते जाएंगे हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशो हमेशा नीचे जाती जाएगी बिकॉज हमारा कंपोजिशन ही है। लास्ट वन थिंग आई जस्ट वुड लाइक टू, automation is the only solution to bring a deterrence of broadening for tax base। और अगर कोई पकड़ा जाए तो उसको सजा होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, वो सजा मस्ट भी। आपको याद होगा डॉक्टर साहब की जो सबसे पहली वर्ल्ड बैंक ने जो आपको फर्स्ट एवर जो मिली थी सपोर्ट, that was for the automation and 67% of that World Bank जो सपोर्ट था, this was all the automation। लेकिन हम सब ने मिलके उसको अपनी बिल्डिंगों को खूबसूरत करने में, अपने फ्लोरों को खूबसूरत करने में लगा दिया। तो आई थिंक that needs to be considered। Thank you very much। जी थैंक यू काजी साहब। एक we have full taxation session और उसमें शबरजादी साहब भी आ चुके हैं अगले पैनल के लिए, तो उसमें हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपकी बात सही है कि फेडरल प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन इज अ मस्ट। मैं तो कहता होता हूँ एफबीआर का 60% अब सूबे लेते हैं, तो एफबीआर इज नाउ प्रोविंशियल। जी बस दोनों कर लेते हैं, कीप द क्वेश्चन शॉर्ट। बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असफंदिया फारूक है। जस्ट अ क्विक क्वेश्चन, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड, हम बात कर रहे हैं कि how to ensure also that the taxes are spent on the people. We just wanted an opinion from the panel कि हम जब बात करते हैं federal level taxation, provincial, तो what about local taxes? कि municipal level पे काफ़ी I think tax collection बड़ी dismal है, हमें नज़र भी आता है कि वो पैसे लगाए भी नहीं जाते। But what about that from a national standpoint and Pakistan के context में क्या ये भी एक partially एक solution हो सकता है along with of course federal and provincial? To like municipal taxes। Thank you। बिफोर रेफरिंग इट टू पैनल, मेरे ख्याल में अभी टैक्सेशन का एक तो पूरा हमारे पास है, उसमें हम इस बात को डिटेल में करेंगे। और दूसरा ये है कि ऑब्वियसली इसका स्कोप अभी ज्यूरिसडिक्शन कम है। जी उधर दीजिए लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी कैन गो फॉर रैपिंग अप। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा एक सवाल जो है वो पॉलिसी से रिलेटेड है कि जो हम लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन भी करना चाहते हैं, हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी करना चाहते हैं, हम रेवेन्यू भी जनरेट करना चाहते हैं अपने कस्टम्स ड्यूटीज और उन चीज़ों से। तो अभी भी आप देखें कि आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो दोनों तरफ, आप इन दोनों चीज़ों को, तीनों चीज़ों को साथ साथ लेके चल रहे हैं। आप एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी भी है आपकी, फिर अभी रिसेंटली आईटी रिलेटेड भी एक आपकी स्ट्रैटेजी है, ये आईटी एक्सपोर्ट्स को 10 बिलियन तक लेके जाने की। दूसरी तरफ आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की भी बातें कर रहे हैं कि नहीं, हमने लोकल डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है। लेकिन आप दोनों चीज़ों पे फेल हो चुके हैं। माजी में हमें ये सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आप अर्जेंटीना, इजिप्ट को ले लें, वो फेल हो चुके हैं। और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ भी हम मॉडल अडॉप्ट नहीं कर सके। तो वी नीड टू डिसाइड कि विच मॉडल वी विल पिक अप एंड फॉलो इन द लॉन्ग रन। सो थैंक यू। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। मेरे ख्याल में बात सब अपने कंक्लूडिंग कमेंट में इसको कवर कर लेंगे। बेसिकली वही है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तब हम कहेंगे जब टैरिफ के बैरियर लगा के हम यहाँ पे इंडस्ट्री को, और एक्सपोर्ट प्रमोशन तब कहेंगे जब हम बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज कर रहे हो एक्सपोर्ट को। क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे दोनों तरफ नहीं है, शायद ये दोनों चीज़ें या पॉसिबल ना हो, इसलिए हम कुछ थर्ड सॉल्यूशंस देख रहे हैं। बट वास साहब अपने कंक्लूडिंग वर्ड्स और क्विक, क्योंकि अब अगले पैनल का टाइम भी हो गया। थैंक यू वेरी मच जी। It was very comprehensively. We have dealt almost all the subjects which were given to the panel, and the discussion was very comprehensively done here regarding the privatization. कैसर बंगाली साहब से आपके को काउंटर आर्गुमेंट दे नहीं सकता, मैं तो नहीं दे सकता। उन्होंने जितना कॉम्प्रिहेंसिवली हिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन को डील किया है और जो इश्यूज उन्होंने बताया हमें, उसके बाद जो है सैफ जूनियर साहब ने जितना ईपीजेड का बताया कि उसमें क्या हमारी जो हैं वो फेल्यूर्स हैं और किस तरीके से हम उसे एनहांस कर सकते हैं। नाहिद मेमन साहब ने बताया कि जी किस तरह से हमारे जो कंट्री के प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें हम बार बार एक लफ्ज यूज करते हैं कि जी टैक्स पेयर फैसिलिटेशन, और एक्ट उसके काउंटर करते हैं
कि किस तरह से टैक्स पेयर को मजीद मुश्किलात में डाला जाए। मैं कन्फेस करता हूँ कि सेल्स टैक्स के जो जितने हमारे फॉर्म्स हैं वो सारे अल्फाबेट्स कवर करते हैं और उसके बाद हम मेरा ख्याल है डबल ए भी शुरू हो जाते हैं कि डबल ए, डबल बी, डबल थ्री। इसी तरीके से इनकम टैक्स के जो फॉर्म है हमारे, हर साल हम कहते हैं कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फॉर्म होगा और इंशाल्लाह इस दफा जरूर होगा, और उसके बाद 4 पेज और बढ़ा देते हैं। और मैं ये दावा कर सकता हूं कि हम टैक्स पेयर्स को भी अगर दे दिया जाए ना कि आप इनकम टैक्स का फॉर्म भरें, तो शायद वो कॉम्प्रिहेंसिवली भर नहीं सके। इस तरह सेल्स टैक्स रिटर्न जो है वो भी हमारे लिए एक बड़ा इशू है। हम समझते हैं कि जिस तरह से इसको और मुश्किल बनाएंगे तो शायद हमारी एक्सपर्टीज को लोग मानेंगे कि यार इसने हर चीज कवर कर ली है फॉर्म बनाने में। तो ये हमारा मेन प्रॉब्लम है, सिंप्लीफिकेशन हमने करनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी एक नीड है, परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने में शुरू हुआ था, वो मेरा ख्याल है 20 रुपए पर किलो के हिसाब से सारे जो फॉर्म्स थे, एक फॉर्म था टेनेंट का, एक ओनर का, एक इंडस्ट्री का, एक मैन्युफैक्चरर्स का। 2000 में एक बहुत बड़ी ड्राइव चली थी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की। जी सॉल्यूशन ये है कि अब हमें किसी आईएमएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसमें कोई किक स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था कि पॉलिटिकल विल मस्ट है। जब तक आपके पास पॉलिटिकल विल नहीं होगी, अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो खैर एक टैबू वर्ड है, लेकिन अदरवाइज एग्रीकल्चर टैक्सेशन का इशू बिटवीन फेडरेशन और प्रोविंस चल रहा है। और हमारे पास कार्टेल्स जो बने हुए हैं वो अमूमन अपने वाले जो है वो लेकर चले जाते हैं फेवर्स, और जर्नलिस्टिक कोई चीज नहीं करते। डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो हमारे पास बहुत कम है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन की वजह से सारे इश्यूज इन्फ्लेशन के आते हैं। अब विदहोल्डिंग जो टैक्स है वो आपके टेलीकम्युनिकेशन पर भी है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी पर भी लगता है, आपके बैंक में आप खोलने जाए, एक तरफ हम कहते हैं कि जी सेविंग होनी चाहिए बैंक्स के थ्रू, अगर गरीब आदमी नॉन फाइलर है तो उसके ऊपर वो डबल ट्रिपल लग जाता है। अगर वो प्राइस बॉन्ड का प्रॉफिट लेने जाता है तो वो भी उसकी डबल टैक्सेशन उसकी हो जाती है कि भाई तू क्योंकि नॉन फाइलर है इसलिए तुझे नहीं छोड़ेंगे, आ जा तू मैदान में। तो ये सारी चीजें ये हैं कि हम एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रखें और उसे ब्लॉक करें, उसे लॉक करें कि 2 साल तक ये पॉलिसी चलेगी। और अगर खुदा ना खास्ता उस पॉलिसी का कोई एलिमेंट फेल हो जाता है तो फिर इंट्रोसेप्शन के तौर पर हम उसको एग्जामिन करें कि ये पॉलिसी हमारी क्यों नाकाम हुई। ये नहीं कि हर 15 महीने के बाद जो है या 10 महीने के बाद या 6 महीने के बाद हम पूरा पॉलिसी अपनी चेंज कर दें। तो इनकंसिस्टेंसी की वजह से कोई बिजनेस फोरकास्टिंग नहीं कर सकता है, डॉलर का रेट बढ़ता है, हमारी पूरी इकोनॉमी हिलकर जॉल्ट में आ जाती है कि अब इसको कैसे टैकल करें, डॉलराइजेशन वो कैसे करें, एलसीआर रोक देते हैं। यानी हर चीज का जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो प्रॉब्लम को एगमेंट करता है, जिसके लिए हम खुद ब्यूरोक्रेट्स जो हैं और सिविल सर्वेंट्स वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल हैं। हम जब भी जाते हैं किसी स्टाफ कॉलेज में तो वहाँ बड़े बड़े जो रिटायर्ड लोग आते हैं वो बड़ी बड़ी फिलॉसफी बोलते हैं। एक दिन हमने उनसे क्वेश्चन कर लिया कि जब आप हेल्म ऑफ अफेयर थे तो आपने ये मसले क्यों हल नहीं किए। बोला बस वो उस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो हम भी इसी तरीके से कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर है तो हम सब हैं, और अगर अल्लाह कोई डिफॉल्ट में जाता है तो मतलब क्या मैं अब आपसे दिल की बात करूं कि एक हमारी मेजर पॉपुलर पार्टी कह रही है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट में जाना चाहिए। ओ भाई, पाकिस्तान से तो दुश्मनी नहीं है, आपकी दुश्मनी किसी पॉलिटिकल एंटिटी से हो सकती है, किसी और चीज से हो सकती है, लेकिन आप आईएमएफ को कह रहे हैं कि जी इनको नहीं दो लोन और उधर मुजाहरे कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ी, पहले पॉलिटिकल विल हो, पॉलिटिकल पोलराइजेशन और हीट को कम करें, उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी इंशाल्लाह खुद एक्टिवेट हो जाएगी। थैंक यू। Thank you, Asaf, and thank you all the panelists for very valuable inputs. We'll have a 10-minute tea break और उसके बाद हम exactly 10 minutes के बाद दोबारा टी ब्रेक है, लंच ब्रेक, टी ब्रेक। Tea will be served on the tables. We're just beginning with the next session because आप session announce कर दें। So we are about to begin our second session. Anybody just want to, if anybody want to take tea, they can take and come back to their chairs. The session 2 is titled as Income Tax, Sales Tax, and Federal Excise Duty, Optimizing Taxes for Growth.
Well, thank you very much again for your patience and patient listening. The second session is titled as Income Tax, Sales Tax, and Federal Excise Duty, Optimizing Taxes for Growth. The second session will also be moderated by Dr. Hamid Atiq Sarwar. We have with us a very distinguished panel. First, we have Syed Shabar Zaidi, who is the former chairman of Federal Board of Revenue. Sir, may I request you to please come on the stage? Dr. Shabar Zaidi. So please, can we have silence in the room so that we can begin the next session, please? We are already 20 minutes above time. Excuse me, camera team, can you do the sessions outside the room? We have with us Mr. Sharik Vohra. He's the ex-president of Karachi Chamber of Commerce and Industries. We are expected to be joined by Mr. Fazal Ilahi Memon, who's ex-chief LTO Karachi. Mr. Khalid Mahmood from KPMG. We will also be joined online by Mr. Ali Faisal, who is the head of economic affairs and tax at Jazz. Dr. Hamid Atiq sir, please. थैंक यू वेरी मच जी। मेरे ख्याल में मसरूफियत लोगों की अभी फैजला मेमन साहब ने आना है, बट ही इज ऑन हिज वे। But since we are short of time, but we'll thank the panelists online as well as sitting over here. This seminar is all about suggesting government चूंकि अभी आई है तो उससे हम ये बताना चाह रहे हैं कि जी क्या चीज़ें हैं जो कि उन्हें इस बजट में करनी है। वी नो कि पाकिस्तान में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, वी नो कि हालात अच्छे नहीं हैं, एंड वी कैन डिस्कस होल डे कि क्या क्या खराबियां बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। बट विद दिस पॉजिटिव इंटेंट कि यार गवर्नमेंट अगर हमें आज ये मौका मिल जाए कि कुछ करना है तो इस जून में क्या करना चाहिए। तो दिस इज द इंटेंट ऑफ दिस सेशन। बट नेवरदलेस विल लाइक टू एनालाइज, हमारे एक्सपर्ट्स जो इस वक्त बैठे हुए हैं यहाँ, उनसे हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि इश्यूज क्या हैं और कैसे हैं और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। बट विद अ पॉजिटिव इंटेंट, एनालिसिस भी चाहिए और उसके बाद रिकमेंडेशन भी चाहिए। So we are happy to have our esteemed panelists over here. So I'll start the discussion with Vohra Saab, who is ex-president Karachi Chamber of Commerce. अब हम अगर मैं आपको नंबर शेयर करूं तो जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अभी छपी है, इट सेज, आई रिक्वेस्ट कादर मेमन साहब आप भी अगर पैनल को ज्वाइन कर लें, इतनी अच्छी आपके पास अगर प्रॉब्लम नहीं है तो देख लीजिए। सो इस वक्त भूटान से भी हमारे नंबर जो हैं वो नीचे गिर गए हैं। सो वील बी कलेक्टिंग टैक्स जीडीपी रेशो के हिसाब से अब भूटान भी हमसे आगे निकल गया है। इवन कंबोडिया इज हायर देन दिस, नॉट टॉक ऑफ वियतनाम के वो इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है। अफ्रीकन कंट्रीज में एवरेज इस वक्त जो है वो 16.1% की आ रही है। एशियन कंट्रीज में 19.1% की टैक्स जीडीपी रेशो आ रही है। ऑल दो बंगाली साहब ने पहले सेशन में ये कहा और सही कहा कि हम एक गरीब मुल्क हैं और शायद हम इतने पैसे हमारे पास हैं ही नहीं कि हम टैक्सों में कंट्रीब्यूट कर सकें। बट दिस प्रॉब्लम स्टिल इज
कि इस दफा का खर्चा जो ओरिजिनली हमने सोचा था कि 14.5 ट्रिलियन होगा और जो अब 16.5 ट्रिलियन को टच करने लगा है, ओरिजिनली इसमें डेट सर्विसिंग 9.5 ट्रिलियन हमने क्लॉक की थी, तो वो अब कोई 10.5 और 11 ट्रिलियन के करीब जून में चली जाएगी, अगर गिवन के पॉलिसी रेट यही रहता है तो। सो वी आर इन अ रियल प्रॉब्लम कि फेडरल गवर्नमेंट तो पहले दिन से बैंकरप्ट होती है। So without revenue mobilization, it seems that it is impossible to correct the situation. But nevertheless, वोरा साहब से हम ये पूछेंगे कि हम क्यों ये आज 1992 उठाएंगे तो 13-14% की टैक्स रेट और आज उठाएंगे तो 10% का टैक्स जीडीपी रेट, कि क्या है पाकिस्तान में कि बाकी सारी दुनिया बदल सकती है, पाकिस्तान नहीं बदलता, 30 साल 40 साल से नहीं बदला। तो आप चूंकि चेंबर में भी रहे हैं, हम तो हमें कुछ बताइए कि क्या इशू क्या है पाकिस्तान की इस टैक्स टू जीडीपी रेशियो के साथ। First of all, my whatever contribution I would made for this forum is coming out of my experience as industrialist and of course, when I represented Pakistan's largest chamber and had that view from diversified industrialists and traders and associations, small traders, and good things of the economy, bad things of the economy, sitting at the both sides. So my point is कि पाकिस्तान का जो issue है वो मेरा जो 8-10 साल का नवासा है उसको भी पता है। तो उस पर वक्त जाया करना कि पाकिस्तान का क्या इशू, इंस्टेबिलिटी का, ट्रस्ट गवर्नमेंट पर, कॉन्फिडेंस लोगों का, पॉलिटिकल एवरीथिंग, मैं समझता हूँ हम सब लोग जो हैं वो खासे अरस्तू हो चुके हैं। वी आर क्वाइट केपेबल ऑफ टॉकिंग फॉर आवर्स एंड आवर्स ऑन दिस सब्जेक्ट, बट द पॉइंट इज हाउ टू मूव फॉरवर्ड, करना क्या है, सोल्यूशन क्या है, दैट इज द मैं समझता हूँ कि हमको अपना तमाम वक्त जो है फोरम्स पे जब हम डिस्कशन करें, वी शुड ट्राई टू educate ourselves with the options and solutions available and हम अपना इनपुट दें गवर्नमेंट को कि क्या हो सकता है। सबसे पहले तो ये है कि आपने जैसे कहा कि 2012-13 में हमारा जीडीपी टू टैक्स रेशियो वाज 13%, नाउ वी आर प्रोबेबली 8%। 293 में था, 12-13 में तो गिर के 8 पे चला गया था, अब फिर हम एफबीआर की 8.5 होनी है और 10.5 हम टोटल 10.5 हम हो गए हैं। और देखिए, जिस मुल्क में आप ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को और डिसऑनेस्ट ट्रेडर को एक जैसा ट्रीटमेंट देंगे, वहां पर तो जीडीपी रेशियो 0% होना चाहिए। इन अ कंट्री वेयर यू ट्रीट द फाइलर एंड द नॉन फाइलर टुगेदर, बल्कि वो इंसेंटिवाइज है नॉन फाइलर लाइफ को एंजॉय करने में, अपने बच्चों की देखभाल करने में, अपने हेल्थ केयर में, अपनी हाउसिंग में। तो मैं एज अ टैक्स पेयर अगर मुझे मेरे लिए पनिशमेंट है तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क में या किसी भी ऐसे मुआशरे में जहां पर आप एक क्रिमिनल को और एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर को जिसने अपनी जिंदगी इस मुल्क के लिए दी, जिसने अपने बच्चे यहाँ इन्वेस्ट किए, और एक ऐसे ट्रेडर को, ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को जो कि नॉन फाइलर के नाम पर सारे काम करता है लेकिन कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो टैक्स मोबिलाइजेशन का कोई भी एफर्ट कामयाब नहीं हो सकता। मेरा एक ये पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज के इन अ कंट्री वेयर बिकमिंग रिच इज ऑल्सो क्रिमिनल, जो बड़ा ग्रुप कोई बनता है उसको कहते हैं ये चोर है, इसने 2 नंबरी की है। इंडिया में देर आर प्रोबेबली हंड्रेड्स ऑफ बिलियनर्स इन डॉलर टर्म्स। हमारे यहाँ कोई हो जाए तो बोले ये तो फिर ये नवाज शरीफ का आदमी, ये जरदारी का आदमी। तो जिस मुल्क में आप
इतना मलाइन करेंगे ट्रेडर्स को, इतना मलाइन करेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट को, वहां पर इंडस्ट्री लगाना सोसाइटी में मॉरली इंस्पिरेशन का सोर्स नहीं होगा, बल्कि लोग अपना कैपिटल दूसरे मुल्क लेकर जाएंगे। अब हमारे यहाँ जो कल्चर है सोसाइटी में, वो मॉरल्स या एम्बैरेसमेंट फॉर समवन हु इज नॉट पेइंग टैक्सेस, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मेरे घर के बराबर में आईजी रहता है, उसके पास 16 गाड़ियां हैं, तो मैं तो कभी उसको जाके ये नहीं कहता कि सर आपकी 4 लाख तनख्वाह है, 16 गाड़ियों का तो पेट्रोल नहीं आता 4 लाख में। बल्कि मेरी वाइफ रोज कहती है कि मेरा इनसे इंट्रोडक्शन करा दो, मेरी कमेटी डलवा दो इसकी वाइफ के साथ। तो हम जिस मुआशरे में क्रिमिनल्स को अपने सिर का ताज बनाते हैं, हमारे लिए कोई हेट्रेड नहीं है, हम मुसलमान हैं, हम एक मॉरली बड़े हाई स्टैंडर्ड्स में अपने आप को देखते हैं, लेकिन अगर हम इस क्राइम को क्राइम नहीं समझते, तो मैं समझता हूं एज अ सोसाइटी वी आर नॉट फ्रेंडली टू एनी सॉर्ट ऑफ टैक्स एनहांसमेंट, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स, व्हाटएवर यू से। वी नीड टू एजुकेट and fix the problem. For example, मैं टैक्स देता हूं और कोई 8-9 ट्रिलियन टैक्स जमा करके गवर्नमेंट को देता हूं, मैं देता हूं, इंडस्ट्री देती है, एफबीआर कुछ नहीं करता, इसलिए कि 67% तो आप मेरे से कस्टम स्टेज पे ही मेरी गर्दन पकड़ लेते हैं, क्योंकि मैं रजिस्टर हो चुका हूं एज ट्रेडर। फिर आप मुझे कहते हैं कि जो जिन लोगों से मैं खरीद रहा हूँ चीजें, विदहोल्डिंग टैक्स की स्टेटमेंट वो भी जमा करो, तो मैं गवर्नमेंट का एजेंट भी हूं, और अगर मैं स्टेटमेंट विदहोल्डिंग टैक्स का इन टाइम फाइल नहीं करता, तो आप मुझे कहते हैं कि जी आप के लिए पनिशमेंट है। इतना ओवर रेगुलेटेड इकोनॉमी में आप कभी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स नहीं कर सकते। Broadening of tax, mobilization of tax, new streams of taxation will only come when the economy is liberated from all these things. Pakistan में, in my view, federal government का जो taxation system है, वो collapse कर चुका है। पाकिस्तान में provinces का जो taxation system है, वो success story की तरफ जा रहा है, चाहे वो सिंध है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो टू सम एक्सटेंट केपी के है। आप ये देखें कि सिंध ने जो नंबर्स, एसआरबी के भी यहाँ साहब बैठे थे, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया, अभी बात हुई कि हमारे म्यूनिसिपल टैक्सेस की जो निगलेक्ट है, एक बहुत बड़ा सेगमेंट, उसको हमको देखना होगा। एग्रीकल्चरल टैक्स को इनकम टैक्स से कैसे देखना है, रिटेलर्स को कैसे आपने पकड़ना है, होलसेलर्स को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को। देखें, जब इकोनॉमी एक्सपैंड नहीं हो रही तो आप टैक्स कहां से लाएंगे? एक ऐसे मुल्क में जहां आप हर रोज सुबह एक एसआरओ निकालते हैं जिसके जरिए इकोनॉमी श्रिंक हो जाती है, छोटी हो जाती है, उस दरिया को जहां आपने पानी का उसका इनफ्लो रोका हुआ है, वहां नया पानी नहीं आ सकता, उसमें से आप नई नहरें, नए आबशार नहीं निकाल सकते। Our focus for the political leadership, but of course for our establishment, is कि आप avenues of trade industry को liberate करें, let people work। अभी वो वासिर मेमन साहब बता रहे थे कि वो A to Z आपके फॉर्म्स हो गए, तो ये सब ऐसी चीजें हैं कि वो किसी से छुपी भी नहीं है। As I represent Karachi Chamber and the industrial side of this country, जिस मुल्क में आपके बैंक्स 400 बिलियन रुपीस कमाते हों और उस मुल्क में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही हो, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम हर फोरम पे जहां हम कहते हैं बैंक्स आर डूइंग ग्रेट, बैंक्स आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ एवरी पुअर पाकिस्तानी दीज बैंक्स आर मेकिंग मनी, and we are very happy because they are giving dividends. We are getting dividends. How many people are getting dividends out of
dividends from the banks, a few hundred people. So my point is, to sum up, sir, is इस मुल्क को आजाद करें, ओवर रेगुलेशन से, कस्टम ड्यूटी से, रेगुलेटरी ड्यूटी से, चंद लोगों को एसआरओज दे के पूरे एक्सपोर्ट सेक्टर को आप इनकम्पैटिटिव कर रहे हैं। अभी जुनेजो साहब बैठे थे, वो कह रहे थे कि जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं, इन द लास्ट गवर्नमेंट, जो हमारे कॉमर्स के मिनिस्टर थे रजाक दाऊद साहब, तो मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, इफ आई हैव पावर आई विल क्लोज डाउन ऑल दीज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, क्योंकि ये लंडा बाजार है। जाहिर है लोग वहां से सेकेंड हैंड क्लोथिंग मंगा के और उसका जो हशर कर रहे हैं, और रिसर्च मौजूद है, हमको पता है कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, करेक्टिव मेजर्स करने वाला कोई नहीं। थैंक यू वोरा साहब। सो वोरा साहब की बात से ये पता लगा कि टैक्सेस की जो कमी है वो तो है, बट ऑल्सो द वे इन विच वी आर लिविंग एंड कलेक्टिंग टैक्सेस क्रिएट्स एन एंटी बिजनेस बायस, एंटी ट्रेड बायस, और उसको भी किसी हद तक देखने की जरूरत है। I'll go now to खालिद महमूद साहब, तासीर आदि से हैं ये, और उनसे सॉरी KPMG से हैं, और I'd like to ask him specific question about कि जी इसमें जो टैक्सेशन में एक तो जो गलत टैक्सेस जिसका वोरा साहब ने बता दिया, विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं बहुत सारे, उनकी इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है, सो दे आर डिस्टॉर्टिव एंड अदर सॉर्ट ऑफ टैक्सेस जो कि हमें नहीं लेने चाहिए। जैसे रेट इंक्रीज हमने प्रॉब्ली किया तो वो अब इतने हाई रेट पे हम कॉर्पोरेट को ले गए हैं कि हो सकता है कि यहाँ से लोग बिजनेस शिफ्ट कर दें। सो वो प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन पॉलिसी के अंदर आपको कोई गैप्स नज़र आते हैं विच वी वुड लाइक टू सजेस्ट। फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि रियल एस्टेट टैक्स नहीं हो रही, होलसेल रिटेल ट्रेड टैक्स नहीं हो रहा, पेंशन्स को टैक्स करना चाहिए, नॉन प्रॉफिट के बिजनेस इनकम को टैक्स करना चाहिए। इस तरह की कुछ चीज़ें आप देखते हैं जो गवर्नमेंट इस साल बजट में कुछ लाने की कोशिश करे टैक्स बेस को ब्रॉडन करने? थैंक यू सर। अच्छा, इस वक्त मैं इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहूँगा कि हम हमेशा से ये कहते चले आ रहे हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, और वो नाजुक दौर हमारा आज तक कंप्लीट हो ही के नहीं दे रहा है। हम उस टर्न के ऊपर ही हैं, वहाँ से निकल नहीं पा रहे। हर साल हम अपनी पॉलिसीज को फॉर द टाइम बीइंग फॉर 1 ईयर अपनी पॉलिसीज को चेंज करते हैं और उसकी बेसिस पे क्विक टैक्सेस कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कभी भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की तरफ हम गए ही नहीं। हमने वो स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हमें चाहिए हैं फॉर द पर्पसेस कि हम अपनी पूरी इकोनॉमी को फ्लरिश करें, उसके ऊपर फोकस ही नहीं है हमारा। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं कि आपकी शॉर्ट टर्म की पॉलिसी जो है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के साथ एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी का फुकदान जो है उसको जब तक आप रेज नहीं करेंगे उस वक्त तक आप उससे बाहर नहीं आ सकते। टैक्सेशन यकीनन आप देखें हमारे पास एक मॉडल है, जिस तरह बताया है मेरे फ्रेंड ने, ये कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ ये इम्प्रेशन, वाकई मैं इसको एंडोर्स करूंगा, ये इम्प्रेशन लिया जाता है कि कोई अर्न कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो वो अर्निंग प्रॉफिट इज अ सिन। ये सबसे बड़ी चीज है। अगर आप इकोनॉमिक रिवाइवल चाहते हैं तो लेट देम डू देयर बिजनेस। वेन एवर देयर इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बाकी सारे पेरिफेरल्स आपके ऑटोमेटिकली मीट होना शुरू हो जाएंगे। स्टेट शेयर होल्डर होती है टू शेयर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेसमैन। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो टैक्स की लॉज के अंदर सर्टन डिस्टॉर्शन इस तरह की क्रिएट कर दी गई हैं कि अब देखें, अगर कोई अर्न कर रहा है प्रॉफिट तो प्रॉफिट में से शेयर करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप टैक्स लॉज को अमेंड इस बेसिस पे कर रहे हैं, इवन इफ यू आर मेकिंग लॉस यू हैव टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्सेस, मिनिमम टैक्सेस की सूरत है। मिनिमम टैक्सेस के अंदर फिर एक इंटरप्रिटेशन इस तरह की भी आई कि आप मिनिमम टैक्सेस पे करेंगे मैंडेटोरली इन द केसेस ऑफ लॉस, बट इफ देयर इज अ लॉस यू कैन नॉट एडजस्ट इट नेक्स्ट ईयर्स। ये बाद में इसको अमेंड करके इसको फिक्स करने की कोशिश करनी पड़ी। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या बिजनेसमैन जो आपके पास एक टैक्स नेट के अंदर आ गया है उसको लॉसेस के फॉर्म में भी आपके पास कंट्रीब्यूट करना है। लेट देम प्ले, लेट देम इंक्रीज देयर प्रॉफिटेबिलिटी और उसके बाद उसके अंदर से शेयर कीजिए।
बाय ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो आपके साथ बड़ा हैप्पीली उसके साथ देगा। जहां तक इसको फिक्स के अंदर मैं इसको अंडरस्टैंड करता हूँ, सिर्फ दो चीजें हैं, एक मेल सिंप्लीफिकेशन एंड दूसरी है ट्रांसपेरेंसी। सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज हो सकता है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेसेस हो सकता है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ ये रेगुलराइजेशन, जितने भी रेगुलेटर्स हैं उनके प्रोसेसेस को आप सिंप्लीफाई कीजिए। सारे रेगुलेटर्स मिलके एक ही केक में से शेयर ले रहे हैं, क्या हम इकट्ठे बैठ के उसकी शेयरिंग को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते? दूसरी है ट्रांसपेरेंसी। टैक्स पेयर ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहे हैं, जिस तरह की मैंने अभी आपको ये टैक्स का कहा गया, इफ इन द केस ऑफ लॉसेस आपको टैक्स पे करने हैं तो वहां पे टैक्स पेयर भी आपके साथ सच बोलना बंद कर देता है। टैक्स रेगुलेटर्स जो हैं वो भी सच नहीं बोलते हैं, और ये ट्रांसपेरेंट ना होना उनकी फेवर में जाता है। इस वक्त टैक्स पेयर जो है वो इसी चीज का रोना रोता है कि रेवेन्यू अथॉरिटीज जो है सारे रेगुलेटर्स उनके पीछे जा रहे होते हैं कि ये मैं टैक्स की कलेक्शन करनी है और मुझे उसकी टैक्स की कलेक्शन में कंट्रीब्यूट करने के लिए अपनी बुक्स को वो फॉल्सिफाई कर रहा है। तो वेयर इज ट्रांसपेरेंसी? मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि इसके अंदर अक्सर कहा जाता है कि डिजिटाइजेशन जो है वो शायद इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं होगा टुवर्ड्स योर इकोनॉमी, लेकिन मैं अंडरस्टैंड करता है कि दिस विल गिव राइज टू ट्रांसपेरेंसी। अगर ये ट्रांसपेरेंसी होगी तो दिस ट्रांसपेरेंसी विल बी नॉट ओनली फॉर द टैक्स पेयर बट ऑल्सो फॉर द रेगुलेटर। वंस समथिंग इज ऑलरेडी ऑन द रिकॉर्ड, उसको ना तो वो डिनाई कर सकता है टैक्स पेयर और ना ही रेगुलेटर आपकी आर्म ट्विस्टिंग कर सकता है। सो ट्रांसपेरेंसी विल बी ऑटोमेटिकली अचीव्ड, और उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन है उस पर टैक्स लीजिए। जहां तक टैक्सेशन की बात है, मैं छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। हम अक्सर कहते हैं कि ये आपके टैक्सेस क्यों कलेक्ट नहीं हो रहे हैं। आपको पता है कि बिलो टैक्सेबल लिमिट की जो इस वक्त आपके टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ के अंदर लिमिट क्या है? 600,000। दैट मीन्स 50,000 पर मंथ। इस वक्त कोई भी ऐसा पर्सन आपको इस वक्त नजर आएगा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और 50% सेव करके घर पे नहीं लेके जा रहा होगा? इज दिस पॉसिबल? नो। सो इट मीन्स everyone who is involved into any kind of economic activity वो taxable income earn कर रहा है। तो उसके ऊपर आप उनको टैक्स नेट पे लेके आने के लिए क्या रेवेन्यू अथॉरिटीज के पास फैसिलिटेशन नहीं है? वहां से हमें आंसर ये होता है कि हमारे पास उसको रेगुलेट करने के लिए उनके पास मसल नहीं है, उनके पास हेल्प अवेलेबल नहीं है ताकि वो लोग उनके पीछे जा सकें। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये डिजिटाइजेशन कैन प्ले ए वाइटल रोल अगेंस्ट दिस। हमें मैक्सिमम और नंबर नहीं चाहिए हैं जो कि एम्प्लॉयज के फॉर्म में, और हम डिजिटाइजेशन के थ्रू इसको अचीव कर सकते हैं। थैंक यू जी। बड़ी अच्छा पॉइंट बताया कि डिजिटाइजेशन माइट बी द सोल्यूशन, बट अगेन डिजिटाइजेशन जो है वो एफबीआर ने सबसे पहले 1982 में स्टार्ट की थी, 96 में प्राल बनाई थी। सो इट्स द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन। ये बैंक्स वगैरह इनसे बहुत बाद आके और एक साल के अंदर अंदर अपनी चीज़ें ठीक कर गए, बट अगर इफ नॉट डन इन द राइट वे इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। सो विद दिस कैवियट आई गो टू अली फैसल फ्रॉम जैज ऑनलाइन जो हमारे पास हैं। We know that large businesses are in trouble because of high rate of taxation, but this is because of the fact कि गवर्नमेंट बाकी जगहों से टैक्स इकट्ठा नहीं कर पा रही। तो एक तो हमें ये बताइए कि आप लोगों के क्या इश्यूज हैं लार्ज बिजनेसेस के, प्लस हमें ये भी बताइए कि अगर आपसे टैक्स ना लिया जाए तो फिर गवर्नमेंट किधर से टैक्स वसूल करे। जी अली फैसल, आर यू ऑनलाइन? जी थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं टेलीकॉम के टैक्सेस का आपको जो हम पे अप्लाई होते हैं, फिर मैं आपके सवालात के जवाब भी दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोग फेमिलियर होंगे, जो भी मोबाइल फोन यूज करता है वो हमसे गिला करते हैं कि जी हम 100 रुपए का कार्ड डालते हैं, उसमें से 60 रुपए हमें मिलते हैं। वो तकरीबन 39 या 38 रुपीज जो है जो कटते हैं वो सारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जाते हैं और फिर फर्दर प्रोविंसेस को डिवॉल्व हो जाते हैं। इसमें दो टैक्सेस हैं हमारे ऊपर, एक एडवांस इनकम टैक्स की फॉर्म में है, विदहोल्डिंग टैक्स जिसे कहते हैं, पहले भी डिस्कस हुआ है अभी, एंड द अदर टैक्स इज सेल्स टैक्स। पहले आई स्पीक अबाउट द एडवांस इनकम टैक्स। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा टैक्स है जो अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई हो रहा है तमाम यूजर्स पे।
irrespective of their ability to adjust that against their income, or whether they even fall in the ambit of paying taxes. जो लो इनकम आपकी पॉपुलेशन है वो भी इसको पे कर रही है, बट वो कभी इसको रिडीम नहीं कर सकती। तो ये 8% होने का प्रपोजल था 2021 के बजट में, वो फिर बजाय कम होने के वो 10% से वापस ऊपर चला गया 15 पे। 12.5 से 10 हुआ, 10 से 8 होना था, वो ऊपर चला गया। ये इसमें एक और इशू है जिसपे मैं आता हूँ कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी की, पहले वाले ग्रुप में शायद ये बात हो रही थी, दैट व्हेन वी मेक पॉलिसीज दे शुड बी लॉन्ग टर्म। ये नहीं हो सकता कि एक दिन आप एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्वेस्ट करें, एंड द नेक्स्ट 6 months down the lane, 1 year down the lane, that entire regime or policy changes. उससे हमारे जैसे सेक्टर्स को, तमाम बड़े बिजनेसेस को ये इम्पैक्ट होता है कि जब उन्होंने एक प्लानिंग या फिजिबिलिटी बनाई होती है वो कंप्लीटली आउट हो जाती है। अभी मैं बाकी इश्यूज पे नहीं आ रहा, सिर्फ हम टैक्स की बात कर रहे हैं। अगर ये टैक्स वो है जो कंज्यूमर पे जा रहा है डायरेक्टली, वी बिलीव कि अगर इस टैक्स को कम किया जाएगा या खत्म किया जाएगा तो यूजेज बढ़ेगी। अनफॉर्चुनेटली आवर एंटायर फोकस इज, जो पहले भी बात की, कि जो टैक्स पे कर रहा है या जहां से हम ले सकते हैं टैक्स, हम उसी से फर्दर स्क्वीज करते रहें। वोरा साहब ने भी बात की, उससे पहले भी ये बात की हुई कि जो अच्छे टैक्स पेयर हैं उनको स्क्वीज करो, बजाय इसके कि टैक्स नेट बढ़ाया जाए और जो ज्यादा लोगों को उसमें लाया जाए और डिस्ट्रीब्यूट इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अगर आपकी यूजेज बढ़ती है, उस इंक्रीज यूजेज से रेवेन्यू गवर्नमेंट का फिर भी बढ़ेगा। पाई का साइज है ना, आप पाई का साइज बड़ा कर दें बजाय इसके कि पाई की स्लाइस बड़ी कर दें अपनी। सेकेंडली आई विल कम टू सेल्स टैक्स। हमारे पे हाईएस्ट सेल्स टैक्स अप्लाई होता है इन पाकिस्तान। अंडरस्टूड इट इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। अभी सेल्स टैक्स हार्मोनाइजेशन की भी बात चल रही है, आई एम श्योर सारे पैनलिस्ट इससे अवेयर होंगे। ये पिछले कोई 3-4 साल से ये डिबेट और इस पे वर्क किया जा रहा है कि अक्रॉस द प्रोविंसेस एक इक्वल टैक्स होना चाहिए एंड इट शुड बी एट द सेम लेवल एंड अ लोअर लेवल। हम 19.5% टैक्स देते हैं, जबकि ऑन एवरेज 16-13 कुछ केसेस में इस तरह टैक्स है, सेल्स टैक्स। माना कि ये हम पे नहीं कर रहे हैं, हम कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा कंज्यूमर तो इससे इफेक्ट हो रहा है। इंस्टेड ऑफ दोज 38 रुपीज बीइंग गिवन टू द गवर्नमेंट, अगर वो हमारा यूजर उसको यूज करके ज्यादा यूजेज करेगा और उसी मजीद वैल्यू ऐड करेगा, मजीद गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। इस वक्त टेलीकॉम इज नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज, इस वक्त हम बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारा डेटा और इंटरनेट में। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज यूज ऑफ इंटरनेट और उसकी प्रोलिफरेशन के लिए, इट इज इम्पेरेटिव कि आप इनकरेज करें कि यूजर्स जो हैं वो सस्ता इंटरनेट, सस्ती फैसिलिटीज यूज कर सकें। इफ वी कीप इंक्रीजिंग द टैक्सेस ऑन दीज, द इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी कि आपकी यूजेज कम होगी। हम डिजिटल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, आप जनरली डिजिटल पाकिस्तान की बात हो रही है। इस सब को इनकरेज करने के लिए और इसमें इसको कैटलिस्ट के तौर पे ऐड करने के लिए, एक्सपेडाइट करने को कि वो डिस्करेज हो यूज करने से। अब आपके जो सवाल था ना सर कि हाउ आर बिग बिजनेसेस अफेक्टेड, businesses big or small are affected mainly by similar things. First of all, inconsistent policies is a major issue. आपकी गवर्नमेंट चेंज हो ना हो, विद इन द गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाती है, जो मैंने अभी टैक्स का एग्जांपल दिया। इसके अलावा आपके इंसेंटिव्स हैं बिजनेस लिए, ठीक है, वी आर सर्विस सेक्टर, हम मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस एज सच कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हमारे ऊपर हमें इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया गया, टेलीकॉम सेक्टर को हमें इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दिया गया, हमने इंडस्ट्रियल टैरिफ के लिए अप्लाई किया, हमें इंडस्ट्रियल टैरिफ नहीं मिला। हम अभी भी महंगी बिजली यूज कर रहे हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट कि द क्वेश्चन इज कि डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री इज 1 2 3, वेयर डू यू फॉल इन दिस? If we have to prove where we fall in this, why, if the government has declared us an industry in 2004, it has been 20 years since we've been trying to convince them कि हम इंडस्ट्री हैं, हमें इंडस्ट्रियल टैरिफ दे दीजिए। This is a very small example. हमारे पे कितना सिग्निफिकेंट इससे फर्क पड़ेगा, but this just shows कि policy and implementation of policy, although being done by the government, are at two separate heads. गवर्नमेंट ने ही डिसाइड किया, गवर्नमेंट का इदारा नहीं मानता। सेकेंडली, जो हमारा एक और, क्योंकि हम टेलीकॉम पे बात कर रहे हैं, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। आवर लाइसेंसिंग फीस आर पेग्ड विद द यूएस डॉलर। जो हमारा लाइसेंस रिन्यू होता है वो डॉलर टर्म्स में होता है।
जब डिवैल्यूएशन होती है उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है जिसका हमारे पास कोई रिकोर्स नहीं है। हम प्राइसिंग अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, हम बहुत ही एक लो प्राइस उस पर ऑपरेट करते हैं। जब हमारी आधे से ज्यादा कॉस्ट जो है वो यूएस डॉलर्स में है, हमारा इक्विपमेंट मोस्टली इंपोर्ट होता है, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं होता। बट जब पॉलिसी इस तरह की होगी कि आपकी इंपोर्ट्स रुक जाएंगी, अभी पहले ये बात भी हुई कि इंपोर्ट्स रुक जाती हैं, हमारा मोस्टली इक्विपमेंट 90% इक्विपमेंट इंपोर्ट होता है। हम कैसे ग्रो करेंगे, हम कैसे सर्विस बेहतर करेंगे? फिर वही वाली बात आ जाती है कि गवर्नमेंट का एक इदारा कहता है क्वालिटी ऑफ सर्विस बेहतर करो, एक्सपैंड करो, सेम टाइम पे दूसरा गवर्नमेंट का इदारा कहता है कि इंपोर्ट्स ना करो, बंद कर दो इंपोर्ट। सो दीज आर थिंग्स दैट पोज चैलेंजेस फॉर अस। Thank you, Ali. These are problems specific to the telecom industry and government should consider it. But असल सवाल तो ये है कि इसको ठीक कैसे करना है, कि या तो ये हम कह दें कि पाकिस्तान को टैक्सों की ज़रूरत नहीं है, उसमें हम जो जितना भी इकट्ठा कर रहे हैं वो कुछ गलत तरीके से कर रहे हैं। पहली बात तो उसको सही करना है, लेकिन स्टिल वी नीड मोर टैक्सेस एंड नन बेटर देन शबर जैदी साहब। ऑल्दो लोग उनका चेयरमैन और ही वाज माय चेयरमैन FBR के, लेकिन वो खुद भी कहते हैं कि मेरी बाकी ज़िंदगी जो इतनी लंबी है वो तो सारी इकोनॉमिक्स को और अकाउंटिंग को पढ़ाते और पढ़ते गुजरी है। सो आई विल रिक्वेस्ट हिम टू प्लीज एजुकेट अस कि अब करना क्या है, इस गवर्नमेंट को इस जून में क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि FBR एक इदारा है गवर्नमेंट का जो नहीं चल रहा। तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में कौन सा इदारा चल रहा है? फौज चल रही है, पुलिस चल रही है, अदलिया चल रही है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। तो हम ये क्यों एज्यूम करते हैं कि जो 23,000 FBR में लोग हैं वो चलेंगे? तो पहली तो आपकी प्रेमाइज गलत है कि आपके यहाँ FBR टैक्स कलेक्ट करे, वो अच्छा करे, वो एफिशिएंट हो जाए, वो ईमानदार हो जाए, वो फरिश्ते हो जाएं। तो ये प्रेमाइज ही गलत है, क्योंकि आपके यहाँ कोई, मुझे एक इदारा बताया ना, मैं तो बड़ी बात कर रहा हूँ, खुल के बात कर रहा हूँ। फौज का इदारा सही चल रहा है क्या? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सही चल रही है? अदलिया चल रही है क्या? पुलिस चल रही है? किसी इदारे को आप सारे बैठे हैं ये यहाँ कह सकते हैं कि चल रही है? तो पहले तो ये डिसाइड करें कि ये सोसाइटी क्लैप्स हो चुकी है, और इस सोसाइटी में जो स्पेशली जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो अब किसी भी आने वाली दुनिया का जो गवर्निंग स्ट्रक्चर होता है उसके साथ कंपैटिबल नहीं है। तो ये नहीं चल सकता। दूसरी बात, यहाँ मैं जब बैठा हुआ था वहां पे, तो यहाँ पे वासिफ अहमद साहब एक बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बात कर रहे थे, मगर मुझे इस तरह की बातें सुन के अब इरिटेशन होती है, क्योंकि मैंने इस चीज पे इतना वक्त जाया किया है। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो पाकिस्तान के फाउंडिंग मेंबर्स में से थे, और मेरी फैमिली के 148 आदमी पार्टीशन में मर्डर हुए थे। मगर जो उन्होंने जुमला कहा ना कि पाकिस्तान है तो हम हैं, ये चीजें हम कहने की जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान नहीं है फिर भी हम हैं, ये मैंने बहुत बड़ी बात कही है। ये जुमला पाकिस्तान है तो हम हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये कराची शहर भी रहेगा, लाहौर भी रहेगा। ये जो आपने एक इल्यूजनरी, एक जज्बाती गुफ्तगू करते थे, पाकिस्तान है तो हम हैं, ये सब चीजें लोगों को लाल बत्ती दिखाने के लिए होती है, लोगों को चरिया बनाने के लिए होती है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, इस्लाम की बका है, इसकी सालमती है। ये सब बकवास, ये जो आपने शुरू की हुई है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, उनकी तवज्जो असली मसाइल से दूर करने के लिए। हामिद अतीक यहाँ बैठा हुआ है, हामिद अतीक और मैं वो आदमी हैं जिसने फाइलर का शेड्यूल निकाल के 11वीं शेड्यूल में डाला था। मैं हामिद को बार बार कहता था इसका नाम करो चोर। ये बैठा हुआ, मैं से कहता था इस नॉन फाइलर को लिखो चोर, थीफ। और जिस आदमी ने ये नॉन फाइलर का वर्ड इजाद किया है उसको लक्ष्मी चौक पे फांसी लगाओ, याद है आपको? और ये जो हंस रहे हैं वोरा साहब, इनकी पार्टी के लोग थे वो, ठीक है? हंस रहे हैं बड़े खुशी से, ये बातें करते फिर आप बात करते हैं। इनकी पार्टी के लोग थे जिन्होंने कराया था कि नॉन फाइलर। मैंने, हामिद मेरे साथ बैठा है, मेंबर था मेरा, मैंने कहा यार हामिद, जिस इस ऑर्डिनेंस में जहां भी नॉन फाइलर लिखा है इसके आगे लिख दो थीफ, चोर। एक आदमी जिसको टैक्स देना है और नहीं दे रहा वो चोर ही है ना, और क्या है? हमने उसका नया टर्म इजाद कर दिया, नॉन फाइलर।
ठीक है, और मैंने और हामिद ने बिठा के उसको निकाल के फिर 11 शेड्यूल बनाया और फिर हमने कोशिश की, मगर फिर ये नॉन फाइलर लाते हैं। इनको मतलब इनका ये शौक है नॉन फाइलर लाने का, हर दफा को वहां के नॉन फाइलर ले आते हैं। तो देखें, पाकिस्तान हमारे बड़ों ने बनाया था। हमारे 148 आदमी मेरी फैमिली के कत्ल हुए हैं। 148 पीपल, माई फैमिली हैज बीन मर्डर्ड व्हेन वी वर पार्टीशन, और हम उसका अभी भी यादगार बनाते हैं। तो अगर पाकिस्तान है, और हमें ये वाली अब चीजें, हमें जज्बाती चीजें ज्यादा मुतासर नहीं करती। हम बिल्कुल सिंपल बात करते हैं कि कराची भी रहेगा, लाहौर भी रहेगा। अगर जोग्राफिकल एंटिटीज काम नहीं कर रही और सिस्टम नहीं चल रहा, तो फिर चीजों को दोबारा सोचना पड़ेगा। ये जज्बातियत, ये गुफ्तगू, बिलावजह की बातें, ये सब चीजें बेकार की बातें। ठीक है, कमिंग बैक टू टैक्सेशन सिस्टम, ये भी मेरा मेंबर मेरे साथ रहा है। मैं जनरली मजहबी आदमी नहीं हूं, मगर मैंने परसों नमाज शुक्राना अदा की कि मैं FBR चेयरमैन छोड़कर आ गया ट्रैक एंड ट्रेस के एग्रीमेंट साइन करने से पहले। अगर मैं आज, हमारे हामिद बैठा है, अगर मैं ट्रैक एंड ट्रेस का एग्रीमेंट मैं साइन करता तो आज मैं जेल में होता। Am I right? आज मैं जेल में होता। वोरा साहब बड़ा हंस रहे हैं, ठीक है ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग, दोनों ने कर देना ये हंस था रहे हैं, अगर ठीक है ना, अदालत ने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पॉलिसी, वो ऐसे ऐसे लोग टैक्स पॉलिसी की बात करते हैं जिन्होंने कभी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ा ही नहीं है। ठीक है ना, हर बंदा पॉलिसी, ये वो अगड़म बगड़म बातें करता रहता है, उसको अलिफ बे भी नहीं आती कि पाकिस्तान में होता क्या है। मैं शुक्र कर रहा हूं कि मैं उस वक्त से पहले, जब ट्रैक एंड ट्रेस का एग्रीमेंट साइन हो गया था, मैं रिजाइन करके आ गया था। अदरवाइज आज मैं 110% जेल में होता। अब आप मुझे ये बताइए, जब वजीर आजम कह रहा है कि ट्रैक एंड ट्रेस फ्रॉड था, ठीक है, हो सकता है फ्रॉड हो, कौन सा चेयरमैन किसी बड़ी चीज पे साइन करेगा, मुझे ये बता दें। कौन सा ब्यूरोक्रेट किसी बड़ी चीज पे साइन करेगा आज, कि जब आप 4 साल के बाद कह रहे हैं कि ये फ्रॉड था। ठीक है, मैं पिछले 4 साल से रो रहा हूं कि ट्रैक एंड ट्रेस को फॉलो करो, ट्रैक एंड ट्रेस को फॉलो करो, ट्रैक एंड ट्रेस को फॉलो करो, ट्रैक एंड ट्रेस को फॉलो करो। और मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूं कि 2022-23 की शुगर के सीजन में मैं एक ऐसे बंदे के साथ बैठा हुआ था जो कि ट्रैक एंड ट्रेस चला रहा था, और वो कंसर्न बड़े आदमी से कह रहा था कि सर इसके यहाँ ट्रैक एंड ट्रेस नहीं चल रहा, उसकी स्टेप में जाली हैं। तो वो कह रहा था सर हमारी सियासी मजबूरी है। किस तरह की बातें कर रहे हैं हम लोग यार, हम किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, मतलब ये क्या क्या बातें कर रहे हैं कि ये होगा तो यूं होगा, तो ये होगा तो यूं करें, ये करें। ये खालिद मेरा दोस्त है, बिल्कुल दीज थिंग्स हैव नो रेलेवेंस। ये बिल्कुल गुफ्तगू है, यहां से उठ के जाएंगे, इसकी कोई, इस बात की कोई जिंदगी में मकसद नहीं है। 75 साल से ये मुल्क फौज चला रही है, बुनियादी पॉलिसी वो डिसाइड करते हैं। क्या फौज का मंशा पाकिस्तान की इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने का है? सवाल मेरा ये है हामिद साहब, बिल्कुल साफ बात कर रहा हूं मैं, ये शायद कोई और पाकिस्तान में नहीं कर सके। वो कहा, कभी बोल रहे थे, मुशर्रफ साहब आए थे, उन्होंने एक सर्वे कराया था, याद होगा आपको सबने, एक सर्वे का फॉर्म आया था, सबके घरों पे गया था। वो सर्वे फॉर्म क्यों नहीं इंप्लीमेंट हुआ? फौज की बात कर रहा हूं मैं, छोटे मोटे आदमी की, ये बेचारे नीचे वाले तो, ये तो ऐसे बेचारे हल्के फुल्के आइटम है, मैं इनकी बात ही कर रहा। ठीक है ना, ये तो बेचारे आज है कल नहीं है, एक ये वाला जेल में हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, वो वाला आएगा, ये जेल में हो जाएगा, ये तो इन बेचारों की कोई हैसियत नहीं है। ठीक है ना, तो क्या पाकिस्तानी आर्मी, जो कि पाकिस्तान का डिसीजन मेकर है, अब उसको आपने SIFC का नाम भी दे दिया है, क्या वो पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन और टैक्सेशन सिस्टम चलाने के लिए तैयार है? अगर है तो बता दें, मैं और हामिद 2 दिन में सीधा कर देंगे। 2 दिन चाहिए हमें, सिर्फ 2 दिन, 2 days। ये बैठा हुआ है मेरे साथ, हमने रियल एस्टेट की वैल्यू ऊपर की, रियल एस्टेट को चेक करने के लिए हमारी जिंदगी अजाब हो गई। हमने रिटेलर पे हाथ डाला, हमने CNIC डाला, हमारी जिंदगी अजाब हो गई। हमने बैंकों को हाथ डाला, वो बैंकर अभी बात कर रहे थे, मैं आज आपको कहता हूं, आज आपको कहता हूं, टैक्स टू GDP रेशो 15% हो जाएगा कल। आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन की डिजिटाइजेशन कर दें, कल 15% हो जाएगा। कल ये टैक्स टू GDP रेशियो 15% हो जाएगा अगर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन डिजिटलाइज कर दें। मैं चेयरमैन FBR था,
वोरा साहब बराबर में बैठे हैं, इनके चेयरमैन सिराज कासिम तेली को मैंने कहा था ये ऐलान कर दें कि कराची में कोई ट्रेडर स्मगल और अफगान ट्रांसफर की गुड नहीं बेचेगा तो मैं तमाम कस्टम ऑफिसर्स को कराची से निकाल लूंगा। उन्होंने कहा नहीं सर ये तो नहीं हो सकता, हम तो बेचेंगे, ये रिकॉर्ड पर है, मैं कोई झूठ नहीं बोला, चाहे आप निकाल के यूट्यूब पे देख लें। तो सर ये कहानी कि वो अफसर कर दें, वो पॉलिसी कर दें, वो आ जाएगा, एफबीआर ने ये कर दिया तो ये फाइलर वाइलर, ये सब बकवास है, इट्स ऑल रबिश। जो पाकिस्तान में टैक्स की सेविंग हो रही है, जो टैक्स नहीं आ रहा, जो 9,700 आ रहा है, ये आना चाहिए 18,000 या 15,000। ये जो 7,500 है, इसमें 85% हिस्सा इनका है, इनका मीन्स ये जो नहीं देते। 15% हिस्सा, 10% हिस्सा अफसर का है जो ये नजर नहीं आ रहा मुझे कोई, जो पहले हामिद था, और 5% हिस्सा मेरा और कादिर का है। ये इसका ब्रेकअप है। जो टैक्स नहीं आ रहा उसकी इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन करें कि इससे फायदा कौन उठा रहा है। ये कोई बेवकूफ तो नहीं है रिश्वत देते हैं, ये 85% रखते हैं तो 10% देते हैं, और 5% हम एडवाइजर रख लेते हैं दरमियान में, ठीक है ना। तो ये इसका खेल है सारा, ठीक है। सवाल अब इसका ये है कि आज से क्या किया जाए। मैंने आपको जिस तरह कहा कि मैं बार बार एक बात, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरी चीजों को फॉलो कर रहे हो, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप इस मुल्क में फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करें और ये बताएं ये मुल्क कोलैप्स हो गया है, जो कि हो गया है। आप इसमें हर आधे घंटे बाद एक प्लास्टर लगा देते हैं, फिर एक प्लास्टर लगा देते हैं, फिर एक प्लास्टर लगा देते हैं, तो आप एक गिरी हुई इमारत के ऊपर एक प्लास्टर लगाते जा रहे हैं। आप इस इमारत को गिरा दें, गिरा के एक छोटे छोटे कमरे बना ले अच्छी क्वालिटी के, कम से कम सर्च पर रहेगा। आप एक बड़े से महल में रह रहे हैं जिसकी सारी बिल्डिंग, सारे पिलर शिलर गिर चुके हैं। अब आप कोशिश ये करते हैं कि हर गवर्नमेंट जो आती है, अब आज आपने 1.1 बिलियन रुपीस का IMF का लोन एग्री किया है, हम खुश हो रहे हैं, मतलब हमें लानत होनी चाहिए हमारे ऊपर कि हम खुश हो रहे हैं कि हमें बेल आउट पैकेज मिल गया। हमारे ऊपर हमारे ऊपर शक्ल पे लानत आनी चाहिए कि हमें बेल आउट पैकेज मिल रहा है। बेल आउट किसको मिलता है? बेल आउट मिलता है मुजरिम को। बेल किसकी होती है? बेल किसकी होती है? जिसके ऊपर केस होता है। बेल आउट पैकेज कहते हैं हम इसको, बेल आउट पैकेज। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि पाकिस्तान का टैक्सेशन का कोई मसला नहीं, कोई पॉलिसी का मसला नहीं है, कोई SRO का मसला नहीं है, किसी का मसला नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जो हमारे करने वाले हैं वो हमारी डिजिटलाइजेशन या डॉक्यूमेंटेशन को रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि वो उनको उनकी प्रायोरिटी में नहीं है, उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। वो आज ये समझ रहे हैं कि हम सऊदी अरब से पैसे लाकर इस कश्ती को चला लेंगे, या SIFC की इन्वेस्टमेंट लाके इस कश्ती को चला लेंगे। हो सकता है कश्ती चल जाए, मगर ये सिर्फ चलेगी फॉरेन करेंसी अकाउंट की कश्ती चलेगी। इससे आपकी जो इंटरनल फिस्कल अकाउंट है ये नहीं चलेगा। फिस्कल अकाउंट की जो पोजीशन आज आपकी है, मेरा ख्याल है हामिद, इफ आई नॉट रॉन्ग, 9,700 कलेक्शन थी लास्ट टाइम। 9,400 हमने करना है इस दफा। नहीं, हाँ 9,400। तो मैं जो मेरी औरंगजेब के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। मैं औरंगजेब को एक बात कही थी मैंने, जब आप प्री बजट कर रहे हैं, मैंने कहा औरंगजेब, पाकिस्तान की सही या गलत होने की सिर्फ एक टेस्ट है इस वक्त। अगर तुम 13,000 पे एग्री कर आ गए तो पाकिस्तान फेल हो जाएगा। अगर तुम 11,500 12,000 पे एग्री करा लो उससे, तो मैं तुम्हें आगे जाकर ये 20 पे कर दूंगा। मगर तुमने अगर 13 पे शुरू हो गए, आके 13 की तुमने फिगर लेकर आ गए, और मुझे मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि वो 13 पे इंसिस्ट कर रहे हैं। यही पोजीशन उस वक्त थी जब मैं और हामिद पहले प्रोग्राम में गए थे, कि वो आपको इतनी बड़ी फिगर दे रहे हैं 9,400 से 13,000। अब 9,400 जब 13,000 की फिगर आएगी, तो जब मैं औरंगजेब जैसे रीजनेबल आदमी के सामने बैठूंगा और कहूंगा सर ये औरंगजेब ये देखो यार ये गलती हो गई है, ये गलती हो गई, ये गलती, वो बेचारा मान जाएगा, फाइल साइड में रख देगा, क्योंकि उसको 13,000 की फिगर के उसके सामने पड़ी है। अब पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान के जो लोग हैं,
पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको औरंगजेब के पीछे खड़ा होना चाहिए कि सर ये फिगर 13,000 नहीं होनी चाहिए, ये 11,500 होनी चाहिए। अगर आपने 11,500 कर दी तो आप 5 साल में 18-19 से पहुंच जाएंगे। अगर आपने आज 13,500 की, मैं आपको गारंटी करता हूं अगले साल गवर्नमेंट फेल हो जाएगी। ये है प्रॉब्लम पाकिस्तान की कि हम IMF की जो टैक्स, और मैं और हामिद उसके जाती गवाह है। जब मेरे टाइम पे मैंने पूछा कि जो मेरी फिगर है उस जमाने 5,500 थी, मैंने कहा ये फिगर तुमने कहां से निकाली है? उसने कहा सर ये बैलेंसिंग फिगर है, याद है आपको? उसने कहा, मैंने कहा यार ये कहां से आई है? उसने कहा सर ये आपकी सारी रेवेन्यू के बाद नेट बैलेंस फिगर, ये आपका टैक्स रेवेन्यू है। तो जब आप रेवेन्यू को रिलेट ही नहीं कर रहे रियलिटी के साथ, तो फिर कैसे चलेगा सिस्टम? अब प्रॉब्लम यह है कि क्यू ब्लॉक में जो बंदे बैठे हैं उन बेचारों को तो ये उनको तो ये सिर्फ ये करना है कि IMF का प्रोग्राम हो गया बस। अब वो ये नहीं देख रहे कि औरंगजेब को 9,400 से 13,000 की फिगर आप दे रहे हैं, 12,000 की फिगर दे रहे हैं, इकोनॉमी आपकी नीचे जा रही है, स्पेस आप लोगों को दे नहीं रहे। तो ये सारा वो फैक्टर है जिसकी वजह से पाकिस्तान बार बार क्लैप्स हो रहा है। तीसरी बात जो ये है वो ये है कि मैं, कादिर साहब, खालिद, हम सारे टेक्निकली जाहिल हैं, हमने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी। अकाउंटेंट हैं, एडवाइजर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमारा क्या नॉलेज है इकोनॉमिक्स का? हमने बड़ी कर्सरी नॉलेज पढ़ी है इकोनॉमिक्स, कहीं पढ़ ली कभी पढ़ ली, ठीक है। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में इतनी यूनिवर्सिटीज हैं, लम्स है, IBA है, कराची यूनिवर्सिटी है, और ये है, कभी आपने किसी पाकिस्तान की इकोनॉमिस्ट की यूनिवर्सिटी से कोई आर्टिकल देखा है पाकिस्तान टैक्स सिस्टम पे? वो क्यों नहीं बैठे होते यहाँ के? इतनी बड़े बड़े नाम हैं, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, कभी आपने पाकिस्तान के किसी इकोनॉमिस्ट को कभी टैक्स के बारे में बात करते देखा है? क्यों यार? हम तो अकाउंटेंट है, हमारा काम तो सिर्फ अकाउंटिंग करना है ना। हम वी आर नॉट अ विजनरी, वी आर नाइदर केपेबल ऑफ डूइंग अकाउंटिंग। ये भी केपेबल नहीं है, मैं भी केपेबल नहीं। हमारा तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है एक्चुअली। मगर जो इकोनॉमिस्ट है, इंडिपेंडेंट है, वो कोई काम ही नहीं करता, वो कोई काम ही नहीं करता, वो बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ। आप उसके बाद जाएंगे, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को IMF की रिपोर्ट से पढ़ता है। वो IMF की रिपोर्ट पढ़ता है कि पाकिस्तान के बारे में IMF क्या कह रहा है, पाकिस्तान के बारे में वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है। ओ भाई, जूड़िया बाजार जाना, आजमगढ़ मार्केट जाके देख हो क्या रहा है, राजा बाजार जाके देख हो क्या रहा है। देखिए ना, दिस ट्रेजेडी इज दिस। लास्टली जो मैं कहना चाहता हूँ, सोल्यूशन अब ये है कि मेरा जो सोल्यूशन है इस पूरे मैकेनिज्म को देखने के बाद, कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट पाकिस्तान में कोई सस्टेनेबल इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बना सकती। अब आप इसका मतलब ये लेंगे कि नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट आए, वो भी कोई सोल्यूशन नहीं है पाकिस्तान में। जिस चीज में जो खालिद भी इनडायरेक्टली बात कर रहा है, जिस चीज ने हमें तबाह कर दिया है, वो ये कर दिया है कि हमारे पास प्लानिंग कमीशन नहीं है। हमें ये नहीं पता कि 2030 में पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन क्या होगा, 2035 में क्या होगा, 2040 में क्या होगा, 2045 में क्या होगा। हम तो शाम को जाके खनानी कालिया में कैश करते हैं डॉलर के साथ। ऐसे दुनिया नहीं चलती। आपको प्लानिंग कमीशन बनाकर पाकिस्तान का 20 साल का प्लान देना पड़ेगा, गलत या सही आपको देना पड़ेगा कि ये 2024 है आज, और 2044 में पाकिस्तान की पोजीशन ये होगी। अगर पाकिस्तान नहीं होगा, वो भी लिख दें, ये भी लिख दें कि सर 2031 में खत्म हो जाएगा, फेयर एनफ। बट देयर कैन नेवर बी इन इकोनॉमिक्स। अब जो आप इस SIFC की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो क्या एक दिन की इन्वेस्टमेंट रिटर्न देख रहा है? वो तो 20 साल रिटर्न दिखेगा ना यार। रिटर्न तो 20 साल की, 25 साल की होती है ना जी। प्रॉब्लम ये है कि आपने तो अब सोल्यूशन जो मैं सोल्यूशन समझता हूं पाकिस्तान का, वो ये है, और वो FBR का सोल्यूशन भी है, वो ये है कि आप एक वेरी एम्पावर्ड डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन लाएं, जिसको फौज की सपोर्ट भी हो, जिसके साथ सिविल की सपोर्ट हो, और वो आदमी गवर्नमेंट के साथ चेंज नहीं हो।
और वो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी 25 साल की 30 साल का गारंटर हो कि भाई ये पॉलिसी है, ये रेट रहेगा, कॉटन पर ये होगा, इस पे ये होगा, उस पे ये होगा। ये ऐसे रोजाना का डे टू डे बेसिस, नहीं सही कह रहा है वोरा साहब कि ये एसआरओ, वो एसआरओ, ये पॉलिसी, हर बजट में बैठे हुए हम लोग तबाही फेर रहे होते हैं सुबह से लेकर शाम तक। ये दिस इज टोटल एंटी बिजनेस, ये एंटी बिजनेस है। आपको मनमोहन सिंह चाहिए, आपको मोंटेक सिंह आलोवालिया चाहिए। मैं आपको बात खत्म करता हूं। मनमोहन सिंह का आपने नाम सुना होगा, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का। इंडिया का एक डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन था, उसका नाम था मोंटेक सिंह आलोवालिया, डॉक्टर मोंटेक सिंह आलोवालिया। उसने 7 गवर्नमेंट गुजारी थी एज अ डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, और चेंज नहीं हुआ था। और वो इंडिया को पूरी ट्रांजिशन लेके गया है, यहां से लेके यहां तक। आप तो जब गवर्नमेंट में आते हैं तो पहला आदमी जो चेंज करते हैं, वो चेंज करते हैं डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, और प्लानिंग कमीशन है ही नहीं इस मुल्क के अंदर। तो भाई ये मुझे बता दो ना कि कारोबार क्या है। तो मसला ये है कि हमारे अंदर अरबी खसलत आ गई है कि ट्रेडिंग करो, शाम को कैश बंद करो और घर चले जाओ। इस तरह से मुल्क नहीं चलते। तो अगर नहीं चलते तो कुछ और डिसाइड कर लेते हैं। मेरे लिए तो मसला नहीं है ना, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे नौकरी दुबई में मिल जाएगी, सिंगापुर में मिल जाएगी, कराची मेरे लिए कोई आखिरी एंड नहीं है, मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है मुझे। मैं तो वो आदमी हूं जिसने अपने दोनों बेटों को, जो फॉरेन क्वालिफाइड है, पाकिस्तान बुला लिया है, और मैं पाकिस्तान का प्रोस्पेक्ट अच्छा देख रहा हूं, अनलाइक अदर्स। क्योंकि मुझे लगता है कि बिल्डिंग गिर के सही हो जाएगी। जब बिल्डिंग हिलने लगती है तो गिर जाती है, जब गिर जाती है तो गिरने के बाद उसके ऊपर चाहे छोटा क्वार्टर बनेगा या शीट की बिल्डिंग बनेगी, एक ऐसी चीज बनेगी जो जरा बेहतर होगी। मगर इस बिल्डिंग को गिराना जरूरी है। जब तक आप इसे गिराएंगे नहीं, ये दोबारा नहीं बनेगी। इसलिए मैं बार बार, जब मैं वहां भी था, हामिद को ये कहता था, अब ये लफ्ज है ना टैक्स रिफॉर्म, ये निकाल दो। ये इतनी दफा इस्तेमाल हो चुका है लफ्ज, इतनी दफा इस्तेमाल हो चुका है कि अब इसकी सेंस खत्म हो गई है। टैक्स रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म। और मैं फिर आखिरी बात बताता हूं कि एफबीआर 23,000 आदमी के साथ नहीं चल सकता। इट इज टू बिग, इट इज टू बिग। ये कर दें। मैंने और हामिद ने मिलके एक दिन फैसला किया कि कस्टम हाउस के अंदर हम एंट्री बंद कर दें क्लियरिंग एजेंट की। एक एसआरओ हमने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया कि कोई क्लियरिंग एजेंट कस्टम हाउस में दाखिल नहीं होगा। 4-5 दिन के बाद हमने पता लगा कि जीडीआर प्रोसेस नहीं हो रही। तो हमने पूछा भाई जीडी क्यों प्रोसेस नहीं हो रही? उसने कहा सर ये तो प्रोसेस तो क्लियरिंग एजेंट का आदमी किया करता था, हमें तो पता ही नहीं कैसे होती है। आप समझ रहे मेरी बात? मैंने एक ऑर्डर इशू किया कि जितने भी बंदे 1 से 17 ग्रेड के हैं उन सबको ट्रांसफर कर दो अपनी सीट से कहीं और सीट पर, जो 3 साल से ऊपर हो चुका है। एक ऑर्डर पास कर दिया। आप इमेजिन करें, उस ऑर्डर के पास करने के बाद कोई 20 दिन के बाद पाकिस्तान में तमाम लोग जो 1 से 17 ग्रेड के, सबकी अम्मा को कैंसर हो गया, वो ट्रांसफर नहीं हो सकता था उनका। सर ये जो हमारे ब्यूरोक्रेसी की जो एकेडमी है ना, जहां पे ये ब्यूरोक्रेसी की क्लासेस होती है, इसको बम से उड़ा देना चाहिए, बम से उड़ा देना चाहिए, बम से। मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं, हामिद भी उस मीटिंग में मौजूद था। मैंने जूनियर ऑफिसर्स ऑफ एफबीआर को बुलाया, वो रेजिस्ट कर रहे थे एफबीआर को पीआरएस बनाने से। मैं पीआरएस बना रहा था, पाकिस्तान रेवेन्यू सर्विस ऑन द लाइन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। एक लड़की थी, वो बड़ी रेजिस्ट कर रही थी। मैंने पूछा, यंग लड़की थी, पहली फर्स्ट बैच पे आई थी, पहला साल था उसका। मैंने पूछा मैडम आपकी तनख्वाह क्या है? उसने शायद बताया 1.5 लाख। तो मैंने कहा मैडम आपको हम 2.5 लाख रुपए देंगे, आपको एक गाड़ी भी देंगे कल्टस। अभी आप किस में आती हो? कहते रिक्शे में। मैंने कहा मैं आपको गाड़ी भी दूंगा कल्टस, और मैं आपको 2.5 लाख तनख्वाह दूंगा, मार्केट वेजेस दूंगा। उसने कहा नहीं मुझे गाड़ी भी नहीं चाहिए, तनख्वाह भी नहीं चाहिए, मुझे 17 ग्रेड का कार्ड चाहिए, क्योंकि जब मेरा रिक्शे वाला चलान करता है तो मैं कार्ड दिखा के मेरी इज्जत होती है। अगर एकेडमी ये माइंडसेट क्रिएट कर रही है तो उस एकेडमी को बम छोड़ा देना चाहिए। वो कहती है मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, तनख्वाह भी नहीं चाहिए, मुझे 17 ग्रेड की पावर चाहिए।
जो मेरे कार्ड पे लगी होती है, मैं 17 ग्रेड की इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है वो बहुत आसान है, मगर हम ये रियलाइज करें कि इस्लामाबाद नहीं चल पा रहा है अनफॉर्चुनेटली, और इस्लामाबाद को आपको डिमोलिश करना पड़ेगा सिस्टमेटिकली। और उसका सबसे बड़ा, मैं लाइटर नोट में खत्म कर देता हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सिंध हाई कोर्ट दोनों के फ्रंट डोर बंद है, पता है आपको? सुप्रीम कोर्ट का जो मेन डोर है वो कभी खुला ही नहीं आज तक, और सिंध हाई कोर्ट का भी आजकल जो जाते हैं आप, तो फ्रंट डोर से नहीं जाते, बैक डोर से जाते हैं। तो मैं अक्सर कहता हूं, इन पाकिस्तान यू गेट जस्टिस फ्रॉम द बैक डोर। ये रियलिटी है। सुप्रीम कोर्ट का मेन डोर कभी खुला ही नहीं आज तक। सिंध हाई कोर्ट की इतनी बड़ी एंट्रेंस है, इतनी जबरदस्त एंट्रेंस है, और सिंध हाई कोर्ट की जो एक्चुअल एंट्रेंस इस वक्त है वो इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी पीछे से है, वहां से अब एंटर होते हैं। ये हमारी माइंडसेट है, ये हमारी माइंडसेट है। हमारे यहाँ कोई जर्नलिस्ट ये नहीं कहता कि सिंध हाई कोर्ट की मेन एंट्रेंस खोलो। कभी किसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मेन एंट्रेंस खोलो? ये जो आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पीछे से जाते हैं। Thank you, Mohit sir, for the candid discussion. इत्तेफाक से अब ये है कि आपको भी इल्म है इस चीज़ का कि इस वक्त जो है वो थर्ड लार्जेस्ट, मतलब अब फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपेंस जो है हमारा डेट सर्विसिंग पे चला गया है, 11 ट्रिलियन उधर देने हैं। सेकंड लार्जेस्ट प्रॉबल फेडरल गवर्नमेंट की रनिंग है, डिफेंस को तीसरे दर्जे पे चला गया है। और ये 9,400 जब हम इकट्ठा करेंगे तो 3750 सिर्फ हिस्से आएगा फेडरेशन के। 2000 की पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और टैक्सेस डाल लेंगे, बाकी फिर लोन लेना पड़ेगा। सो इस वक्त ऑब्वियसली आपको भी मेरे से ज़्यादा इल्म होगा, लेकिन हमारे सारे मुख्तदर इदारे भी इस चीज़ में अब दिलचस्पी ले रहे हैं कि अब इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आ गए हैं हम कि अगर हम टैक्सों के निज़ाम को और बिजनेस के निज़ाम को ठीक नहीं करेंगे तो ये मुल्क चल नहीं सकता। तो वो वाकई बात के दोबारा बनाने वाली जो है, इस पर अब आहिस्ता आहिस्ता, आप आज से 5 साल पहले बात करते थे, अब सब ये बात कर रहे हैं। तो मैं कादर मेमन साहब के पास जाऊंगा कि जी व्हाट कैन बी द कंस्ट्रक्टिव, आपने कुछ सुबह अपने कमेंट्स में भी शेयर किया, बट क्या करें हम टैक्सेस को ठीक करने के लिए? देखिए, मैं डिस्पाइट ऑफ व्हाट शब्बर साहब हैज सेड कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही, तो मैं खैर मैं उनकी बात की तायीद करते हुए मैं ये कहूँगा कि हम एग्जिस्टिंग हालात में क्या बेहतरी कर सकते हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उसको कुछ कहने की जसारत करूं। फॉर एग्जांपल, अभी आपने टैक्स टू जीडीपी की रेशो की बात की, तो टैक्स टू जीडीपी रेशो का अगर आप देखें वो इम्प्रूव कैसे हो सकता है? वो कभी भी इम्प्रूव नहीं होगा चाहे हम कितने ही रेवेन्यू बढ़ा लें, क्योंकि हमारा टैक्स का कंपोजिशन ऐसा है कि एग्रीकल्चर टैक्स 18% कंट्रीब्यूट करता है, 20% वो टैक्स में 2% करता है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट सेक्टर 17-18% करता है, वो टैक्स में 2-3% करता है। तो अनटिल एंड अनलेस उन सेक्टर्स से टैक्स को वसूल किया जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो उसके साथ आएगा और हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ेगा। बहुत सारे लोग बैठ के बड़ी बड़ी डिबेट्स करते हैं, बट ये टैक्स टू जीडीपी रेशो कभी भी हमारा नहीं बढ़ेगा, बिकॉज हमारा कंपोजिशन ऑफ द जीडीपी है। तो एक तो ये बात मेरी गुजारिश इसमें ये थी। दूसरी बात, मैं जब सुबह देख रहा था कि आदम स्मिथ इंटरनेशनल इस और आज के सेमिनार को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मुझे आज भी 1776 में आदम स्मिथ ने एक वेल्थ ऑफ द नेशन किताब पढ़ने का मौका मिला होगा आप सबको। उसमें उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स जो किए थे, जो आज भी, यानी इतने सदियों ने गुजरने के बाद आज भी वो 4 प्रिंसिपल्स जो हैं, अगर टैक्स के निज़ाम में वो आ जाएं किसी तरह भी, तो कोई भी टैक्स ऐसा नहीं है जो टैक्स पेयर देना नहीं चाहेगा। और वो 4 निज़ाम थे: फेयरनेस, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस और एबिलिटी टू पे। मतलब आपसे ज्यादा कौन जानता है कि यहाँ पर टैक्स पेयर पे नॉन फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट पे बिलियंस की टैक्स लगे हैं, पेनल्टी लगी है, जबकि उसका नॉन फाइलिंग, उसका कोई टैक्स काटना ही नहीं था। फिर जजमेंट्स आए, सब कुछ आए। तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर ये 4 चीजें आज भी टैक्स के निज़ाम को ठीक करने में किसी तरह भी आ जाएं तो उसको। दूसरी बात ये है कि अगर तीसरी हमारी कोशिश हमारी ये होनी चाहिए
कि हम किसी तरह टैक्स के डिस्टॉर्शंस को कम कर सकें। फॉर एग्जांपल, हमने वेट के लॉ को इतना डिस्टॉर्ट कर दिया है कि अभी मेरे भाई वो जैज वाले थे, उनसे 22% टैक्स वसूल किया जाता है आउटपुट पे, और उनको इनपुट पे 13% देती है एसआरबी के, जी हम आपको 9% का तो क्रेडिट नहीं देंगे। तो वेट का लॉ दुनिया में ऐसा नहीं है। वेट के लॉ में बहुत सारी जगहों पे हमने एसआरओज निकाल दिए कि जनाब ये आइटम पे आपको नहीं देंगे, ये आइटम पे नहीं देंगे, ये आइटम पे नहीं देंगे। जबकि वेट का लॉ दुनिया में ये है कि जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इनपुट है वो आपको अलाउ होगी। तो हम उस लॉ को थोड़ा सीधा कर दें, उसके डिस्टॉर्शंस को खत्म कर दें अगर, तो चीजें आसान हो जाएंगी और लोग टैक्स में आना चाहेंगे। शब्बर साहब को याद होगा, मैं और शब्बर साहब आज से आई डोंट नो 15 साल पुराने एक एडवाइजरी कमेटी में थे, और एक प्रोविजन ऑफ लॉ सेक्शन 231A डाला गया था, और उसमें जो अभी शब्बर साहब ने बात की कि बैंकों के ट्रांजैक्शन को अगर किसी तरह हम डिजिटलाइज कर लें। अच्छा, मैं बैंकों से थोड़ा सा आगे जाता हूं, मैं कहता हूं हम ऑटोमेशन पे, यानी प्राल जब बनी, जैसे अभी आपने कहा, और नादरा उसके बाद बनी, नादरा हैज बिकम मोर वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन देन द प्राल। मुझे याद है आज भी, मैं कोई आज से 8 साल पहले के एफबीआर के चेयरमैन को मैंने कहा कि सर आप प्राल में इन्वेस्टमेंट करें, उसकी जो हार्डवेयर है उसको उठा के फेंकें और नया हार्डवेयर लाएं। आज भी वो हार्डवेयर उधर ही है। आई एम श्योर कुछ थोड़ा बहुत उसमें अब 80 बिलियन के कुछ स्कैनर्स वगैरह कुछ आए उसमें, बट माय पॉइंट इज कि ऑटोमेशन इज द ओनली आंसर। और 231 को फिर किसी तरह भी उसको फिर सिस्टम से निकाल दिया गया है, जो कि इतना जबरदस्त प्रोविजन था। और मैं शब्बर साहब को इसलिए दे रहा हूँ कि चूंकि वो अभी बैठे हुए हैं। दूसरी बात, हमारी पॉलिसीज जो है, हम किसी तरह भी ये हम कोशिश करें इस बजट में कि हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हो। फॉर एग्जांपल, शब्बर साहब को याद होगा एक मिनिमम टैक्स हमने इंट्रोड्यूस करवाया कि जी चूंकि लॉसेस में लोग कंपनी करते थे, 11,000 उस जमाने में जो आया था टेक्सटाइल की 11,000 कंपनीज जो हैं वो नहीं देती, तो लिहाजा मिनिमम टैक्स लगा दिया जाए। तो उस वक्त ये प्रोविजन ऑफ लॉ डाला गया था कि ठीक है, अगर कोई शख्स मिनिमम टैक्स आज देता है तो उसको ये इजाजत दी जाए कि जब वो नफा करे तो उसको एडजस्ट कर ले। उसको पहले 5 साल रखा गया, अब उसको 3 साल कर दिया गया। बीच में कुछ बहुत जबरदस्त ब्यूरोक्रेट्स थे, ऑफिसर्स थे, उन्होंने उसको इंटरप्रेट करके और कहा कि जनाब आप जब 1 रुपए का प्रॉफिट करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, आप इतना प्रॉफिट करेंगे तो मिलेगा। तो वो दैट ऑल्सो हैज बीन गॉन अवे। सो माई पॉइंट इज दैट वी मस्ट सिंप्लीफाई द लॉ ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। अगर हम इस बजट में अगर किसी सूरत से भी उसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर हम कुछ कर जाते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारी दूसरी सब्जेक्टिव पावर्स हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन 122(5)A की जिक्र हो रहा था, सब्जेक्टिव पावर्स नहीं होने चाहिए। जब सब्जेक्टिव पावर्स लॉ के अंदर नहीं होंगे तो ये जो लिटिगेशन है वो कम हो जाएगी। जब लिटिगेशन कम हो जाएगी, हाँ, किसी चोर को छोड़ा ना जाए तो उस चोर को ना छोड़ने के लॉ के अंदर प्रोविजंस है, उनको रखा जाए, जिसमें मुझे ये इख्तियार हो कि मैं कहूँ कि अच्छा जी आपकी तो मुझे शक्ल नहीं पसंद, तो लिहाजा मैं आपको ये नोटिस भेज रहा हूँ। आई थिंक उस तरह के पावर्स बहुत सारे हैं जिसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसको निकलना चाहिए। आई थिंक आई विल रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू दैट कॉमेंट्स, बिकॉज आई थिंक आपका जी, माशाल्लाह बहुत ज्यादा वक्त हो गया है। मौजूद है हमारे पास और सारी टेक्स प्रपोजल्स आपकी आ गई हैं। नाउ आई विल आस्क फॉर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए कोई इंटरेस्टेड हैं तो सर अगर मुझे इजाजत दे दें, मैं एक और पहुंचना है। बहुत शुक्रिया बड़ी कादिर मेहरबानी साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस? जैसे नॉन फाइलर के सबक सामने बहुत अच्छा होता है, तो आई थिंक क्या नॉन फाइलर जब कम है ऑल टुगेदर इनको हम फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट ऑपरेट करने से रोक ट्रैवलिंग इनकी रोकते हैं या they can't buy the property rather than basically doubling and tripling taxes which they are able to manage somehow। तो एक तो ये प्रपोजल मेरी तरफ से मतलब एक सजेशन है, मतलब इसको देखा जा सकता है।
दूसरा जो एग्रीकल्चर की हमने बात की, तो हमने बहुत सारी एग्रीकल्चर की या कमोडिटी ट्रेडिंग को टोटली हमने एग्रीकल्चर के नाम पे उसको एग्जेम्प्ट रखा हुआ है। इसमें अगर हम जीरो रेटिंग इंट्रोड्यूस कर दें विदाउट एनी रिफंड, तो उसका एक फायदा ये होगा कि एटलीस्ट उसकी रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी आज एग्जेम्पशन के नाम पे वो टोटली नॉन रिपोर्टिंग में है। तो एक दूसरी सजेशन मेरी ये है। तीसरी ये है कि इसमें जी जी देखिए, there are actually not two kind, there are three kind. One is the person who is a filer. Other is the person who is not required to file. And third is the person who is non-filer. हमारे यहाँ सिर्फ दो कैटेगरी है। हमें एक कैटेगरी बनानी पड़ेगी, people who are not required to file. जी। For argument's sake, if I buy a property, I am a non-resident, तो मैं क्यों टैक्स दूं पाकिस्तान का? तो उसकी एक कैटेगरी होनी चाहिए not required to file. और जो नॉन फाइलर है वो कैटेगरी होनी नहीं चाहिए। लेकिन हमने गलती ये की हुई है कि नॉन फाइलर की एक कैटेगरी बनाई है जी। देयर आर मेनी पीपल हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल। वो आप नहीं उसको आइडेंटिफाई नहीं करते, वो आप लोगों को तंग करते हैं बेसिकली। तो ये कॉन्सेप्चुअली एरर है। मगर जिस तरह वोरा साहब ने कहा, ये लाया गया था विद बैड इंटेंशन कि उन लोगों को जो टैक्स नहीं देते उनको एक एक्सक्यूज दी गई थी। जी। तीसरा पॉइंट मेरा ये था कि सर एओपी जो है ना, ये कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस आई थिंक पाकिस्तान में इसको फिनिश कर देना चाहिए। एओपी के नाम पे बेइंतहा जो है, इसलिए कि एओपी का जो रिजीम है या जो इसकी जो उसकी रजिस्ट्रेशन है, मतलब कंपनी किसी एक जगह रजिस्टर्ड होती है। एओपी में एक आसिफ हारून के नाम पे 10 एओपी 100 एओपी बना के मैं उसके पीछे चुप जाता हूँ। तो आई थिंक एओपी को बाय कॉन्सेप्ट जो उसकी जो उसका वो है, वो आई थिंक उसको एड्रेस करने की जरूरत है। आई थिंक शायद बहुत पहले किसी जमाने में होता था कि एक साइज ऑफ द बिजनेस के बाद आपको कॉर्पोरेट में आना चाहिए। एओपी का आई थिंक इसको एज अ एंटिटी इसको जो है ना खत्म होना चाहिए। लास्ट बात जो थी वो ये थी कि हम लोग जो उसकी बात कर रहे हैं अपना डॉलर की और इसकी हम फॉरेन करेंसी की हम बात कर रहे हैं, कभी आज तक हमने फॉरेन करेंसी अकाउंट की वो एंट्रीज को कभी भी एग्जामिन नहीं किया जो डेबिट साइड की है। हमें एक क्वेश्चन रखा कि चले पैसे बाहर से आ रहे हैं, हमने फॉरेन करेंसी अकाउंट के पैसों को आते वालों को हमने नहीं चेक करना 111.4 के पीछे या फला, बट उसमें क्रेडिट एंट्रीज वो भी आ रही है जो मार्केट से डॉलर परचेस करके हमने क्रेडिट करी, और जो डेबिट साइड है कभी भी एग्जामिन नहीं किया हमने। अगर वो आज एग्जामिन करें तो आई थिंक बहुत सारी चीजें जो है वो उसकी रिजॉल्व भी हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि डॉलर की फॉरेन करेंसी की पाकिस्तान में जरूरत क्या है? मतलब किसी को बाहर जाना है तो एयरपोर्ट पे गवर्नमेंट करेंसी दे दे, और कोई पाकिस्तान में आ रहा है तो डॉलर वहां पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सरेंडर कर दे। बाकी जिसको डॉलर चाहिए वो स्टेट बैंक से ले। तो पाकिस्तान में एक्सचेंज कंपनियों को, जिस तरह शब्बर साहब बहुत बड़ा कहते हैं रहते हैं, तो आई थिंक फॉरेन करेंसी हार्ड कैश में पाकिस्तान में जरूरत क्या है, इसलिए कि रुपयों में हम कारोबार करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। जैसे ज्वेलरी है, ज्वेलरी के अंदर आई थिंक कि उनके ऊपर हमें टैक्स खत्म कर देना चाहिए, बट उनको जीरो रेटिंग में ले आए, बट उनको कहें कि आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि आपसे माल खरीदता कौन है बेचता कौन है, टैक्स उसके ऊपर ना लगाएं। अगर आसिफ मुझे एक बात बताए ना, ज्वेलरी पे आप टैक्स कैसे कर सकते हैं जबकि 40 टन सोना स्मगल हो रहा है? आई नो, मगर शबर साहब मैं ये कह रहा हूँ कि उनसे आप सोने की स्मगलिंग को अलाउ, सोने की इंपोर्ट को अलाउ करते हैं। नहीं मैं इसी वजह से ये कह रहा हूँ कि उनकी जो सेल साइड है वो रिपोर्टिंग करे ना, सिर्फ परचेस, उनसे आप उनके ऊपर टैक्स ना लगाए। वी नो दैट कि बेचारा रिपोर्टिंग नहीं करेगा ना, वो तो कहता है मेरी बदवाई है ये। हाँ, वो तो कहता है मैंने बेचे ही नहीं है, तो वो कहेगा मेरा सोना कहां से लाऊंगा मैं? 5-7 अरब डॉलर की गोल्ड की पाकिस्तान के अंदर ट्रेड है यार। इंडिया में यही मुसीबत थी, उन्होंने गोल्ड की इंपोर्ट अलाउ कर दी, मसला हल हो गया जी। देखिए मैंने आपको कहा ना, जो आप मेरी बात को थोड़ा समझे नहीं भाई, जो पाकिस्तान चला रहे हैं उनको फैसला करना है ना जी। मैंने तो नहीं करना ना, मैं तो बता चुका हूं कि क्या क्या फैसला करना है। अगर वो कर सकते तो कर लें, नहीं कर सकते तो नहीं करें, क्योंकि अब कश्ती तो उनकी डूब रही है, मेरी नहीं डूब रही। मुझे तो बाहर नौकरी मिल जाएगी। गोल्ड का जो है वो एफडीआर और ये कॉमर्स लास्ट ये कि जो ट्रेड प्राइस, सारी ट्रेड इंपोर्ट प्राइस जो है ना सर पब्लिक होनी चाहिए। हामिद साहब, मेरा जो व्यू है, जो आसिफ भी एग्री करेगा, जो चीज हमने एक गलत चीज रखी हुई है जो एंटी बिजनेस है, वो ये है कि हमारे मुल्क में कैपिटल गेन टैक्स पे टैक्स है। कैपिटल गेन टैक्स का टैक्स खत्म होना चाहिए, क्योंकि कारोबार जो है, बिजनेसेस, जब आपने आपको अगर आज बेशुमार कंपनियां हैं, जब वो अपनी फैमिली में डिवीजन करती हैं या किसी को बेचती हैं, जो उन्होंने प्लॉट बहुत पहले लिए थे, प्लांट मशीनरी बहुत पहले ली थी, उसमें एक ह्यूज अमाउंट का कैपिटल गेन टैक्स आता है।
और पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी एसएमई सेक्टर अनलीश नहीं हो रही है, बिकॉज कैपिटल गेन की टैक्सेशन ने पूरे पाकिस्तान को चोक कर दिया है। क्योंकि पाकिस्तान के बल्क ऑफ बिजनेसेस जो हैं वो एसएमई सेक्टर में हैं, और वो सारे एसेट उस वक्त लिए गए थे जब डॉलर का रेट 50 या 40 या 30 था। आज डॉलर का रेट 280 है। जब वो बेचने जाता है उसको एक गेन आता है ह्यूज सा, और वो गेन टेक्निकली एक्सचेंज गेन है, जो आप उसको इनकम टैक्स में 30% में टैक्स करते हैं। जब वो करने जाते हैं तो फिर चोरी चकारी करता है, आगे पीछे करता है, आउट ऑफ बुक बेचता है। तो आपको चाहिए कि पाकिस्तान में 5 साल के लिए कैपिटल गेन टैक्स को खत्म कर दें। ये मतलब सक्सेशन का गेन नहीं होना चाहिए, ये बाकी कैपिटल गेन जो प्रॉपर्टियों का है, हाँ, जो कि खत्म किया हुआ है उसको लगा दें। जी वोरा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं दो चीजें ऐड करना चाहूंगा। एक तो ये कि देखिए, पाकिस्तान में कोई अराउंड 7 ट्रिलियन का जो टैक्स जमा होता है, वो टैक्स अवाम पर तो खर्च होता नहीं है। अभी जैसे आपने फरमाया कि वो तो चला जाता है हमारी डेट सर्विसिंग पे। जेब तो एक ही है, चाहे लोग लेके आप सड़कें बनाएं, सारा कुछ करें, ये नहीं है कि अवाम पे नहीं खर्च होता। ये अलग बात है, आप कहें जी डेट से हमने इधर लगा दिया और वो उधर चला गया। नहीं, मैं इसमें शबर भाई एक मिनट, एक तो ये कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू, आई मे बी इंटरप्रेटिंग दिस इन अ डिफरेंट एंगल और इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, बट द पॉइंट इज, being a taxpayer, when I see that my tax is not being spent on me, whatever the roads, motorways, whatever is being done is through IMF loans, and my tax is going for the expenditure of running the government or defense or XYZ. तो एक अवाम में, एक मासेस में, बिजनेसमैन में, इंडस्ट्रियलिस्ट में एक ऐसी फीलिंग आती है कि मेरा टैक्स जो है वो मिसयूज हो रहा है। जब मैं किसी ब्यूरोक्रेट को किसी ऐसी सिचुएशन में देखता हूं जिसका उसका वो मेरिट नहीं है, वो अपनी उस पोजीशन में वो मरात, वो चीजें जस्टिफाई नहीं कर सकता, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे जनरल वाला हो, चाहे कोई हो, तो अवाम ये कहती है कि मेरा टैक्स मिसयूज हो रहा है। इंडस्ट्रियलिस्ट कहता है मेरा टैक्स मिसयूज हो रहा है। जब मेरी फैक्ट्री के आगे मेरी सड़क पर 10-10 फीट के गड्ढे 10-10 साल नहीं बनेंगे, जब फेडरल गवर्नमेंट कराची जैसे शहर में, जहां पूरे पाकिस्तान का कार्गो दंदनाता फिरता है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल फैसलाबाद का कार्गो मैं कराची शहर में, कराची आइट में हैंडल करता हूं। मैंने जब इमरान खान साहब को कहा कि आप नदन बाईपास और सदन बाईपास को फाल कर दें 10-20 बिलियन रुपए से, पूरे कराची शहर जो है और कराचीआइट्स के बच्चे जो हैं वो सेव हो जाएंगे, एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, और पोर्ट की एक्टिविटी 24 घंटे रहेगी, जो कि अजीब बात है कि पाकिस्तान का कराची पोर्ट जो 90% ट्रेड हैंडल करता है वो सिर्फ 5 घंटे चलता है। इट वर्क्स ओनली फॉर 5 आवर्स। इंजीनियर जब्बार साहब बड़ी गौर से मेरी बात सुन रहे हैं। इट वर्क्स ओनली फॉर 5 आवर्स। कराची पोर्ट को 24 घंटे चलाने के लिए एक नदन सदन बाईपास पिछले 25 साल में कोई हुकूमत नहीं बना सकी। तो मैंने जब उनको कहा कि सर आप ये बना दें, तो उन्होंने कहा तुम जाकर अपने चीफ मिनिस्टर से क्यों नहीं बात करते। तो मैंने कहा सर 15 मिनट से तो मैं आपको जस्टिफिकेशन दे रहा हूं कि इसको क्यों बनना चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट को क्यों बनाना चाहिए। तो उनका जवाब था कि तुम जाकर अपने चीफ मिनिस्टर से बात। माई पॉइंट इज, अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में हम लोगों को अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू गुजरने देना चाहिए, हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए, और वही हमारे मसाइल को हल करेंगे। करप्ट जरूर होंगे, लेकिन विद टाइम, विद एवोल्यूशनरी प्रोसेस, पाकिस्तान को पाकिस्तान के लोग ही ठीक कर सकेंगे। थैंक यू। एक मिनट जी शिद दे दो। मैं वोरा साहब की इस बात से डिसएग्री करता हूं कि पाकिस्तान का टैक्स पाकिस्तान के अवाम पे खर्च नहीं होता। अगर ये एनएफसी अवार्ड को दोबारा पढ़ें तो इनको समझ आएगी कि ये गलत कह रहे हैं। एनएफसी अवार्ड में जो टैक्स कलेक्ट होता है, उस टैक्स कलेक्ट में से 54% बिफोर एनी एक्सपेंडिचर
सूबों को चला जाता है और सूबों के पास तमाम वो चीजें जिसकी शिकायत ये कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत इल्यूजन है कि पाकिस्तान का टैक्स अवाम पे खर्च नहीं होता, ये गलत स्टेटमेंट है। अब अगर सूबाई गवर्नमेंटें हेल्थ नहीं दे पा रही या सेहत नहीं दे पा रही या रोड नहीं दे पा रही, इसमें पैसे की कमी का इशू नहीं है, ना इसमें कोई इंटरेस्ट का ताल्लुक है, ना इसमें डिफेंस का ताल्लुक है। ये लोगों को लाल बत्ती दिखा के बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि पैसे की कमी है या पैसा इंटरेस्ट पे जा रहा है या पैसा डिफेंस पे जा रहा है। एनएफसी अवार्ड की फिगर पढ़ लें, टॉप लाइन आती है 9,000 12,000 रुपए, उसमें से 54% एनएफसी अवार्ड के तहत सूबों को चले जाता है। और सूबों के पास ट्रांसपोर्ट है, सूबे के पास हेल्थ है, सूबे के पास एजुकेशन है, सूबे के पास इरिगेशन है, सूबे के पास सड़क है, सूबे के पास एवरीथिंग जो एक आम आदमी से रिलेट करती है वो है। सूबे की सलाहियत ना डिफेंस से बजरू होती है, ना वो बजरू होती है इंटरेस्ट से। मैं सिंध का फाइनेंस मैनेजर रह चुका हूं। जब मैं सिंध का फाइनेंस मैनेजर था, फाइनेंस मिनिस्टर था, मेरे पास एक्सेस मनी हुआ करती थी। आज भी मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूं कि पंजाब की गवर्नमेंट के पास पैसा खर्च करने की जगह नहीं है। ये मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको। पंजाब गवर्नमेंट को जो एनएफटी से पैसे मिलते हैं उनके पास खर्च करने का रास्ता नहीं है। ये लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कि डिफेंस पे खर्च हो रहा है, इंटरेस्ट पे खर्च हो रहा है। ये फेडरल गवर्नमेंट का अकाउंट है, फेडरल गवर्नमेंट का तो ताल्लुक ही नहीं है कोई अवाम के साथ। ये एक लाल बत्ती है लोगों को चिड़िया बनाने के लिए दी गई है। शब्बर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। ये याद रखिए कि जो ही टैक्स इकट्ठे होते हैं बी अकाउंट में, उसका सबसे पहले सूबों में जाता है और पंजाब और सिंध दोनों सरप्लस में हैं। ये नहीं है कि ये बलूचिस्तान भी सरप्लस में है। लास्ट क्वेश्चन जी, उसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे। वन लास्ट। Sorry, Ji, not a question, but just a suggestion, if that's okay. One is कि जो हमारे tax laws हैं, why can they not be put in simple English or in simple Urdu? Because जो हम Shakespearean English में लिखते हैं laws, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग इस कमरे में बैठे हुए हैं, I'm sure everybody can come up with a different interpretation of that law. सर देखिए अच्छा चलिए ठीक हो गया। वैसे इस वक्त एफबीआर एक चैटबॉट खरीद रहा है जो कि उर्दू पंजाबी आपके ना वोकल कमांड के ऊपर टैक्स लॉ बताएगा। ओके अच्छा सर जी वन क्वेश्चन उधर से कर रहे थे, जो साहब थे उधर, दाऊद साहब थे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम शब्बर साहब एंड ऑल माय कॉलीग्स सर। ये ऐसी चीज सारे हमारे दाऊद साहब चलाते रहे। जी बहुत शुक्रिया। बट एनीवे माय सिंपल कमेंट है सर कि एक तो ये कि नेचुरली आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात की, और अगर हम आज से 10 साल पहले वाला भी प्री बजट कंसल्टेटिव वर्कशॉप देख रहे होंगे जो इन्होंने स्पॉन्सर किया होगा, तो उसके अंदर भी यही बातें हो रही होंगी कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए और ये जी। तो आई थिंक नेचुरली लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, बट आई होप कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग उससे पहले ख़त्म हो जाए, जब से पहले कि हम इस प्लेनेट से चले जाएं। लेकिन माय क्वेश्चन इज सर ऑन टू थिंग्स. One is that I'm sure you all have seen the capacity of the officials who deal with revenue and public spending in provinces. Shabbar Saab ne bilkul sahi kaha, I work with provinces at various levels, and there's enough money कि वो spend कर सकें for the good of the people. लेकिन आप उन्हीं लोगों को जिनसे सिंपल कागज पे नहीं लिखा जाता, उनको आप जब ये टेक्नोलॉजी दे देंगे, और इसकी बड़ी मैंने कोशिश की एज हेड ऑफ द बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, पूरे हमने असेसमेंट की, कितने लॉज हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड बैंक ने आके सपोर्ट किया। लेकिन ये जो आई मीन द डेर्थ ऑफ कैपेसिटी दैट यू हैव इन द प्रोविंसेस, क्या आप समझते हैं कि इसके थ्रू आप टेक्नोलॉजी ला सकें? क्योंकि फिर वो टेक्नोलॉजी को भी अब्यूज करना शुरू कर देते हैं। कोई ऐसा सिंपल शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो? यस वी एग्री के टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, यस वी एग्री के लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो, यस वी एग्री के इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, बट व्हेन यू गो टू प्रोविंसेस, स्पेशली स्मॉल प्रोविंसेस जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है इन चीजों की, और वहां पर कैसे आप समझते हैं कि टेक्नोलॉजी को इम्पोज किया जा सकता? आप 18वीं तरमीम लेकर आए थे जिसमें आपने सूबों को पैसे दिए थे, उसमें आप आर्टिकल 140A भी लाए थे जिसमें लोकल गवर्नमेंट थी। आपने किसी गवर्नमेंट ने
लोकल गवर्नमेंट को इंस्टीट्यूट नहीं किया, जबकि डिलीवरी जो कॉमन मैन की होती है वो हमेशा लोकल गवर्नमेंट से होती है। वो आपने नहीं किया क्योंकि आपका माइंडसेट नहीं है रेवोल्यूशन ऑफ पावर का, पहली बात। दूसरी बात, जो आप ऑटोमेशन की बात, जो आप नीचे की बात कर रहे हैं, वो ये है कि जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं बेसिकली, जो कि पब्लिक के साथ रिलेट करती हैं, वो हमेशा उन्होंने अपना जो मैकेनिज्म बनाया हुआ है वो वही है जो 1947 में था। उन्होंने कोई रेनोवेशन नहीं की है, ठीक है। और हम ये समझते हैं और हम कभी भी, आप पाकिस्तान में अगर 5000 बजट सेमिनार देखेंगे तो उनमें से 4995 फेडरल गवर्नमेंट के बारे में होते हैं। कभी किसी ने आज तक, मैंने कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं किया जिसमें सूबाई गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को डिस्कस किया गया हो, उसके खर्चे और वो जब सारे पैसे तो वो ले जाते हैं, खर्च तो वो करते हैं और उनको हम आजाद छोड़ देते हैं। सर अगला सेशन उनका है। अगला सेशन नहीं, उनका that's है। what I'm saying, that is the main issue। पब्लिक का ताल्लुक तो उनके साथ है, पब्लिक का ताल्लुक तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ है ही नहीं। आउट ऑफ टाइम, दाऊद साहब ने बड़ा अच्छा पढ़ा, लेकिन आप याद रखिए कि बजट प्रपोजल एक से जैसी नहीं रहती हैं। हर साल तो हम 150 प्रोविजन चेंज कर देते हैं लॉ में, विच इज रॉन्ग। हमें 5 साल बाद करनी चाहिए। तो हर साल नई से नई आती हैं, बिकॉज बिजनेस डायनामिक होते हैं, तो उनके साथ ये सारी चीजें में नहीं आती हैं। I'll take this opportunity to thank our channel, especially Shabazari Saab and Vora Saab and a colleague from KPMG here, और जो हमारे साथ किया, और कादर मेमन साहब जो चले गए, बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। We'll have now lunch and after that the Sir, we have a session before lunch, so we will. अच्छा lunch Yeah. बाद में, तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के ऊपर मेजर हमारा एक सेशन जो आप कह रहे थे नहीं हुआ, वो हम कर रहे हैं। थैंक यू। Thank you. Thank you so much. Wasif, if we can just begin the next panel. Thank you very much again for your very patient listening. We'll now jump in the third session. Currently, a research fellow at STPI. Dr. Amjad, can you please come over the stage? Yep. So in panelists, we have Engineer Mohammad Jabbar, who is a member board of governors at STPI and is also the CEO of Automotive MFG Limited. We have joined by Dr. Huma Bakai online. She is currently the Director of Millennium Institute of Technology. We have with us Mr. Asif Iqbal, who is the Managing Director of SPDC at Karachi. I would request Mr. Tariq Sultan, who is CEO Pathfinder Group. And in the last, I would request Dr. Adil Nakhuda, who is Associate Professor at Institute of Business Administration. So, Dr. Amjad Masood, over to you for the formal discussion. Thank you very much. So, good afternoon, people, and welcome to. So can we have some silence in the hall, please, so that we can begin the last session? Thank you. So, welcome to the third session, which is also the last session of today's event. And the question we are going to deal with is how can we maximize development and attain inclusive growth, and how to optimize public spending. So let me have a very brief preamble. The gap between exports and import is, widening over the past decades. And as a result, we are running a very dollar deficient economy, a chronically dollar deficient economy. And
major chunk of our budget is spent on debt service, and we are left with a kind of very slim amount to spend on all these different aspects of public spending. And if I broadly outline the situation we have, for instance, we have some geographic challenges or constraints, but we cannot definitely physically move Pakistan next to Germany or Spain. With geography, we can't do much. And we need more schools and hospitals and roads, and more schools and more hospitals and more roads, because population is growing. And I think this is also something we apparently can't do much, at least in the short term. But there are other things. For instance, we have very poor institutions, low literacy, almost no innovation, and social inequality, and so on, which definitely can be treated given if we have very fine-tuned policy for public spending. And in today's session, we try to kind of, amongst all these big challenges, we try to find out some narrow corridors which can lead us to maximize development and attain inclusive growth. It's going to be a little bit more diverse session. We'll be kind of touching agriculture, IT sector, industry, and climate, and so on. Maybe we let me go with this nice rule of ladies first. So I start with Dr. Huma Bakai. I think she's connected with us. Dr. Huma, could you please hear me? If you can respond. See. The host needs to let me in. All right. So we have a very significant contribution of IT sector in the exports of Pakistan. But with the advent of artificial intelligence, things are changing rapidly. Given most of the jobs we have in Pakistan related to IT, many of them are like data entry or repetitive. वासे मुझे इन तो करो ना मेरी वीडियो खुल रही है ना मैं अनम्यूट हो रही हूँ. Madam, we can hear you, and okay, then I can't connect. We can hear you. Okay, great. Then I will probably have a conversation because my video is not getting in. Okay, and we will unmute you when there is time for you to speak also. I was just asked a question. So is it now audible? I'm audible? Or Assalamu alaikum ji, am I audible to you? yes, you are. Wonderful. So my question was about the exports of IT sector, which is contributing a significant portion in the exports, but that can be affected by the advent of artificial intelligence, replacing the jobs, which are kind of like data entry and other repetitive tasks, which are kind of constituting a major chunk in the jobs we have in Pakistan. So what do you think the role of government in terms of budget allocation, maybe, to develop skills or to develop flexibility to adapt to this kind of rapidly changing scenario? I don't think it is just limited to IT. In a country like Pakistan, which is almost has an imploding infrastructure and key sectors of human development are almost on the verge of collapse. If I were to name two, it would be education and healthcare. Jumping on to or selectively picking up verticals like IT is an eyewash. I think we should be looking at a larger picture of how do we maximize development through public expenditure and what has been happening with public expenditure, so to say. So essentially, the public expenditure is being poured down bottomless pits, whether it is education or it's healthcare. And having said this,
It's not that nothing is happening, but apparently what we lack is a focused paradigm of how we are going to manage. Because if you look at the growth in the infrastructure, Pakistan actually has a phenomenal growth rate, both in terms of how many schools, colleges, and universities we've established. And if I talk about the healthcare sector, the same is the fact. But the elephant in the room is perhaps population growth rates. And we do not talk about that. Add to that the whole concept, which is, I think, critical to public expenditure, is developmental expenditure and non-developmental expenditure. And is there a desire, need, approach, mindset, political will to cut the non-developmental expenditure, which is only exploding with time, including this whole construct of technocrats, hiring consultants, and the list goes on. I'm going to sort of put this on the table for you all to deliberate upon. So when you talk about countries like Pakistan, the immediate larger picture that is drawn from is this a battle between guns and butter? So because we have to invest so heavily into our defense expenditure, that the chunk of what we have goes to that. That is, again, a misconception, something that Shabbar also pointed out. Now, probably defense expenditure, there are others, more competent people sitting here, is at a number 3. Number 1 is probably debt servicing. We are taking debt to give debt away, and that takes away a chunk of it. But I will come back to defense because it remains the second of the largest expenditure. That is a part of where we can get money or space in our public expenditure. So I will say just one thing and probably close my input and then let others speak up, is the way we need to create a distinction between developmental expenditure and non-developmental expenditure. In the same way, perhaps, we need to create a distinction between combat expenditure and non-combat expenditure. In a lot of discussion papers, a lot of you are economists. The biggest problem is, where are we putting the pension of the military forces, of the forces? Where is that coming from? Why are we not able to address issues of circular debt? So I just don't want to dwell on problems, and I've just scratched the surface with the people who have better things to say here. The only way forward that I see for Pakistan, the only way forward with the ways things exist now, with our development indicators, one of the worst in the world. Pakistan ranked 164th out of 193 countries, 23-24 report in terms of poverty, only above Afghanistan in terms of education expenditure, the lowest in the region, and the list goes on. So to address all of this overnight is not possible. What is possible in the short term is to engage the private sector, to come in and work with the public sector to address these issues. Now, the problem with private sector is that they work for profits. They do not work for need. Markets to which the private sector will cater will work for profits. So how do you factor in the need paradigm, which is what public expenditure is all about, into the private expenditure? And that's when the regulator comes in. Or for that matter, the role of the state comes in. That can be addressed. Today, the regulator remains a squeezing entity rather than a mentoring and regulating entity. And it deterrs private sectors or propels the better ones to step out of the country. So we keep talking about foreign direct investment. I'm going to finish on that. My submission is that foreign direct investment will come or not, I don't know. And what cost will it come on? And will it mean selling our family silver? But directing the revenue that exists in the country with the private sector can be directed to public sector entities for better performance. The example is next door. Thank you, gentlemen. Thank you very much. I have another quick question which you can respond precisely because you belong to education sector. We have normally very kind of slim budget for education.
So in this situation, we understand that there is one function of education is to attain intellectual growth, but another function can be to build capacity, which can kind of return in monetary terms into the economy. Like if we have to prioritize the disciplines or the skills or the programs, so that we can have maximum returns of our spending into the education sector. So do you think there can be something like that, something is possible like that? Kind of revamping the sector or kind of prioritizing investment in the sector? Maybe we are disconnected or? You need to unmute me. All right, I'm unmuted now. So frankly speaking, I think that's a very valid question. But I would then again go to the grassroots. And the grassroots is that you have millions and millions of children out of school. Pakistan is the only country in the region which does not have 100% primary enrollment. The priorities of higher education, the priorities of even vocational training can be put into place when we address the basic primary question of putting every single child into school. Pakistan has higher school enrollment rate than Afghanistan only. Bangladesh has acquired 100% primary education enrollment. Sri Lanka always had it. India has now attained it. So I think these are basic issues that need to be addressed before we sit in seminars like these, with all due respect, and talk things that can never be translated on the ground. There is a focus on the IT sector now. And they think that IT can revamp the economy of Pakistan. I particularly think that IT also has its limitation. The debate in the education sector today is that you need to prepare students for jobs that have not even been created. So the 21st century is not about teaching people how to do things. It is teaching or preparing human resource to grapple with change and adapt to that. But at the end of the day, once again, I'll conclude by saying that what we need is to correct our basics. Primary education, secondary education, I'm with tertiary education. I can't have a magic wand to have good tertiary education when I don't have students coming in, or students are not even enrolled. Thank you very much, Dr. Huma Bukai. So as we are talking about education, maybe we move to social development in general. So in social development, my question is for Asif Iqbal Saab. In the government budget, how would you prioritize areas in terms of like women or rural population or other marginalized communities? Because we have a low per capita spending. At the same time, we also have high economic inequality and social inequality. So how we can cater that? And I would request you if you can also include kind of digital inequality, because this is kind of something relevant in current scenario. Well, let me start with the broader macro things. I'll be brief because अब 3 बज चुके हैं और मेरे ख्याल है कि या 3 बजने वाले हैं. So I'll start with the overall broader issue of development spending. For example, when we talk about public spending, of course, it has a very complex but very significant relationship with human development and economic, and these are intertwined. So in the case of Pakistan, of course, there is an evidence that, but generally there is an evidence that development expenditure, which is public investment, has a positive impact on economic growth, has also on the human development. On the other hand, current expenditures, I mean, there is a mixed evidence. But overall, the main and significant thing is the efficacy of expenditure. It's not about the quantum of expenditure, कि आपने कितने पैसे खर्च किए हैं. It's about the efficacy, कि whatever you have spent, तो
ये डिजायर आउटकम जो थी वो अचीव हुई हैं कि नहीं हुई. सो दैट्स अ बिग क्वेश्चन. ऑफ कोर्स नो वन कैन आंसर दैट क्वेश्चन इन द केस ऑफ पाकिस्तान. वी हैव द आंसर, वी डोंट हैव अ सॉल्यूशन. और तीसरी चीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट के हवाले से पाकिस्तान में जो एविडेंस है वो ये है कि जो पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है, इट्स क्राउड्स इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. हिस्टोरिकली ये होता रहा है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे खर्च करती है तो उसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो भी होता है. लेकिन अब हो क्या रहा है पाकिस्तान में, ये हो रहा है कि ड्यू टू एक्सटेंसिव बोरोइंग हमारे पास ये हो रहा है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी अब नहीं हो पाती. उसकी वजह ये है कि पब्लिक इन्वेस्ट जो गवर्नमेंट है वो सारा चैनलिंग जो हो रही है, आप कह लें कि क्रेडिट की, वो हो रही है. ऑलमोस्ट जुलाई 22 की फिगर मैंने देख रहा था तो इट वाज 70% ऑफ क्रेडिट ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर वेंट टू द गवर्नमेंट. तो जब 30% बचेगा तो प्राइवेट सेक्टर, आप पहली बात तो ये है कि वो लेंगे क्यों आपसे इतने हैवी इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट पे, और दूसरी बात ये है कि आपके पास वो स्पेस ही नहीं है. तो इस ये बेसिकली उलट ये हो रहा है कि हमारी जो एक्सटेंसिव बोरोइंग है वो क्राउड आउट कर रही है पब्लिक इन्वेस्टमेंट को. और उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा डेट स्टॉक है वो क्राउड आउट कर रहा है पब्लिक इन्वेस्टमेंट को. ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सा सिचुएशन आ गई है कि आपके पास डेट बहुत है. अब आप सबको पता है कि पिछले साल की सूरत हाल क्या रही. अब के तो 6 महीने की फिगर चलाए हैं, तो पिछले साल तो अभी हमारा प्राइमरी बैलेंस जो है वो नेगेटिव में था. वी डिडंट हैव मनी. तो अब सवाल ये है कि जब आपके पास डेट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट क्राउड आउट हो जाएगी. पैसे होंगे. व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक स्पेंडिंग, डू वी हैव समथिंग टू स्पेंड? So that's a kind of a macro level issue that we have to tackle. अच्छा, उसके बाद अगर हम फिर आ जाते हैं, 2 लेवल्स हैं, एक है फेडरल गवर्नमेंट का, एक है प्रोविंशियल लेवल का. तो ओवरऑल अगर हम कंसोलिडेटेड फाइनेंसेस की बात करते हैं तो हमारी कंसोलिडेटेड स्पेंडिंग जो है, पब्लिक स्पेंडिंग, वो बहुत रिजिड है. तकरीबन 70%. मैं कंसोलिडेटेड की बात कर रहा हूँ, नॉट सेपरेटली प्रोविंसेस एंड फेडरल गवर्नमेंट. तो कंसोलिडेटेड लेवल पे देखें तो 70% ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो प्री कमिटेड, जिसमें वी ऑल नो कि इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, सिक्योरिटी है, ट्रांसफर्स हैं, पब्लिक सेक्टर स्टाफ की सैलरीज हैं. तो जब आपके पास 70% जो है वो प्री कमिटेड है तो बाकी 30% से आप मतलब क्या कर सकते हैं? दैट्स अनदर क्वेश्चन. अब अगर हम आए वेरी वेरी क्विकली टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फेडरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो हम सबको मालूम है कि प्राइमरी बैलेंस पिछले साल नेगेटिव में था, तो वी डिडंट हैव मनी टू स्पेंड. बट एज आई सेड, इन द केस ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत मैटर करता है. लेकिन सूरत हाल ये है कि आज से कोई 8-10 साल पहले 2016-17 में our federal development expenditure as percentage of total federal development expenditure was over 16%. और पिछले साल ये कितना था? 6.6%. So the investment has declined. अच्छा, ओवरऑल अगर आप कंसोलिडेटेड लेवल की भी बात कर लें तो हाँ, उसमें ये था कि 2016-17 में हमारा जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग थी, इट वाज 5.3% ऑफ जीडीपी. पिछले साल ये 2.3% ऑफ जीडीपी. सो वी डोंट हैव मनी टू स्पेंड, एंड व्हाट वी कैन टॉक अबाउट द एफिकेसी ऑफ एक्सपेंडिचर. सो नाउ कमिंग टू प्रोविंशियल एक्सपेंडिचर, हम सब जानते हैं कि प्रोविंसेस का सारा दारोमदार जो है वो ट्रांसफर से. तो आमतौर पर ये इससे पहले सेशन में भी ये कहा गया कि सारा पैसा हुकूमत जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो भी टैक्स कलेक्ट करती है वो सारा तो सूबों को चला जाता है या आधा तो चला जाता है. सवाल ये है कि ये पिछले मैं 1 माह से देख रहा हूँ ये डिबेट जो है, बट इट्स माय ओन ओपिनियन, तो लग ये रहा है कि जैसे फेडरल गवर्नमेंट को कोई भत्ता देना पड़ता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को. वी आर पार्ट ऑफ अ फेडरेशन, वो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, आइन के मुताबिक उनका हक है 57% लेना. ठीक है ना? या तो आप आइन को बदल दें, लेकिन अगर आप दे रहे हैं तो इतना रोध होके देने की जरूरत नहीं है. जो उनका हक है आइनी है तो आप वो उनको दें, उसके बाद उनकी एफिकेसी अपनी है. तो इसमें एक प्रॉब्लम ये हुई है कि अगेन गोइंग बैक टू 7-8 ईयर्स अगो, 2016-17 में जो ट्रांसफर्स थे फ्रॉम द टोटल, यानी 2 तरीके हैं, या तो ये कि आप ट्रांसफर कर दें 57% या जो भी बनता है, या फिर आप करें कि सूबों को भी हक दे दें कि जिस तरह उन्होंने कहा कि जीएसटी आप कलेक्ट कर रहे हैं तो सूबों से कहे कि पहले सेल्स टैक्स भी आप कलेक्ट कर लें हमारे बिहाफ पे, जो कलेक्ट हो उसका कुछ हिस्सा आप फेडरल गवर्नमेंट को दे. व्हाई कांट इट बी द
अदर वे कि सूबे कलेक्ट कर लें और फिर दे दें फेडरल गवर्नमेंट को. इट्स एन डिबेट, इट्स अ डिबेट, वी कैन गो ऑन. बट मेरा ख्याल ये है कि अगर हम ट्रांसफर्स की बात भी देखें तो 2016-17 में जो फेडरल ट्रांसफर्स थे फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट टू द प्रोविंशियल, जो कि एनएफसी के थ्रू थे, इट वाज 6.1% ऑफ जीडीपी. पिछले साल ये हैं 4.9% ऑफ जीडीपी. So the transfers to provinces have declined from 6% to over 6% to less than 5%. अच्छा, उसका फिर नतीजा क्या हुआ है कि एजुकेशन पे अगर हम 2016-17 में 2.2% ऑफ जीडीपी खर्च कर रहे थे तो आज 1.4. आई एम नॉट सेइंग कि करप्शन जो है या एफिकेसी या इनएफिशिएंसी जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे नहीं है और फेडरल पे, दोनों सतह पर है. दिस इज अ कॉमन थिंग, बट वी नीड टू think that how we can increase the efficacy of expenditure. हाँ, अब ये जरूर हुआ है कि एजुकेशन पे कम हुआ है, 2.2 से 1.4 हुआ, लेकिन हेल्थ में हमारा एक्सपेंडिचर 1% से और 1.4% हो गया. अगेन एज आई सेड, क्वांटम डजंट से एनीथिंग. अच्छा, उसकी दूसरी वजह ये भी है एक्सपेंडिचर कम होने की कि वक्त के साथ साथ ओवर द लास्ट 20 years वी हैव सीन कि जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर आ रहा है सोशल सर्विसेज में, गवर्नमेंट जो है वो ले बैक. भाई ठीक है, जब आपने 40% के करीब बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में भेजना है तो गवर्नमेंट कह रही है बस ठीक है, जितने स्कूल बना लिए इतने ही काफी हैं, ये भी नहीं चल रहा है हमसे. तो आई थिंक वी नीड टू सी द होल पिक्चर कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है. और मेरा ख्याल है कि अब टैक्सेशन की बात बहुत हो गई है. आप कुछ भी कर लेंगे, टैक्स टू जीडीपी रेशो नहीं बढ़ने का. अब हमें बात करनी होगी कि जो हमारे पास है उसको को खर्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. अगर आप 1 रुपए को अच्छी तरह खर्च कर लेंगे तो उसकी एफिकेसी बढ़ जाएगी, रादर देन कि आप 5 रुपए और लाएं और उनको भी उसी आग में झोंक दें जिनको हम झोंकते आ रहे हैं. So that's my broader point of view. So thank you very much. That was very comprehensive response. We are talking about how to optimize spending, and as rightly said, Aziz Saab, before spending, there should be something to spend. So how we can kind of expand or enhance our revenues? Maybe trade is one tool we can use, but the problem with current situation of Pakistan is we export mostly agricultural products, potato, onions, all other things for the whole year. And there is one batch of cars or computers, and we are already in deficit. So there is the question of value addition to the trade. So my question to Engineer Abdul Jabbar sir would be how we can kind of shift our economy from low value added exports to at least medium tech exports, if not, directly to kind of producing cars in Pakistan right now. So how would you respond, please? About cars, but I think I would like you to add in the future question that to all, you see, we are not at all value adding to so many things which are being not only consumed or partly or in major exported. I'm saying they are all almost in the raw form. If at all too much is done, it may be only limited to the secondary. Now the problem is that the car manufacturing, I'm saying, if we take the history of car manufacturing, I fairly remember Fawad Chaudhry, who is Minister of Science and Technology, and we were conducting a board meeting. So he had raised a very simple question with the member FDR at that time who was attending. Please provide me the data that how much money is being spent on the parts which we are importing in the country to manufacture the car, and what could be the FOB or CNF value of the car. And I'm sorry to say that in spite of my best efforts to remind the minister few times, and even again the member during that time who retired later, I must say the very calm and quiet message was that this is not in the interest of FDR to sort of disclose such figures. But it was not in the interest of FDR. It was not in the interest of the people who are making money unchecked the way things are going.
Now, as far as value addition is concerned, let me tell you, this whole structure of tariffs in this country is a questionable tariff. 99 chapters, you have only in one subhead, you just split into the four. One is 20%, another one is 16%, and almost similar goods and identical. Let me try to simplify. There is the one thing identical and there is another thing similar. There are differences. Now, what is happening is that in the Pakistan first schedule to the Customs Act, the other one you keep at 10, the third one you will keep at 3. And if somebody is really interested, you will keep it 0. So that is the way the whole system works. You take out the things of 20% at 0, you take out the things of 0 to 16% for reverse value additions for so many transfer of money and all that. So I think let me just put blame with abundant caution that it is all the state machinery, is the taxation structure, which has totally failed. Now, let me tell you one thing that I have been in this budgetary rigmarole and advising and suggesting to the CBR, then FBR, each and every year, making at least 200 pages of suggestion in Federation of Pakistan Chamber of Commerce, wherein for 20 years I was a member of Budget Committee. And what is happening is that you, in your tax statutes, the best thing which FBR would do is that they will find what are the rulings in the Supreme Court and what are the rulings in the High Courts. And those rulings, if they are targeting certain clauses in the statutes, they only correct them so that next time the judges of the court should complain for seeking judiciary for themselves instead of sort of working upon the same thing which comes up before this. Now about your value addition, let me tell you one thing very interesting. In this country, Pakistan, we asked the I.K. Khan during those days when he was so much, talking about reforms, Naya Pakistan, like Naya Nazmabad. So when he was talking about Naya Pakistan, then we had a chance to prepare a completely your value addition now, partly answering that look, in Pakistan, you open up now. All the chapters of customs should be brought at a uniform tariff rate of 5%. At that time, I remember calculation would show that we will lose at the import state custom duty of 163 billion. But on the other hand, in the cascaded way, I'll explain you in 2 minutes, it will generate another 510 billion rupees. And we gave him a proposal, look, this proposal of taxation is 12,000 billion rupees. And he would not believe that. We said, okay, if your people cannot collect it, we will collect it. And the way theoretically people say, but practically we meant that we should be hanged if we are not practically supporting our theory. Now, your value addition actually, in fact, in India, they went in this classic way and they gradually not only value added, but everything is becoming made in India. But over here, now let me come on the other side of the issue. 15 years back, everybody would say under invoicing from China. Everybody would talk like that. So I was chairman side association of industry, your value addition now. So I was just delivering a speech that Pakistan must value add, made in Pakistan, and we have a man problem that things are coming so cheap, lower than the cost of manufactured and supported subsidies that we cannot consider and think of value adding. Because in the value adding process, you have to involve so many things. And those things, when they integrate to the basic raw materials, are more expensive than importing it from China. When I was telling him the figure that under invoicing during that period, say 10 years back, I said, okay, this much is the gap. And he said, you are wrong. The gap is 230 times of what you are telling me. So we started working on electronic data exchanges. I mean, say if somebody is from FDR, he would know. Chinese would not provide us
So the problem is that I think a real value addition, as far as you're talking about car industry, well, it has some peculiarity and some other reasons. There is a transfer of pricing, and moreover, I'm saying yes, 100% I believe. I'm also parts manufacturing. Let me tell you, very interesting. The one thing is that your all engine parts, they come in a CKD or SKD in whatever form. So you have a assembling culture rather than a real indigenized value-added integration of, I mean, say, if you're talking of cars, but I think I will talking of everything, not only cars. When I was talking 20 years back before a minister of industry, that these things can be manufactured in Pakistan. Why you are giving them 0% rate of duty? So he said, well, we are facilitating public. So that was his answer. So I thought at that time that maybe economists should become our ministers, not the people who have some other backgrounds. The problem is over here. I think let me try to see if I can really conclude to your this question, because I was actually dealing with CBR or FBR since 1995. Firstly, there was only CBR. Your tariff, how much should be tariff, should be decided by FBR. And who should be exempted should be decided by FBR. The economic applications of value adding incentives, again, should be decided by FBR, CBR at that time. Then came partly Engineering Development Board, which was given birth on only a notification, not a statutory body, not a division at all. Then we started thinking of reforms. So lately, there's a big story behind. Then Hafiz Sheikh agreed, okay, we'll put a tax policy unit so that the economic treatment of your value addition and other issues is dealt by the people who are looking at the economic aspects rather than only the tariff aspects as the only solution without applying the mind of an economy or of an economist. This question, I think Hafiz was making settlement, but I think the main resistance in all the prudent policies of value addition have remained with the, I would say, status quo. If ever was desired, the first and foremost, the power was government of Pakistan itself, who is a champion of keeping a status quo. But why? Bilawal Bhutto was making so many speeches. So before that speeches, I gave some chat to some People's Party man. Look, somebody was talking about 18th Amendment. Yesterday, Aisha Ghaus Pasha, she was in IBA, I was there. So we together agreed that look, when we are talking about 18th Amendment, and we also simultaneously see that IMF is now also touching upon the constitutional matters like settled principle of NFC division and agreed to per constitution. The problem is that he was making speeches, partly we provided some information, that 313 billion rupees, the federal government has picked up a load for running 17 divisions. Then yesterday, Aisha Ghaus Pasha told me, I was the minister, I was asking, look, this devolution and devolve should be sent over there because let them sponsor this from NFC. Why the federal government? So I asked her, okay, you were a minister. So what is your feeling? Why it did not happen? He said, no, it did not happen because 17 persons have to be grade 22. They will lose 17 vacancies of grade 22 and they will lose 34 vacancies of grade 21. So 22 and 22 should be the prime focus of all these situations. Now people talk about NFC and all that. I've been working on NFC, not now, since long. Myself and Kesar Bengali, we used to think totally differently on this issue. The issue is very simple. You are giving money. Why you pick up those sponsored schemes, which the provinces should take? Because you want a popularity. हम मोटर बाइक दे देंगे,
हम सोलर लगा देंगे फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिसों में, हम यहाँ पे सिंध में बसें दे देंगे। भाई तुम्हारा क्या काम है? Let them sponsor from their own NFC transfers. You are taking up loans yourself by your imprudent decision making. The problem is that if I keep on going, I think I just feel that it may take hours and hours to talk on this issue. So let me be disciplined and stop over here. And if you're not satisfied, bilaterally I can settle with you, or even sometimes if you have another seminar on only value addition, probably I'm available for at least 2 hours talk. Oh, thank you very much for the offer. I would definitely avail. It would be an honor. Of course, we have a shortage of time, so we have to kind of optimize not only the budget, but also time for today's session. We know, I mean, we have to diversify and value add, but it's a very hard challenge, very hard task. But for that, you know, the business has to be very competitive. My next question is going to be for Tariq Sultan Saab. So for a business to survive, it has to be competitive, and to be competitive, it has to be innovative. So what is the kind of situation of innovation in Pakistan, and what do you see the role of the scope of government spending kind of to you know, enrich such culture of research and development in the sector, in private sector, so that, you know, kind of we can compete. And you may also include, you know, the popularity of startups nowadays, for example, in India and some other countries. Thank you very much. First of all, I would like to thank Remit and SDPI for inviting me. I would start with the most important issue of the tax collection and tax system of Pakistan, and that is basically the number of filers. It is so low in Pakistan, 2.08% of the total population, hardly 5.3 million tax filers. And out of that, I think approximately 30% are zero tax returns. No tax comes from that. In fact, according to one estimate, it is 50%. So even if you take 20%, it is 1.7% of the total population. Now, if you look at India, the tax filers are 5.8%, and the tax out of that 70% returns, no tax comes from that. So the taxpayers are again 1.7% of the population approximately. So that percentage is almost the same as in Pakistan, but over there, the last year's tax revenue collection was 22.23 trillion rupees, Indian rupees, whereas in Pakistan, and prior to that, it was 16.6 trillion rupees, so showing a growth of 34% in 1 year. Whereas in Pakistan, it was, I think, 7.6 trillion last year, and prior to that, 7.1 trillion. So the growth rate is hardly 16%, less than half of what was in India. And if you compare it, I'm sure with other countries in the region, the situation would be similar. So there is absolutely no question about not increasing the number of tax filers and taxpayers in Pakistan. I tend to disagree with one of the earlier speakers, Kaisar Bengali Saab, that you know, the top 1% of Pakistan people, if you look at the numbers, they're not much. I being a finance person, totally disagree with that. The real numbers are in the other 99%. Even if you take out 50% of the population, which may be under below the poverty line, the remaining 49% is the chunk of the population which is making tons and tons of money, and it has to be taxed. Why should they not be taxed? What is the justification of not taxing them? So it is in the interest, I would say, Wasif Naqvi Sahab in the very beginning set the tone by saying that, these kinds of events have been taking place since the inception of Pakistan, and tons of proposals go to the government, this is my view, from all quarters, all trade bodies, all associations, chambers, from the businesses itself, from the government internally also. But it is the political will to implement these suggestions that will, help in addressing
both the fiscal deficit and the current account deficit of situation of Pakistan. I'll specifically talk about that. So everybody must be taxed, but once, and it is in the interest of the government to do that, because if everybody is taxed, the revenue generation, internal revenue generation in rupee will increase. The biggest benefit of that would be that government will be able to repay its debt, local debt, and will also reduce the need to borrow more. Right now, and not just right now, I was in PTA, Director General of Finance of PTA in 2005, and around 2008-9, the situation was such that the government of Pakistan at that time was borrowing from local market by issuing T-bills to repay interest on loan, not the principal. So, ab tak kya hal ho gaya hoga, you can well imagine. So, the government, accountability government की ये भी होनी चाहिए, debate इस पे भी होनी चाहिए, various forums के ऊपर कि जी आप बताएं आपका क्या, what is your debt repayment plan, both for the foreign debt and also for the local debt. And क्या कहते हैं, foreign debt की तरफ भी मैं आता हूँ, बड़ा I wouldn't say बहुत आसान है, लेकिन there is definitely a solution, a way forward. So, political will, so no one should be left out of the tax net. I don't need to go into the details कि कौन tax net में नहीं है और कितनी आसानी से उनको लाया जा सकता है. There are tons of data sources. It just requires the will to do it. So where there is a will, there is a way. Next, मैं दो specific points बोलना चाहता हूँ, since ये pre-budget consultative forum है और ये help करेगा. This proposal must go to the government. In 2022-23, or maybe a year before that, when Miftah Sahab was the finance minister, वो एक specific tax credit था on mutual funds. By the way, I'm not from a mutual fund industry, so I'm not, there's no vested interest here. I'm talking about the entire salaried class of Pakistan. There was a tax credit on investment in mutual funds, which was taken away, 20%. You know what is the impact of that? Only 1.6 billion, according to the government's own figures. आपने 1.6 billion बचाने के लिए salaried class से जो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में 2008 में BPS स्कीम अनाउंस हुई थी और उससे पहले म्यूचुअल फंड चल रहे थे, वो ये 20% टैक्स क्रेडिट दिया गया था ऑन द लाइंस ऑफ 401k प्लान इन नॉर्थ अमेरिका एंड रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान इन कनाडा एंड सिमिलर प्लान इन UK. तो वो भी आपने हटा दिया. तो अब चले, उस वक्त सिचुएशन बहुत क्राइसिस वाली थी, अभी तो नहीं है. अभी तो इतने इंडिकेटर्स इंप्रूव हो गए हैं. आपकी स्टॉक मार्केट 74% इंप्रूव हुई है इन दिस 1 year. IMF से लोन मिल रहा है, डॉलर स्टेबलाइज हो गया है, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ रही है. तो अब आप वो रिस्टोर कर दें ताकि वो जो सैलरी क्लास बेचारी, जो कि वाहिद दो सेगमेंट हैं जो टैक्स पे करते हैं, एक कॉर्पोरेट और एक सैलरी क्लास, बाकी तो कोई पाकिस्तान में टैक्स पे ही नहीं करता. और इतनी इन्फ्लेशन हुई है इन द लास्ट 2-3 years, तो उनको थोड़ा सा ये रिलीफ मिल जाएगा और इसका इम्पैक्ट भी गवर्नमेंट के ऊपर कोई इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं होगा. दूसरा, अर्लियर भी बात हुई है, आई एंडोर्स दैट कि 7E शुड बी abolished. वो जो डीम्ड इनकम है on more than one property. The reason I am proposing this is that it has completely it has brought the real estate sector to a complete halt. उसका नुकसान गवर्नमेंट को ये है कि वो इन्वेस्टमेंट वहां स्टक हो गई है. वो ठीक है, डीम्ड इनकम की मद में कुछ ना कुछ वो टैक्स ले रहे होंगे, लेकिन अगर वो ये ना लगाते, वो इनकम सर्कुलेट होती रहती, तो वो और भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो इनकम लगनी थी. तो अभी क्या कहते हैं, वो जीरो हो गया है वहां से जो ना वो एक्टिविटी. फिर ये जो क्या कहते हैं उसकी बात है रेवेन्यू इंक्रीज करने की. उसमें एक आई बिलीव one of the solutions can be a panacea for Pakistan's problems in terms, we need to increase exports. That's the revenue of the country. ठीक है, ये जो इंटरनल टैक्स का कलेक्शन है ये इतनी ज्यादा नहीं है, और अगर सारे लोग भी टैक्स पेयर हो जाएं तो वो लोकल एक्सपेंडिचर को तो केटर कर सकती है, लेकिन जो हमारी डॉलर की पेमेंट्स हैं, जो डेट के लिए भी चाहिए और इंपोर्ट्स के लिए भी चाहिए, जो कि हमेशा क्या कहते हैं डेफिसिट होता है उसमें, तो उसके लिए हमें वो करना चाहिए जो इस वक्त लो हैंगिंग फ्रूट है, एंड विच इज फ्री IT एजुकेशन फॉर ऑल, विच वाज डन बाय इंडिया इन 1996-97, और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं आज कि वो $200 बिलियन तो खाली वो डोमेस्टिकली, मतलब ये नहीं कि इंडिया कमाता है, और फिर दुनिया का कौन सा मुल्क और कौन सी कंपनी नहीं है IT की बड़ी से बड़ी जिसमें इंडियंस हैं नहीं और उनके CEOs नहीं हैं. तो अगर आज, इट्स नेवर टू लेट, इवन अगर आज भी स्टार्ट करें, even if the government of Pakistan trains 100,000 youth in the latest cutting edge technologies such as artificial intelligence and big data analytics, full stack developer, Python,
इस तरह की जो भी लेटेस्ट डिमांड है, तो it can the government will have to spend only $45 to $65 million on 100,000 youth, and it will bring home $4.16 billion in the very first year at the lowest rate paid in the IT industry in the world. So, and if the government continues this plan, it can double. ये सैलानी कर रहे हैं STCA Special Technology Zones Authority, जहां मैं member corporate affairs और compliance रहा हूं. ये suggestion मैंने दिया था. It was approved by the Prime Minister. It was made a part of the strategy of STCA. Unfortunately, वो इतना फाल नहीं हो सका क्योंकि उनको development expenditure नहीं मिल सका. तो ये वाला इस particular suggestion की implementation नहीं हो पाई. लेकिन सैलानी कर रहा है, and सैलानी is doing his big time. I heard him in the leader of the head of Selani in a event recently, and he said they have a target of educating 1 crore youth, 10 million youth in this latest cutting edge technologies, because they know uska impact kya hai, kitna dollar Pakistan mein hai. A couple other suggestions that I would like to give is advanced tax on prepaid की बात की जायज के क्या कहते हैं अली फैसल साहब ने बिल्कुल ठीक बात की उन्होंने. Unfortunately, वो तबका जिसके ऊपर ये टैक्स नहीं लगना चाहिए, 50-60% of the population which is below the threshold of being a taxpayer, unfortunately उनको ये पे करना पड़ रहा है, उनसे डिडक्ट हो रहा है. इस तरह की और भी कई चीजें, इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी हैं वो सारे के सारे हमारी उस पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहे हैं जो कि टैक्स पेयर, मतलब उनकी इतनी इनकम ही नहीं है कि वो टैक्स पे कर सकें. तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड दिस इज वेरी क्रूअल, एंड द गवर्नमेंट शुड रियली think about doing something. और सिस्टम बनाना कोई मुश्किल नहीं है, सिस्टम बनाया जा सकता है, चाहे ये हो चाहे वो. देखिए इंपोर्ट ऑफ फोन्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं हुआ करती थी, मतलब स्मगल होता था सारा. और क्या कहते हैं नेशनल स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल असेंबली ऑन फाइनेंस ने ये पॉइंट रेज किया. पीटीए भी उसमें था, आई वाज मेंबर फाइनेंस पीटीए, एंड एफबीआर को मैंने कहा ये टैक्स डोमेन ये उनका एफबीआर का डोमेन है. उन्होंने उनको बुलाया मेरे कहने पर, उन्होंने कहा हमारे पास सिस्टम नहीं है. मैंने कहा सिस्टम बन सकता है, आप टन्स ऑफ कंसल्टेंट्स, ऑल काइंड्स ऑफ कंसल्टेंट्स, आप उनको आउटसोर्स करें वो बना देंगे. खैर फैसला ये हुआ कि जी हम हेल्प करेंगे, वो बनाएंगे. वी एंडेड अप वी हैड टू मेक दैट सिस्टम. ये जो डर्ब्स सिस्टम है, डिवाइस आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकिंग सिस्टम, जिसकी वजह से आप कोई भी फोन बाहर से लेकर आए, किसी भी चैनल से आए, अगर वो 2 महीने के अंदर अंदर आप ड्यूटी पे ना करें तो ब्लॉक हो जाता है. तो ये एग्जाम्पल्स आर देयर, इट कैन बी डन. उन्होंने लाइसेंस फी की डॉलर टर्म्स में बात की. व्हेन आई वाज इन पीटी आई यूज्ड टू एडवाइस देम कि आप स्टेट बैंक के पास जाएं, बजाय इसके कि आप कहें कि इसको रुपये में कन्वर्ट कर दें. ठीक है, चलें, अगर गवर्नमेंट करना चाहती है तो करे, गवर्नमेंट ने ये किया था. बट अगर आपको उसका सोल्यूशन चाहिए तो आप हेजिंग करें. वो कहते हैं हेजिंग अलाउड नहीं है तो हेजिंग की स्टेट बैंक से इजाजत मांगे. ठीक है, तो इस तरह से देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन. द थिंग इज, मैं ये कहूँ पॉलिटिकल विल की बात हुई, मैं ये कहूँगा कि देयर आर मेनी सजेशंस जो कि गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में है टू इम्प्लीमेंट, टू गेट दैट रिलीफ. ये जो उनके ऊपर प्रेशर है ना, हर वक्त वो बोरो करते हैं, हर 15 दिन के बाद टी-बिल की ऑप्शन होती है, उसमें वो बोरो कर रहे होते हैं. जिस जमाने में पीटीए में था उस वक्त 400-500 मिलियन डॉलर 400-500 बिलियन रुपीज कर रहे थे, अब वो ट्रिलियंस में कर रहे हैं. ज़ाहिर ये बढ़ता रहेगा, एंड दिस इज नॉट सस्टेनेबल. This is not sustainable. Yeah, thank you very much, sir. You really put some interesting and relevant numbers, but we have, a limited time, so we have to kind of move to the next speaker. So now, even if we are kind of innovative and effective, good system, there should be some competitiveness beyond the factory gate. That I'm talking about the border clearance. Nowadays, there is a kind of emergence of trade digitization and kind of inclusion of women traders, and particularly focus on SMEs. So my question from Dr. Adil Naqda is, how can we kind of put some spending, how valuable it can be in this scenario, kind of to reduce border clearance cost and time, so that we can kind of compete with the outer world and get some revenues. Yes. Okay, first of all, I'd like to thank SDPI for the invitation and inviting me to speak here. So, well, this is a very relevant question. So one thing that we do is we have this discussion here, right? That the government policies, they have an effect on how we trade and how we import.
So one of the things that we face, and we all know, is that Pakistan goes through a balance of payment crisis every few years. This balance of payment crisis opens a new Pandora's box. So at one side, we are looking to reduce our imports because we have this fear that the trade deficit, that the increase in trade deficit is likely to increase the pressures on the balance of payment and lead further worsen this vicious cycle. But on the other hand, we also think about, like as the moderators asked, bring in policies that can revive growth and actually increase our participation in trade and improve our development process, right? So in this thing. So let me talk about the imports here. So in 2022, we imposed several measures to restrict our imports. And we saw that in this case, the imports in Pakistan decreased by about 8% in 2022. But on the other hand, in our regional counterparts that we see, like such as China, India, Bangladesh, and Vietnam, imports actually increased. In India, it actually increased by 23% in 2022, while in Bangladesh, even though it was itself facing some balance of payment crisis with their issues with the IMF, their imports grew about 10% that year. China and Vietnam, it was much lesser, but again, it was on the positive side. So even in our regional counterpart in 2022, after COVID, the world's imports were generally increasing. The world was becoming more connected through trade, while we were actually reducing our trade and trade participation, and we were reducing our imports due to our balance of payment crisis that was happening around us. So what happened in July 22 was that we saw a sharp contraction in our imports. So our imports in July 22, in month on month, fell by about 36%, and year on year was about 10% in that sense. So in July 22, we saw this sharp contraction, and that was due to these several government measures that we introduced, which included trade payment related measures such as cash margin requirement introduced by State Bank of Pakistan. Then we have internal taxation of imports, where the duty on imports and on luxury items increased to 25% GST. Then we saw several import tariffs being imposed on our imports. On the other hand, yes, we did see India also impose a lot of import tariffs, but that was they were restructuring their import custom duties in that sense. Their import tariffs did not actually reduce imports, but improve the trading linkages in their country because they restructured a lot of their custom duties in that thing, which we haven't unfortunately done for many years. China and Vietnam, they don't impose such import tariffs that we do. Yes, we do see in Vietnam that they impose a ban. They recently imposed a ban on imports of second-hand machinery, but that was in order to encourage their producers to import the latest technology into the country and produce according to the latest standards and technology in the world, right? So to keep their local producers competitive with the global world. But we did not see that. Wide range of measures. The problem with this, the fact that we have this whole web of measures, government interventions, is that it makes our government interventions more complex and intricate in that sense. And that actually increases the challenges for policymakers when they actually want to reduce and want to facilitate the economic growth and reduce these measures. So there are sometimes that they have imposed such measures that are difficult to take away in many ways, right? So we have import licensing requirement at times, which actually makes it very difficult for traders to even import basic items such as 3D printers or even drone technology, which has become very important in our industrial development, etc. So now 10% of our imports were affected by these trade payment measures. Quarter of the imports were affected by the internal taxation that we imposed. And in comparison, only 10% of Bangladesh's imports faced interventions, such government interventions in 2022, even though they were reporting such crisis to an extent on which hurt their reserves. So now comes the question is that, what do we target? So there's this whole debate that are we reducing the imports of our consumer goods, or are we actually reducing imports of our capital goods and our intermediate goods and raw materials, which are used for producing and value addition in the economy? So actually, the fact is that we actually ended up reducing 44% of our imports of capital goods. Even intermediate goods and raw materials were affected by our government interventions, because we imposed such requirements, because the importers were not able to import it easily, while consumer goods only faced a decline of 7%, which is below our average.
So the effect was not on the consumer goods, as is often the case, and the reason for these import interventions is to actually reduce our consumer goods rather than our capital goods. So the idea comes up is that the next point is the fact that we are majorly dependent on the imports of fuel products, right? So Pakistan, we say about 30% of the imports of fuel, of our total imports are fuel products. Yes, India does have high imports of fuel products, but they also do value addition. They have become the largest exporter of refined petroleum products in the world now. So they use the crude oil, they convert that into, especially from Russia, and they convert that into refined products and sell to Europe. So there's a different strategy which we don't see in our country. We do not see value addition in our country, even in the basic industries as such. But this has a counter thing, right? We are not importing ICT products into the country. According to World Bank's data, we are only importing 5% of our imports are actually ICT products. While if you see Vietnam and all those other countries, their ICT products, the imports of ICT products are up to 30 to 35% of the total imports. Look at Malaysia. They have all developed on the fact that they have imported the latest technologies into the country, right? So this actually increases our challenges because the recent report, which was published by Information Technology and Innovation Foundation, said that if Pakistan reduces its import duties on IT products, it can actually add 3% to its GDP in the next 10 years, which is again a significant thing because it can help our growth in that sense. Again, the question comes up in value addition. We have one of the lowest participation in global value chains, especially in the medium to high-tech industry. If you look at this, look at Vietnam. Vietnam increased its global value chain participation in medium to high-tech industries for about 20 times in the last 15 years. It was very minimal. It was about less than $1 billion in 2007, and now it's skyrocketed to about something 80 to 90 billion dollars in this number of years. So that again, the value chains that we are creating, because we are not allowed to import easily, we can't have the best inputs, the most efficient inputs to produce our exportable output. And that reduces this whole value addition that is going on in this country. But now this question on digitalization that comes up. So we need better connectivity, digitalization, etc. in this sense. So one of the things that we see is that we have seen this in the case of Pakistan single window. So Pakistan single window is one example of where Pakistan can actually do well and can compete in the global landscape. Pakistan single window, I believe, is one of the best single windows in the region and has been praised even by United Nations. There was a recent show on all these digital windows, national windows, and Pakistan was showcased in that sense. Pakistan single window, one of the things that we see in our rankings is we were ranked last in the last global survey that they have on digital trade and facilitation by UN. Pakistan was ranked below Sri Lanka, Bangladesh, and a lot of the relief to India. India has, but in recent years, we are seeing India actually increase its rate as well because they have made mobile phone access cheaper with all the Geo, etc. that they have. Reliance has worked on that. But in Vietnam, in East Asian countries, this is actually more than one. It's about 130. The average is 130 to 100 people. So in Vietnam, an average person owns more mobile phone sets, right, than one, right, in that sense. So this also has an implication. Then the fact that our broadband connections, we only have one person per 100 has broadband connection in Pakistan, compared to East Asia, where it's 32. So 32% of the population has broadband connection in
in East Asian countries. So again, this comes to our connectivity. If we don't improve our connectivity, if our traders, if our residents don't have access to technology products and connect to the rest of the world, right, we cannot increase our competitiveness. We cannot increase digital trade in that sense. So this all comes down. Our trade policies, the import component of trade policies needs to be looked on, and we cannot use government interventions the way we do. That needs to be looked at, because that reduces our ability to participate in trade and become more connected to the world in that sense. Okay. Oh, thank you very much. We are actually running out of time. So before question answer, I have question for all the panelists, and I would humbly request that please keep your answer limited to 1 minute or so. So if we assume we have some black magic or maybe AI, and now we have a technically very optimal budget allocation and so on, but then there would be a question of transparency in the resource allocation and in actual implementation of those resources. So what would you say to kind of make it more transparent and kind of to minimize, wastage of resources and kind of some malpractices? So some quick response, maybe from left to right. Yeah. You see, I think E is equal to MC square. You are expecting me to answer like the Einstein, which I cannot, but let me try. You see, the problem is that I was one of the person who was involved in also, I must say, working with from FIDIC to the, I must say, public procurement rules. So there were certain SOPs. Let me try to connect with the required answer. There were certain SOPs which have been diluted by the government itself in their own interest. Now, those SOPs, when I was checking with the Asian Development Bank SOPs, because I was chairman of a very big corporation, $400 million Asian Development Bank. So the SOPs would say that you have to go for a competitive bidding on these thresholds. These exemptions would not be provided by such and such authority, but only such the highest authority. So that is the way I think what you are expecting, I mean, say the decision makers or the planners to restrict themselves in sort of making all these allocations and appropriate sort of things which would be more aligned to the requirements rather than political needs. I have seen Additional Chief Secretary Development in Sindh, MNA and MPA would come and say, okay, put this scheme of my district in the priority. When they would go and say, okay, look, this is the job we are doing. So in case if these jobs in some other way under certain rules of business are stopped, that is what I have been asking this lady who is in Islamabad. I mean, so one 17-minute talk, another one 10-minute talk, that please make SOPs so that the political and vested interference is excluded. That is the only way, I think, then the resource allocations would find their cascaded effects towards the eventuality or towards the end objective, what is called development economics. It is not working in this country. The one minister would say, buy the old ships. I'm interested to buy the old ships. The MD PPRA, who would be like a great pass officer like Mr. Zahid Yaqub sitting over there, he will just come under the pressure. And I think the things would go like that. The value of supply, I was in PPRA in Sindh, they were buying Nooriabad project. So I was wondering, as a power system engineer, my whole knowledge does not accept the way these things are going, and I oppose that project. But the problem is that how many people will become examples of self-sacrifice? Nowadays, I'm scared. I don't want to make myself added to that club of self-sacrifices. The graft is rewarded. The corruption is rewarded in this country. And the people who are honest, they are penalized. So let's say, is it possible that these lenders, donors, they bring the rules? Because if their prescription 24 has not worked in this country, either the prescription is bad, it is not effective, it has no meaning to work, or I think under reforms,
they have to bring in this system wherein the transparency is assured. And let me put a final word. For 6 years, I was member of Transparency International, and I've seen how the people in this country, the people who had powers, were doing things recklessly, for which we are today here complaining and just talking on all these issues as to which should have been solved. Rather than, there was no need to talk much on that. So I'm sorry I have talked too much. Sorry for that. Thank you. Short answer is, please 1 minute. short answer to your question is automation and digitalization. One example was given by our speaker here, Pakistan's single window. And I will give you 2 more examples. One was PTA, in which was the first department of the government of Pakistan, which changed its filing system from physical hard file, जिसमें एक साइड पे वो कागज लगा होता है, नोट शीट एक साइड पे जो है वो आप सारे पेपर्स लगाते हैं और वो मूव करती है, नायब कासर लेकर जाता है एक डेस्क से दूसरे डेस्क, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस. We made that electronic back in 2006. It was done by a very famous IT company in Islamabad. Only 5 million rupees was spent on that. And it improved the transparency and efficiency like anything. The other is SECP. SECP ने अपने बहुत से processes जो है online करते हैं, including applying for license. ये तो इस सवाल का जवाब था. Very briefly मैं आपको policy की continuity की बहुत बात हुई है यहाँ पर. उसकी मैं आपको एक specific example के साथ ये बताता हूँ कि it can be done. Grandfathering process should be introduced कि अगर जो लोग पहले इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं अंडर दी ओल्ड पॉलिसी, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, उनको प्रोटेक्शन दे दें अंडर दैट पॉलिसी, और फ्यूचर की जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए आप नई पॉलिसी दें. जिस तरह पीटीए ने जब 2004 में 2 और लाइसेंस इशू किए, वो चूंकि थ्रू ओपन ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल ऑक्शन थे, द मार्केट डिटरमिन्ड प्राइस, पीटीए डिड नॉट इम्पोज एनी प्राइस, वाज $291 million फॉर 10 MHz स्पेक्ट्रम, 1 लाइसेंस फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. बट द एग्जिस्टिंग 4 ऑपरेटर्स वर टोल्ड कि आप अगर नई पॉलिसी में आना चाहते हैं अभी, तो यू हैव टू पे दिस. इफ यू डोंट वांट टू अवेल न्यू बेनिफिट्स अंडर द न्यू पॉलिसी, then when your license will come up for renewal, at that time you will pay $291 million to provide a level playing field to all the operators. इन दो को नुकसान ना हो जो बाहर से आ रहे हैं. उस वक्त तक उनकी फी थी 120,000 rupees per megahertz per annum, which is peanuts, not even $1 million, not $291 million. So it can be done. So 5 seconds देखें, ये इन्होंने बात की, I do not agree. It is the programming. You bring super technology. You have so many systems and customs working. What is the programming? What is the base of the programming? How you configure things to work so fast? That is the problem. The people who program this, Amit said they can make the changes in the program. He talked about SECP. If I had the time, I would tell him the worst organization in this country today is SECP. Religiously, I'm telling you. Thank you very much, sir. So, Dr. Adil Nafda, please 1 minute. Okay. So I think one of the best things, like if you want to really, we talk about this whole thing, right? That we need to increase our exports. Everyone says exports, but what drives exports? That's what we need to do. And what drives it is our improvement in productivity level. And what will make us improve our productivity level? When we are able to compete with the rest of the world, increase in competition. So I think this is where it's important, is that we need to ensure that all our policies are such that we make businesses more competitive. The problem right now we see is that a lot of wastage is done when we look at businesses asking for unnecessary subsidies. Then the whole debate is that fuel prices, energy prices should be low because they want this relief in tariffs. They're always comparing themselves with these regional competitors, which have a lot more resources than we do to do that. Right. So how do we improve our competitiveness given our environment, our whole business environment, our challenges with the IMF, etc.? That is what the discussion should be in order. And that will naturally, a lot of our processes need to improve so that we make ourselves more competitive at the end of the day. And as we improve our competitiveness, we will improve our exports as well at the end of the day. Yes. So automation, competitiveness, Asif sir, please. Thank you. Well, I think if we have something to spend, and we do have, at least at the provincial level, and if you want to spend then to promote social development, I think devolution is the key. 2001 demonstrated effectively that their devolution has the potential to deliver. So I think we need to develop a system of local government as per the constitution and give them political, fiscal, and administrative powers to deliver, and that would be the key.
So thank you very much, all of you, for being here. So given the time constraint, we can take 2 questions at max. So if you have a question, please also let us know your question too, please. Assalamu alaikum. I'm a publisher, education publisher. We sell books by the name of Kifayat Publishers in Pakistan. We are competing mostly with foreign publishers. The industry is dominated by imported booksellers. This suggestion was given before as well. Kaisar Bengali साहब left, but इस वक्त जितनी भी हमारी book production है हम बाहर से करवा रहे हैं, and we are importing the paper क्योंकि book जो finished good है उसके ऊपर 10% के अराउंड ड्यूटी है, और अगर हम पेपर मंगवाते हैं तो उस पर 50%, बल्कि 50 भी नहीं, वो 70% तक पहुंच जाती है ड्यूटी. सो अब उसकी वजह से आपने क्योंकि इतने हाई ड्यूटी टैक्सेस रखे हुए हैं, तो आप प्रोडक्शन भी बाहर करवा रहे हैं, वो रॉ मटेरियल बन के फिनिश गुड में अब आ रहा है आपके पास. तो किसी एक इंडस्ट्री के ये देख लें कि अगर उस पर हम ड्यूटीज कम करें हम चले, अगर नहीं ये बात समझ में आ रही कि रॉ मटेरियल से जब तक हम ड्यूटीज नहीं हटाएंगे तो उस वक्त तक लोकल इंडस्ट्री नहीं चल सकती. किसी एक इंडस्ट्री को अगर हम पे वो चीज करके देख लें ओवर द इयर्स, तो क्यों नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये बुक्स का ये बड़ा वैलिड एग्जांपल है कि शारजा बुक्स पब्लिशिंग सिटी उन्होंने सेटअप करी, शारजा वालों ने, उधर सब ने आके इन्वेस्टमेंट करी, पाकिस्तानी ह्यूमन रिसोर्स वहाँ जाती है, वो वहाँ जाके प्रिंट करती है, फिर वही किताबें हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं. तो ये तो और सर ने जैसे वियतनाम और कंबोडिया का एग्जांपल दिया, तो मुझे याद है कि 2015 में मैं फ्रैंकफर्ट बुक फेयर में था, और उधर जर्मनी का एक बहुत बड़ा वोकेशनल पब्लिशर था, तो उसने उसके पास मैं गया तो उसने बोला कि आज तक हम 40 साल से यहाँ पे बुक फेयर में वोकेशनल एजुकेशन पे वो लगा रहे हैं. सो उन्होंने बोला कि आपके पाकिस्तान से इतनी बड़ी आपकी पॉपुलेशन है, आज तक हमारे पास आपकी गवर्नमेंट से या कहीं से कोई वोकेशनल एजुकेशन के लिए नहीं है. तो ये 2 चीज़ें वियतनाम या कंबोडिया को अगर हम देखें एज ए सेट ऑफ एन एग्जांपल, बिकॉज किसी ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात नहीं करी, हमारे पास सबसे ज़्यादा जो रिसोर्स है वो ह्यूमन रिसोर्स ही है, उस पर भी इन्वेस्टमेंट करने की बहुत ज़रूरत है. तो ये 2 चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही हैं? किसी एक इंडस्ट्री के लिए तो हो सकती हैं. So who is going to respond? Maybe. If I understand your question correctly, आपने शायद ये कहा कि import duty की वजह से जो है ना, मतलब import duty ज्यादा है, वो क्यों नहीं हट सकती है. बिल्कुल देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और स्पेशली एफबीआर से अगर आपने कोई टैक्स रिड्यूस करवाना है, तो you have to demonstrate to them that by reducing this tax rate or abolishing this tax rate, आपका रेवेन्यू कम नहीं होगा. वो कैसे कम नहीं होगा? बिकॉज जो आपकी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो बढ़ जाएगी. I'll give you specific example in the case of telecom sector. आपको याद होगा शुरू में 1995-96 में सिम एक्टिवेशन या इशुएंस चार्ज 2000 रुपये हुआ करता था. That was brought down by requesting FBR over a period of time gradually to 100 rupees, शायद अब उससे भी कम है. और उसके लिए हमें उनको ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता था कि इससे कितना रेवेन्यू बढ़ेगा ऑपरेटर्स का, और उससे कितना टैक्स आपका बढ़ेगा. तो यहाँ आप इतना टैक्स छोड़ रहे हैं और वहाँ आपका इतना टैक्स बढ़ जाएगा, तो आपको नुकसान नहीं होगा. So you have to demonstrate it to them. So any last question, please? If there is, perhaps none. So, please. So there's one thing, right? आप देखें, like you have asked and you have mentioned Vietnam, Cambodia, East Asian countries. They don't have these tax issues like that. Well, the taxes are very low there. You don't have to run to the FBR or whatever there is similar
association and run and get the taxes reduced like that. So that's where used to the world and sell to Germany. That's the So thank you very much for the response.